Is my screen visible now? Screen Yes, share sir. is okay. ठीक है. So today's class is on case studies, ethics, right? And ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ କି first week ରେ January first week was your um, deadline, right? January 7th around we will be able to finish. So that means ki for 3 classes in the first week of January. So I thought ki let us take all the classes together. Then we will be over with most of the parts. Then I will keep giving you some ethics assignments in between, right? Mostly case studies only. And around 21st we'll have another extra class, right? Even though we'll be finished with most of the things, still I want to like do some polishing and all. And if required, I mean, we'll see, but most likely 21st will be your last class, right? 15th or 21st, whichever is the we will notify you. Any doubts or overall anything you want to say? Anything? କାଲିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ଡାଉଟ ଥିଲା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଉ ଆବିଲିଟି ଉପରେ ଟିକେ Okay. Who is this, by the way? Good evening, sir. ସାର୍ ସାଇ କୃଷ୍ଣ Yeah, Sai Krishna. Attitude and aptitude, ସାର୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଉ ଆବିଲିଟି ability. Right. कौन doubt थी ना कुछ? ତ ଟିକେ ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗୁଛି ଯେ देखो बहुत सिंपल कथा देखो को तारो क्रक्स टा हमें एसेंस टा बुझियले देन यू कैन अंडरस्टैंड लाइक यू कैन राइट फर्दर थिंग्स. एटीट्यूड होची हमरो को भी जिंस प्रति को भी लोक प्रति एटीट्यूड कोन अछि, राइट? सो दिस इज लाइक अ टेंडेंसी टू एक्ट इन सर्टेन वे, right? Either that way may be positive or negative. Okay, so this is a tendency only. Ability होची you have developed the capacity to do something. तो मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दोस्त हूँ, पूरा layman definition. Aptitude, sorry, this is not the capacity. Yes, this is the current capacity. You should write this. Current capacity to do something means you are right now able to do something, right? Aptitude होची future potential to do something, right? So if you see the difference between these two is that this is something which is in your mind. This is something एटा ability टा कोठी अछि हमें कहि परियनि, but this is an ability माने you can do something, right now. And aptitude is something that you can do in future. ଏତିକି ତ ଜିନିଷ ଆଉ କଣ, ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି କଥା ନୁହଁ. ତାପରେ you can further write more points you can make. For example କି attitude ଟା ଯେମିତି କି ହଉଛି psychological, ability ଟା physical plus psychological, right? ସେମିତି aptitude is also physical plus psychological. This way you can divide. This is completely psychological. So that means यार ABC component भी आसी, यार भी जोटा psychological ସେଥିରେ ବି ABC ଆସିବ, ଏଥିରେ ବି ABC ଆସିବ. So in this way you can divide it. ଏଠି କିଛି purely physical attitude ରେ physical କଣ ଆସେ? Physical वाला କିଛି attitude ନାହିଁ. So ଏଇତ କଥା ଆଉ କଣ. ଓକେ Any ସାର୍ other ବୁଝିଲା doubts? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ହଁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. गुड इवनिंग सर. सर Yes, good evening. सर काली क्लास रे जो आपण ଗୋଟେ डायग्राम करथले इमोशनल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस ସେଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା. କୋଉ diagram ଟା? ଗୋଟେ କୋଉ ମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ସିଟିଜେନ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଥାଇକି ମାନେ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉ. Okay. That diagram actually derived from something which is known as a gatekeeper model. Okay. तार actually basic diagram ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦଉଛି. देखो यार माने कौन गेटकीपर मॉडल माने कौन एमती कि यूजुअली यू कैन ड्रॉ दिस इन द केस ऑफ एनजीओ और एसएचजी एथरो मु एटा को टिके मॉडिफाई कर. तो दिस इज समथिंग आई रियलाइज्ड कि यूजुअली वी से कि सपोज हियर इज द गवर्नमेंट, राइट? हियर आर द पीपल. एनजीओs and एसएचजी or other civil society organizations, what they are doing is कि they are acting as a gatekeeper of the society. So they are whatever people କ୍ଲାସ୍ have ଚାଲିଛି their କ୍ଲାସ୍ demand. ଚାଲିଛି. Hang on a second, ऑडियो म्यूट कर दियो.
Kindly mute your audio. So people are sending their demands to NGO, SHG and CSOs, which are provided to the, which these organizations provide to the government. And in return, what they do, government any benefits jodi achi, they can be rerouted through NGO, SHG also. And people also are directly interacting with the government. For example, people are voting the government. In return, government is providing them some kind of welfare benefits, right? Or even they are providing jobs, they are providing governance, right? So this is a two-way street, right? Similarly, I was thinking, how can we create a which model were we talking about? Good governance model. So let us see, for example, government. These are, you can draw like this also. Suppose these are the officers, right? Or these are the administrators, and these are people or citizens. Then we will say ki how people are interacting with the government. They are interacting with through these people only. So these are the gatekeepers, right? So in return, what are they getting? So they are in return getting through them. They are getting governance or administration. They are also getting some welfare benefits. Okay. What are they giving in return? They are giving vote or they are giving power to the government. What are these people getting in return? Maybe they are getting some kind of security for themselves, their own jobs, right? So that is their own duty, professional duty, right? What are they providing to the people? The same thing, governance and welfare, all of these are being provided, right? What is government providing to this? Government is creating demand. You perform these things for me, right? So exactly कौन draw करथली मोर निजे भी मन नहीं, but right now I can draw another model, right? Because you make these models out of your own understanding. देखो ये same model you can change and you can use in any other scenarios in which there are two parties, party one, party two, and there are some gatekeepers in between or intermediaries you can even call it, right? So you think what is being given to this person, what is being given to this person, what are these institutions or professionals doing? So you can draw your own diagrams, right? अच्छा मोर मन पड़ला आमे एथरे कहतिलु कि एथरे केमती इमोशनल इंटेलिजेंस यूज हो, right? एथरे आई थिंक हियर और हियर यू कैन ऐड इमोशनल इंटेलिजेंस एथरे ऐड कर परियो, बिकॉज़ गवर्नेंस वाला माने लोकन के संगे आमे तो इंटरेक्ट करिया when officers or administrators are interacting with people, now there is a need for emotional intelligence. So wherever there is an interface between administrators and people themselves directly, so there will be at this place there will be the role of emotional intelligence, right? So I drawn something like this, I think. When they are interacting with the people, they have to use emotional intelligence. थैंक यू सर. सर आ गोटे जो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक भितर अपन पीता स्टडी करथले मोटेला लास्ट ईयर स्टडी आ Yes, डे deep फ्लोर learned एंड West. स्टडी तो सेटा आउटलुक ब्रीफली टिके एक्सप्लेन कर. Okay, let me explain कि LAPIA study कौन और deep learned West study कौन. So basically आमे डिस्कस करूथली कि एटीट्यूड आमे काहे की पढिबो, बिकॉज आमे एक्सपेक्ट करूछु कि एटीट्यूड को जदि आमे ठीक से जानि परिबु ताले गोटे लोकर बिहेवियर कोन होबा को जाउची आमे फ्यूचर रे भी ताको प्रेडिक्ट कर पे. And when we can predict something, then we will be able to control it. Okay. So जदि जनकर बिहेवियर भलो अछि त ठीक अछि, हम प्रेडिक्शन करी कंट्रोल करिया दरकार नै, बट एंटायर जिंस होची कंट्रोल कोठी आसीयो जोठी सपोज अनवांटेड बिहेवियर किछि अछि, एंटी सोशल बिहेवियर किछि अछि, or we also want to make them behave in certain way which is benefiting to us, so there we want to change their behavior. तो ये एंटायर कारनामा पई हमको एटीट्यूड बिहेवियर लिंक भितरे स्ट्रांग लिंक जानिया दरकार कि जदि स्ट्रांग लिंक बाहरियो ताले ही जाय कि हम एटीट्यूड और बिहेवियर भितरे सॉरी हम एटीट्यूड टा स्टडी करियो. अदरवाइज सपोज जाना पड़ला कि एटीट्यूड तमरो जहां भी अछि बिहेवियर रे किछि भी रिफ्लेक्ट होन, ताले हम एटीट्यूड पढिया कहीं, तो तुम मन भितर एटीट्यूड थाओ हमको कोन फरक पड़ुछि. जदि हमको फाइनली इफ वी आर एबल टू मेक यू डू व्हाटएवर वी वांट यू टू डू, देन वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एटीट्यूड. बट एक्चुअली व्हेन एक्चुअली कोन होछि एटीट्यूड बिहेवियर भितरे there is a link. Okay, now the only question is how strong is the link. आगुरु भाबुतलु आमे कि this is a very strong link, ये attitude को तो आमे यदि correctly guess कर परियो then behavior को भी correctly predict कर परियो, but these people said कि ये link टा एते भी strong नुहे जते कि आमे भाबुछु. Okay, in fact Lapierre कहले कि ये link टा बहुत weak. Diffler and Westy also कहले कि it's not very strong, weak न कहले not very strong. Now what सेमानकर स्टडी कोन थिला, Lapierre कोन कहले, mute your audio by the way, someone's background noise cars. When you talk you can turn it on again.
ओके सो लापियर स्टडी रे से कौन कहले सो दीज पीपल वेंट टू यूएसए रो किछि होटल ओनर मानको पाखु गले तांको पचारले कि अच्छा तो ए होटल ओनर माने व्हाइट अमेरिकन्स थिले तांको पचारला कि अच्छा आपण मानको होटल को जदी चाइनीज लोक माने किछि आसंती ताले आपण माने तांको रखिए कि they went and they asked at a time when anti-Chinese sentiment were high in America. ओके एंटी चाइनीज सेंटिमेंट बहुत हाई थिला कि माने बाहर आसी हम जॉब फॉब नहीं होचती ताको भीतर कॉन्फ्लिक्ट दुटा कंट्री भीतर कॉन्फ्लिक्ट भी चलता यूएस अमेरिका भीतर तो यूजुअली देखो यूजुअली तो एमती भी लोक हमर सपोज हम भाबे कि इंडियन माने पाकिस्तान माने को लाइक करंती सपोज गोटे पुलवामा टाइप रो अटैक किछोडे हेला तो तल आहुरी सेंटिमेंट आहुरी जागी जीवो रागी राइट लोक माने आहुरी चिड़ी जीवे सपोज बाबा सेई टाइम रे जाई तांको पचराले होटल ओनर मान कि तुम चाइनीज गेस्ट मानू केमते ट्रीट करियो तो होटल ओनर माने कहले भाई हमें तो चाइनीज ओनर को रखिया को दब नाही मैक्सिमम लोक माने सेया कहले होटल ओनर तापरे माने कोन कहले एक्चुअली तांकर किछि चाइनीज जो फ्रेंड्स थिले समान को किछि दिन परे ओके दे सेंट द सेम टू चाइनीज पीपल टू दीस होटलर्स जाको पचरा आइतले कि समान जो माने कहथिले हम रखियो पर देखा आले कि समान तांको रखिले एंड भलो भी बिहेव कले सो नाउ लापियर वाज एस्टोनिश्ड कि यार एमान त हमु कहिले तांको रखियोनी बोली पुनी रखिले काहे और इन जनरल देखो यार बहुत सारा रीजन तुम कहि पारे मनी थई पारे कि किछि टाइम पास करियला मे बी तांको सेंटिमेंट डाउन हे गेला बट व्हाट एवर इट इज एटीट्यूड से माने जहा प्रथमे कहिले हम टुवर्ड्स चाइनीज जहा थिला दैट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन देयर बिहेवियर राइट सो दैट मीन्स एबे यार भी 100% हलानी सेमती नु यार भी स्टडी रे हुए कि मे बी हितो 25% और 30% 50% बट इन एनी केस दे सेड कि एटीट्यूड बिहेवियर लिंक टा एते भी स्ट्रांग ना और एक्चुअली लापियर सेड कि एटीट्यूड बिहेवियर लिंक इज वीक ओके सो दैट मीन्स हम एटीट्यूड पढियार पॉइंट किछ ना पढी की प्रेडिक्ट सक्सेसफुली प्रेडिक्ट कर परिया ना डफलेयर एंड वेस्टी कौन कहले कि वीक नहले भी इट्स नॉट वेरी स्ट्रांग सेमानकर स्टडी कौन थिला सेमाने कहले कि व्हाइट कॉलेज स्टूडेंट मानकु तांकर ब्लैक कॉलेज फ्रेंड्स मानक विषय पचरा और अफ्रीकन अमेरिकन मानक विषय सो दे सेड कि तांको एटीट्यूड कलेक्ट कले सेमाने गेस कले कि तांकर रेस्पॉन्स रू कि केमिते व्हाट इज व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव लेटर ऑन दे वेंट अगेन एंड दे माने तांको देखली तांकर एक्चुअली एक्शन और बिहेवियर टा केमिते टुवर्ड्स ब्लैक पीपल एंड एक्चुअली एटीट्यूड सानकर जहां भी देखेले सपोज हेई पारे पॉजिटिव हेई पारे वी थिंक कि पॉजिटिव एटीट्यूड थिले बिहेवियर भी पॉजिटिव हो नेगेटिव एटीट्यूड थिले नेगेटिव भी बिहेवियर हो बट 25% केसेस रे देखाला पॉजिटिव बिहेवियर थाई कि भी नेगेटिव एटीट्यूड सॉरी एक्शन बाहरला और नेगेटिव एटीट्यूड थाई कि भी पॉजिटिव एक्शन बाहरला दैट मीन्स किछि लोक जो माने रेसिस्ट काइंड ऑफ आंसर दिथिले से माने भी ब्लैक पीपल मान को अगेंस्ट माने टुवर्ड्स भलो एक्ट कले पर जो माने भलो माने नॉन रेसिस्ट एटीट्यूड शो करथिले से माने भी रेसिस्ट बिहेवियर कले सो एई वाला हला 25% ऑफ द केसेस सो डेफलर एंड वेस्ट कहले कि चलो 5% हितले भी हम बुझतांती बहुत स्ट्रांग लिंक अछि 25% इज आल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट सो नाउ दे सेड कि इट इज नॉट वेरी स्ट्रांग बट इन एनी केस एते सारा एक्सप्लेन करियार हम एग्जाम रे ऑप्शन आसीबो नाही दैट्स व्हाई आई डिड नॉट एक्सप्लेन टू यू इन द क्लास व्हाट इज द पॉइंट कि एट मैक्स दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडीइंग एटीट्यूड ए वाला क्वेश्चन किछि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आसीबा तो देयर यू हैव टू शो दिस फ्लो चार्ट कि एटीट्यूड हम बुझले बिहेवियर को हम बुझ परिया प्रेडिक्ट कर परिया बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर कले ताको कंट्रोल भी कर परिया एंड को टाइप रे बिहेवियर को हम कंट्रोल करिया चाहू जो प्रकार बिहेवियर ता सपोज माने किछि हमरो नीड और हमरो वांट्स जोटा सेटा टुवर्ड्स दैट और मे बी सम प्रो सोशल बिहेवियर लोकान को किछि भलो वे रे बिहेव करिया फॉर एग्जांपल पोल्यूशन से माने न करंतु से माने सब्सिडी एमति गिव इट अप कैंपेन हम देखिलु से माने माने सोसाइटी रो भलो पई किछि एक्शन करंतु तो सही वाला बिहेवियर को डेवलप करिया these are our goals okay सर ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କାଲି ଥିଲା କି aptitude ଆଉ attitude ଭିତରେ difference ତ aptitude hmm. ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ମାନେ ଏଇଟା both innate ଆଉ can be learned but ଏଟା mostly inborn ହିଁ ଥାଏ ନା aptitude ଟା ना ना मोस्टली इनबॉर्न कहीं की एप्टीट्यूड कैन आल्सो बी लर्नड ना एप्टीट्यूड तुमको लगे पोटेंशियल इट देखिए कि एंटायरली इट्स पॉइंट इज मे बी एंटायरली नो you can also develop a potential in the sense I'm telling you my own life story चलो एमती तो यूजुअली पर्सनल स्टोरी बहुत बेसी कहया कथा न बट फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग रे मते पढिया को भल लागु बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अ बिट देन आई थॉट कि चलो पढिले मते किछि एक्स्ट्रा जिंस माने आई एम एन्जॉयिंग दैट देन आई स्टार्टेड टू रीड मोर एंड मोर सो दैट क्रिएटेड सो कोन मु एथरु कोन गेस करी मु एप्टीट्यूड मोर नथिला स्टार्टिंग बट आई वर्कड ऑन इट देन आई रियलाइज कि मते पढिले जो भल लागु देन
after some time, even though I was not able to see ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ability develop ହେଇନଥିଲା, ପଢିବାର ability develop ହେଇନଥିଲା, in the sense କି ମୁଁ ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି I was not able to understand most of the things, but ଯୋଉ part ଟା ବୁଝି ପାରୁଥିଲି I was able to enjoy it. So ability ବି develop ହେଇନଥିଲା, but aptitude slowly develop ହେଲା, and once aptitude develop ହେଲା, then I worked on it and I converted into my ability, right? So aptitude can also be learned, no issues. ओके सर ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ଯେମିତି No, no, ସାଉଥ it's ଆମେରିକାନ point କି is कि ଆଫ୍ରିକାନ ଫୁଟବଲର୍ସ ମାନେ नहीं नहीं ଅଧିକ ଫିଜିକାଲି ମାନେ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସେଇ see, ରିଜନରେ ବୁଝୁଥିଲି ତାକୁ। aptitude can be for some mental activity also ना, physical activity ପାଇଁ କେବଳ aptitude ହବାର point ନାହିଁ, mental activity ପାଇଁ ବି ଆମର aptitude ଅଛି କି, right? Psychological other mental ଭିତରେ କେତେ different type ର category ଆସିପାରିବ। suppose ଆମେ କହିବା କି ଜଣଙ୍କର psychologist ହବାକୁ aptitude ଅଛି କି ନାହିଁ, okay? So that kind of person, it's not just about thinking or reading or anything, that person should also have this aptitude to connect with other people, right? ଯୋଉଟା soft skill ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, तो you should be able to put the client at ease कि ताକୁ पूरा आराम से ताକୁ mellow down करके you have to get the answers, तारो निजर problem से ही कहब। So that is also one kind of aptitude, that is not at all physical aptitude, right? सेटा mental हेटा reading kind of aptitude भी नो, हेटा intelligence and हेटा cognitive intelligence भी नो, आमे मे भी कहि पारे हेटा emotional intelligence related ସେଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, for example empathy ସେଥିରେ ଅଛି, social skills ସେଥିरे ଅଛି। So that is also one kind of aptitude, right? ସବୁବେଳେ physical ହବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, mental ବି ସାର୍ ଆଉ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପିଏବିଡି ଟେଷ୍ଟ, ବସ୍ ସେଟା କହନ୍ତି କି ମାନେ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲାଇଫ ଟାଇମ ତାକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଟା ମାନେ ଇନବର୍ନ ନା ମାନେ। ନା ସେମିତି ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଯଦି ଦବ ତ ମେ ବି ହେଇପାରେ, ସ୍ପେସିଫିକ କେସରେ ସମଥିଙ୍ଗ would be aptitude would be entirely involved, but ଆମେ କଥା ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ କେସ୍ କାହିଁକି ଯିବା, ଆମେ ଇନ ଜେନରାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ନା। ଏଇଠି ତମକୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କୁହାହଉଛି କି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ, ଇଜ ଇଟ୍ being said କି aptitude in the context of this aviation test or aviation abilities, ତ କୁହା ହବ ନା, ଆମେ ଇନ ଜେନରାଲ ଦେଖୁଛେ aptitude। ହେଇପାରେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପୁରା entirely inborn ହବ, okay? but I will again tell you କି aptitude ଦେଖ ହେଇପାରେ କିଛି ଜିନିଷର aptitude ତମ ପାଖରେ inborn ଅଛି, okay? ହେଇପାରେ, okay? may be due to genetic factors କିଛି ଅଛି, but ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି କି inborn ନହେଲେ ବି it can be developed, okay? ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମାନେ even ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା genetic ଜିନିଷ required, even that those could also be developed in some people, okay? so for example let me tell you कि ଯେମିତି ଦେଖ ମୋର କହିବା କଥା କି ଆମେ innate ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ emphasize କରିବାର point କିଛି ନାହିଁ, rather we should emphasize on what can be learned, because this is something over which we have control। तो ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ example କହୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି tribes ଅଛନ୍ତି, okay? I think ସେ tribe ର ନା ବାହାଉ or something, okay? ବାଜାଉ ଲେଖା ବାହାଉ କୁହାହୁଏ, I think Indonesia or something ଏଇ South East Asia ରେ ଗୋଟେ tribe ଅଛି which spends a lot of its time underwater, in the sense କି ସେମାନେ ପାଣି ପାଖରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ଆଇଲାଣ୍ଡ ରେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକି ବି ରୁହନ୍ତି। So usually ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେତିକି ସମୟ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରହିବାର ଏବିଲିଟି ଯେତିକି, ତାଠୁ ଅଧିକା ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଇଛି। I will say କି is this inborn, because ତମେ ଯଦି ଟ୍ରାଇବ ରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ସେ ଏବିଲିଟି ଅଛି, ତ ତମକୁ ଲାଗିପାରେ at one time it is entirely inborn or genetic, but if you understand what is the child rearing practice, then you will understand कि ଏଟା inborn ନୁହଁ, this is also learned। ତାଙ୍କ child rearing practice ଯୋଉଟା CRP in short କୁହାଯାଏ ସାଇକୋଲୋଜିରେ, କି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚରରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢାଯାଏ। ତ ଏଇ ଟ୍ରାଇବ ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ, ସାନ ବେଳୁ ଆମର ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତେଲ ମାଲିସ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସାନ ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ସିଧା ବୁଡେଇ ଦେବେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ବୁଡେଇକି ରଖିବେ, ନା ଡେଲି ଫର ସମ ଟାଇମ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପିଲାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡେଇକି ରଖିବେ, ପିଲା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ସେ ପୁରା ଆକାଚାକା ହେଇଯିବ, ମରିଗଲା ଭଳି, ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିକି ପୁଣି ତାକୁ ଠିକ କରିଦେବେ, ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ସୋ ଆଫ୍ଟର ସମ ଟାଇମ କଣ, ସେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତାର କିଛି ପାଣି ପ୍ରତି କିଛି ଡର ହିଁ ନଥିବ। there is another tribe which actually ସିଏ ବି ଏମିତି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡାଇଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର କାନର ପର୍ଦାକୁ ଫୋଡିକି ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, which is very strange। ଦେଖ ଆମକୁ ସେଇ କାନର ପର୍ଦା ଯୋଉ ଇୟର ଡ୍ରମ କୁ ଫଟେଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହବ, ହେଲା, ଆମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହବ, ବଟ ଦେ ହାଭ ମାନେ ଡେଭଲପ ଦିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜର ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବିକଜ କାନର ପର୍ଦାଟା ରହିଲା ମାନେ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ପାଣିର ବହୁତ ଡେପ୍ଥ କୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିକଜ ୱାଟର ପ୍ରେସରଟା ବହୁତ ସେ ପର୍ଦା ଉପରେ ପଡିବ, and it will be very painful, so you cannot go to a beyond certain depth you cannot go। ତ ଏମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କର କାନ ଫଟେଇ ଦେଇକି ଡେପ୍ଥ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, so that they can go to very deep places। So can we say कि this is a learned or inborn aptitude? This is not at all inborn, this is something they have developed।
So this is also an aptitude which has been developed in the tribe by their own practices due to their own necessities, because ସେମାନେ ପାଣି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହିବାର ଅଛି, right? बहुत ही ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ट्राइबल स्टडी Okay, sir. anthropological study ତମେ ଦେଖିବ, बहुत ही strange and बहुत ही ଭଲ ଲାଗିବ, you will be able to understand कि human ability and aptitude ଗୋଟେ huge spectrum, okay? ଆମେ ଏମିତି ମଝିରେ ଏଇଠି ରହିଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି, ଏଗୁଡା abnormal ଲାଗୁଛି, but it is likely that if you had been born here also ଆମକୁ ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡା ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଥାନ୍ତା, ଏଗୁଡା abnormal ଲାଗୁଥାନ୍ତା, right? This is also something we are studied in ethnocentrism, कि ଆମର cultural perspective ରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ judge କରୁଛୁ, right? Okay, I think we should come to case study today. case study ରୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ section A ରେ ଯାହା ଯାହା theory use କରିଥିଲୁ, so ତାର let me change the color, ତାର implementation in real life is ହଉଛି section B, right? So section A ଟା theory, section B ଟା ହଉଛି implementation. Now the point is, why are we studying case study? Case study को ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାହିଁକି? Because they are giving you ethical dilemmas. Ethical dilemma माने कौन? The situations in which there is no exclusively right choice of action or exclusively wrong choice of action, okay? किसी भी जिनिस exclusive नुह एठरे, okay? So many people would be, therefore it is difficult for you to choose one path, right? ଆମେ ଏମିତି discuss କରିଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେ ଗୋଟେ desert ରେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା, right? ମନେ ଅଛି ସେ example ଟା, कि ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଥିଲା, ଜଣେ ତାର ଦୁଇ ଜଣ ଏନିମି ଥିଲେ, ଜଣେ ଏନିମି କଣ କଲା, ରାତିରେ ଆସିକି ସେଥିରେ ପାଣିରେ ପଏଜନ ମିଶେଇ ଦେଲା, କି ସେଟା ପିଇଲେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେ ମରିଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ତା ବୋତଲଟାକୁ କଣା କରିଦେଲା, କି ସେ ଯାହା ପାଣି ତାର ଥିବ ସେ ବାହାରିଯିବ। now the person next day ସେ ତ କଣ କଲା, ତାକୁ ପାଣି ବୋତଲ ଖୋଲିଲା, ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମରିଗଲା। now the question was that କିଏ ତାକୁ ମାରିଲା, right? and we had discussed that in this case no one can say कि exclusively right or exclusively wrong choice of action ଆମେ କାହାର କହିପାରିବେନି। Okay, wrong तो चलो दुई जन जाकर wrong बोले हम finally decide करू, but can you say कि no only this one person killed him? No one can say कि only one person killed him, right? Similarly देखो development versus ecology debate or even displacement debate, okay, any of this हमें ये debate रे भी देखिथिलु कि what was the issue with this, कि there is no singularly correct action. So some people might even say कि development should be given priority, someone will say कि नहीं ecology और displacement no हो ସେମାନଙ୍କର tribal ମାନଙ୍କର, that should be given priority, or forest କୁ protect କରାଯିବ, that should be the priority. now ଆମେ କଣ କଲୁ, just to say कि because development ବି ଆମର ଦରକାର, ecology ବି ଆମର ଦରକାର, ଆମେ ଗୋଟେ middle ground ବାହାର କରିଛୁ, right? कि some in some way we should be doing both development as well as ecology, ମାନେ we should be able to protect ecology and the local people. but this is the meaning of ethical dilemma, कि case study ରେ तुमको एमिति ethical dilemma दिया हबो जोथि कि तुमको immediately correct course of action कोन, completely correct आ completely wrong कोन, सेटा immediately maybe जणा पड़िबो नाही। now what is the point of giving this then? तो ए ethical dilemma देले कोन actually तांकर फायदा होची, so they are testing your individual लो कोन समय टेस्ट करचंदी, moral reasoning, very very important, this is the most important part. UPSC wants to and OPSC wants to check your moral reasoning. So moral reasoning means why certain course of action is better than other. Okay. We are not saying why certain course of action is completely correct, but why is it better than any other course of action. Second point is walking the talk. Walking the talk माने तुम्हें जहाँ actually section A रे तुम्हें जहाँ कहिथिलो, whether you are able to implement it in section B. Okay. In this sense एटा नहीं कि, and यार भी माने कौन कि means तुमको जेतले सिलेक्शन करा हो finally, you should have those mental or ethical capability to actually implement what you are saying in the exam. section A रे जो बड़ बड़ कथा तुम कहउछ कि theory रे सब लिखा अछि, John Rawls is saying justice हमको ensure करियर अछि, ethics is justice, then Buddhism is saying कि नहीं हमें मध्यम मार्ग नवा, ये सब जो बड़ बड़ कथा कहउछ, whether you are able to actually apply this in the real life or not. तो actually जेतले ई भला गोटे ethical dilemma आछि, whether you are able to understand कि एथरे माध्यम मार्ग हमें नहीं पारिया। otherwise तुम्हें section A रे यदि देखो contextual तुम्हारो यदि difficulty अछि, तुम्हें भाबुछ कि this is something else, theory is something else, practice is something else, right? then तुम कोन theory रे बहुत बड़ बड़ कथा कहबो, practically कोन तुम कोन लिखो, नहीं हमको तो development दरकार, पूरा आंसर लिख दो कि नहीं मु तो development करबी, से रोड टा जेमति हेले बनेबी, फ्रीवे टा जेमति हेले बनेबी,
से ट्राइबल माने जानतु जुआडे जो, right? So now that means you will not make a good officer, you will not be a good administrator because तुम समस्त consideration को नो ना mind, right? Then third is to check your emotional intelligence. This is not, remember, not cognitive intelligence. तुम्हारा cognitive intelligence to a great degree has been checked by other GS papers including A paper रे भी section A रे तुम्हारा cognitive intelligence रा test ହେଇଯାଇଛି, right? Now this is also, let me tell you, एटा भी गोटे बहुत controversial जिंस, एटा कौन controversial जिंस कि whether आमे जो ethics पूरा entire GS paper 4 टा जहाँ भी अच्छी ethics, so this is argued कि जणा दे भलो ethics answer लिखियो which is out of the person's cognitive intelligence, will that translate into the person's actual ethical behavior? In other words, जणा दी ethics रा दी okay 250 ରୁ suppose 200 score कर देला, is it likely that the person will also do ethical work on the ground? What do you think? तुम कौन लाଗୁଛି ଏଇ ଭିତରେ କିଛି link ଅଛି କି ନାହିଁ? Is this link, is there any link, or whether it is, how strong it is? No sir, the सर link is ସେମିତି weak. Not strong, sir. हाँ सर हाँ जने कुह कि I think Subhasri was saying something. सर ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସर ସେମିତି କଂକ୍ରିଟ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କି କଂକ୍ରିଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି ବି କୁହାଯିବନି ବିକଜ ଆମେ ଏବେ ପିଅରରେ କଥା ହଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏଥିକ୍ସ ଲେଖିବା କଥା ସେଥିରେ ପିଲା ଆଡମିଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିକାଲ ନୁହେଁ ତ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି କଣ କରିବି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପିଲା ଏଥିକାଲ ହେଇକି ବି ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ହେଇକି ବି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ଜିନିଷଟା ଡିବେଟେବଲ ରହିବ ସବୁଦିନ। Okay, that is one perspective. Can you give another perspective? How? Yes. Depends upon the person and situation. Okay. What depends? Sir, अच्छा it's जदि totally देखो एई वाला आंसर सपोज आमे कहले ओके देखो एई आर्गुमेंट रे कोन इशू छै आमे यदि कहैबा कि डिपेंड्स ऑन द पर्सन ताले जदि डिपेंड्स ताले एंटायर पेपर रो करियर पॉइंट किछ नै जदि इट इज एंटायरली डिपेंड ऑन द पर्सन ताले आमे एथिक्स पेपर रे टेस्ट करी कोन जानि परिया ताले आमे तो नॉर्मली अन्य पेपर उडा करे दा फाइनली कहया कि से लोक भलो अफसर होबो कि नै दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। Sir, किछिटा में माने किछिटा ट्रेट में ता भीतर इनकलकुलेट करि परिबा। Okay, to some, you are saying to some extent it can be done. Yes sir. सर Okay. जेମିତି इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़िकी इमोशन को बेसी भल यूटिलाइज करी हबो किंतु दरकार पड़ले मैनिपुलेट भी अन्य को करी हबो एथिक्स पढ़िकी ए जो इमोशनल इंटेलिजेंस द्वारा। Right. So you think that, so that means कि ताले ता माने कोन हला सेटा मत को ता माने सर दी प्रकार वे रे हम एथिक्स पढ़िकी यूज करि परिया भलो मनीष भी हे परिया आ खराब डायरेक्शन भी यूज करि परिया ताको मैनिपुलेट करिया पे ताले एथिक्स पढ़िया कथा कि नै देखो हां सर सर पढ़िया ଏଥିକୁ ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି whether ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ଆମେ ହଉଛୁ କି ଆମେ ଠିକ ୱେରେ କାମ କରୁଛୁ ନା କରୁଛୁ ସେଟା ବି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା। सेटा हम आइडेंटिफाई करते। Okay, which is Sir, also in my opinion, the link is weak. कारण हमरे एग्जांपल भी हमें देखे छे आई थिंक कोर्ट आईपीएस ऑफिसर भी से माने एथिक्स रे हाईएस्ट मार्क रखिले बट द नेक्स्ट अटेम्प्ट से आई थिंक अनएथिकल प्रैक्टिस करथिले ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सो but this is something that we can argue in case of anything कि हमें यदि गोटे जेनरिक और स्पेसिफिक जिंस हे गला कि हमें किछ लोग कहबे कि दिस इज एन एक्सेप्शन so because of an exception we should not judge anyone, so why should you say कि ए केस ताले इशू कोन हला जण लोक sir सेमते करला तो not only exception like there are multiple cases where माने ए भलिया किछ अनएथिकल बिहेवियर हमें देखुछे तो हमें एथरो किछ पैटर्न्स हमें डिराइव करि पड़ने छे माने कि एथिक्स पढ़िले माने कि ऑफिसर रियल लाइफ रे से एथिकल हेसियो बोली। सर Okay. जो फिलोसोफर कहते कि आमे सबू इनहेरेंटली एथिकल खाली सिचुएशन ने पड़ी कि खराब काम कर दो सेते एटा पढ़ले सर हम It's a very good thing, just can you repeat please? सर आपण तर कहते जे आमे सबू इनहेरेंटली एथिकल आ केवल खाली सिचुएशन अनुसार अनएथिकल हे जाऊ एटा पढ़ले Situation हिसाब रे हमें unethical हे जाऊ। Okay, तो let me एटा find the pen, I don't know where the pen went। Okay, पढ़िले so maybe are you talking about the romantics, for example the Rousseau type रो जो माने कहले कि noble savage कि we are born ethical but actually पढ़ी के और खराब हे जाऊ, right? Society हमको corrupt कर दिए, so that can also be an example, that can be one perspective। Okay, now इडा देखो हमर एथरे इशू कोन कि किछ लोक कहबे कि
एमती आप यू कैन गिव एनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो माने को एमती सिलेक्शन करा है बट दे आर बिहेविंग इन एन अनएथिकल वे फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ वन आईएएस ऑफिसर जी के हरियाणा रे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा रे जो होतला तो सेठी जाई कि से एसडीएम एज एन एसडीएम सेठ के सर फोड़ो है ना so, he would also have gotten good marks in ethics how is this person becoming IAS officer एथिक्स रे भल मार्क ता माने कोन सेथरे किछि लिंक नै बट हमो कहया कथा कि आउ जने आर्ग्यू कर परियो कि हमें स्पेसिफिक केस और जेनेरिक केस कथा कोआ होछि जेमति कोआ होछि कि सपोज ऑन एवरेज इट इज सीन दैट बायोलॉजिकली ऑन एवरेज men have more height than women राइट ना समानल केस है कि नहीं मोर जने अछंती आंटी अछंती तांकर हाइट तो बहुत लंबा ता माने कोन ए फाइंडिंग ता कोन रॉन्ग कि बोलছে कि नहीं जेनेरिक आउ एक्सेप्शन केस भी अछि बट इन जनरल इट इज सेड कि माने ए अजम्पशन ने यूपीएससी एटा को रखी कि जो माने हमें एथिक्स पढ़िले इट इज लाइकली दैट द पर्सन विल बिहेव इन ए गुड वे नो वन कैन गारंटी एनीथिंग एथिक्स रे भलो मार्क रखी यू कैन बिहेव इन माने खराब बिहेव कर परियो हमें एमती कहया कि एंटायर तुम भाबनो यदि यूपीएससी एंटायर और ओपीएससी जो जहां भी एग्जाम हो फाइनली जो माने सिलेक्शन हले देन तांको भीतर बहुत लोग करप्ट बाहरी सो डज इट मीन कि हमें सिलेक्शन को बंद कर दा बर्तन कथा यार अल्टरनेटिव कौन यार अल्टरनेटिव के मन इच्छा जहाँ को लोक आनियो बर्तन सेमान को भीतर बहुत करप्ट बाहरी आउ ऑनेस्ट बाहरी आवर पॉइंट इज इट मोर लाइकली कि गोटे रिगरस प्रोसेस थ्रू रे सिलेक्शन हेले जे मोर कैपेबल लोक पिला को हमें बाहर कर परिया यस इट इज मोर लाइकली ओके एंड रिगरस प्रोसेस रे न होय कि हमें एती गोटे फेवर बेसिस रे लोक को इंक्लूड करिया देन व्हाट विल हैपन इज कि दे विल हैव it is likely that they will do more corruption or they will have less integrity now let me give you that what a final point I'm trying to explain to you okay now we usually people think कि आबे आम एमती कहलो attitude behavior link तो people माने भावंती कि actually ethics जे पढ़ी छी आ ethical behavior भीतर भी link टा बहुत weak अछि right now I want you to go through this aspect this is in UPSC syllabus ना हमें गोटे mental case study करिया you go through this एटा हो UPSC syllabus रे ethics GS4 रे frame कराई ना just silently read the entire thing okay एटा UPSC रो निजर syllabus लिखा है एंड पढ़ी कि मते कुह फ्रॉम दिस व्हाट डू यू थिंक इज लाइकली कि जो लोकटा जो पर्सन हु हैज फ्रेम्ड दिस पार्ट whether this person is a man or this person is a woman you read this and you guess मते कुह भाभी this is a very strange exercise I know but read it and guess Koyachiki, this paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem-solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. Sir, From this, what do you The think? use of by he's and a he. Sir, him. ତାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ Okay, Sir, let's see ki there's the problem. His problem. Okay. Relating to integrity, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. And the katha hochi candidates are you able to see UPSC has framed this and I think it is very likely ki jo lokata eta frame kochi that person is a man. Okay. Now a woman could also have written this. Okay, we are not denying that. We are saying it is likely. Why? Because we deduce from these two lines only कि this person might be a माने man who is because he doesn't understand कि एबे हमरो language भी change हो गलानी धीरे धीरे right हमें more inclusive language करू so in this case they should have written like this she he or she or they would have written they right so they should have written कि approach to issues relating to integrity probity in life and their problem solving approach please mute your audio समस्त audio mute कर दियो ना माय पॉइंट इज जस्ट सी कि हमें गोटे सिंगल पैराग्राफ जदि गोटे लोकर तार बैकग्राउंड जो लोकटा लिखिछि तार मेंटालिटी बुझीगलु डू यू नॉट थिंक कि गोटे एंटायर पेपर रे वेयर यू आर राइटिंग मे बी 20-25 पेजेस डू यू नॉट थिंक द ओवरऑल द एग्जामिनर वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एथिकल माइंडसेट तुम्हें यदि जस्ट इवन थिंक अबाउट एनी एसे सपोज यू आर राइटिंग एन एसे ऑन अफर्मेटिव एक्शन ओके रिजर्वेशन विषय रे लेखुछ किछि एसे जदि तुम 20 पेज रो एसे लिखिबो लेट मी टेल यू ओवरऑल विल गेट एन आइडिया कि व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिजर्वेशन डू यू नॉट थिंक देखो हम गोटे पैराग्राफ रो गोटे लोक विषय एति गेस कर देले
25 पेज रो तुमरो आंसर रो तुमरो मेंटल स्टेट कोन कैन वी नॉट गेस. One person can guess कि what is like whether you are more likely to be ethical or unethical. now तुम सेतरी कहि कि सपोज एथरे भी जने बहुत भला आंसर लिखियो देन द पर्सन इज अनएथिकल. ना से केस रे यूपीएससी भी कोन कर परियो. But what we are trying to do is कि through this case study, through the ethical dilemmas, we are trying to explain or trying to understand कि what is more likely, whether you are more likely to be ethical or whether you are less likely to be ethical. तापरे भी किछि लोक सिस्टम थ्रू रे स्लिप करि जे. So that is not our fault, right? We have done our best. That is the point. Okay. Are you able to understand कि entire जिनसटा case study उडा काहे की अछि? Okay. For this reason, we have the case studies. Now, similarly, we can also what are they also testing? They are testing your attitude. Okay, what is your overall attitude towards different problems of the life, different situations, different sections of the people? Okay, attitude is also towards different section of the people. I mean, suppose कथा लो कि development versus ecology displacement. एथरे तमे कहयो नाही आमे तो development मत तो जेमती हेले भी दरकार. Okay, से लोकल लोकंकर जाओ मत किछि फरक पड़े. So that means कि तुमरो गोटे inclusive attitude नहीं, तुमरो welfare attitude नहीं. हेई पारे कि यू आर बोर्न विथ सिल्वर स्पून आ तुम भीतर से एम्पैथी टा नहीं. देन तुमको आमे ऑफिसर बने दउ तुम तो मन इच्छा एंते डिसीजन नो. So this is also an example of attitude, whether you have a can do attitude or not, whether you have a positive attitude towards life or not. Okay. That is also something we can judge. Similarly, your problem solving abilities, very very important. Problem solving abilities कौन कि तुम्हें practically माने actually जो है problem life रा आसुची, whether you are able to solve it or not. कि तुमको सपोज डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड जिनस आसी होची whether you are able to find the correct answer to it or not. For example, suppose तुमको कुआ होची कि एठी गोटे लैंड एक्विजिशन होची तो यार इशू कोन होची लोकल लोक माने करिया को दउ ना. ओके, सो व्हाट इज योर सॉल्यूशन? सपोज तुम कहे कि हमें कोन करिया लोकल लोक माने यदि करिया को दउ ना ताले हमें पुलिस लगे कि एनफोर्समेंट करी कि ताको जबरदस्ती तांकर करे दवा. नाउ दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. हमें एमिते वे रे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया जते फ्यूचर रे प्रॉब्लम न क्रिएट करियो. आमे यदि जबरदस्ती तांकर लैंड छडे आनिबा नाउ दे विल गो टू द कोर्ट. तुम अगेंस्ट पर्सनली भी तुम अगेंस्ट केस हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन केस हो. So whether you have the correct problem solving attitude or not, ability or not, and finally whether there is a pragmatism or not. Theory is also one part, but theory को practically केमती implement करिया. Okay, so that is also an art, right? So theory is माध्यमक मार्ग. Practically तुम्हें कौन middle path तार कौन ही परियो. I mean the development and ecology रे consider करू कि तार practical approach हो कि एमितिया way रे ଗୋଟେ development project हो which will benefit both the local people as well as it will finish our task. For example, we'll say कि आमे local लोगों को ही सेठी jobs दबु. Local लोगों को आमे सेठी different employment से project रे ही include करियो. ताको rehabilitate करियो अन्य गोटे जगह रे by giving them an equivalent or even greater amount of land. So this is a practical approach कि माध्यमिक मार्ग केवल हम theory रे कहूँ how माध्यमिक मार्ग is being implemented in real life, right? So these are the different things they are trying to understand कि तुम पाखे एतिकी ability तुम्हारा अच्छी की नहीं. ठीक है, तो लेट्स गो ऑन एंड सी कि नेक्स्ट कि कौन हमर हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज. नाउ यू विल सी देखो एटा भी दिस इज आल्सो एन इंडिकेटर बाय द वे गो थ्रू द नोट. एटा भी गोटे इंडिकेटर जस्ट मु एबे इमीडिएटली जिनसटा को ऐड करी भूली. देयर इज आल्सो अनदर इंडिकेटर कि केस स्टडी और जो सेक्शन बी टा आल्सो इज चेकिंग योर पर्सनालिटी. तुम्हारा पर्सनालिटी रो एस्पेक्ट को भी चेक करू. एंड इन फैक्ट इफ यू सी द इंटरव्यू स्टेज रे जहां हमर लिखा अछि व्हिच इज अबाउट द personality test of the candidates, from that you will be able to understand कि what UPSC wants कि पिला मान को भितर कौन criteria थिया था. So a criteria these you can also use in your case studies. This is something you should try to understand कि what kind of different criteria are being looked for. So they are saying that the candidate will be interviewed by a board who will have before them record of his career blah blah. So interview objective of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for a career in public service. Means तुम्हारा public servant हवा पाई capability अच्छी की नहीं. Okay. Second, they are saying that the test is intended to judge the mental caliber of a candidate. In broad terms, this is an assessment of not only their intellectual qualities but also social traits of their interest in current affairs. But now here, by the way, notice his her. Okay. So now we don't know whether this person is male or female. It is likely that male hele bhi maybe that person is more progressive or something, or they have more sensibility. That is what we can guess.
or maybe that person is also a female, right? So now we can can you understand from the writing itself we are able to judge the person. Okay. Now so now next see some of the qualities to be judged on. It is also important part. Mental alertness, critical powers of assimilation माने critical thinking, clear and logical expositions माने logical analysis, balance of judgment, balance of judgment माने किसी extreme तुम्हें the decision न बन, right? For example free speech versus surveillance question आसला तुम्हें कहना है speech तो पूरा completely free हवा दरकार तुम 100% free बोली कहला this is not a balanced judgment कथा होचे आम वाला country रे 100% free छाड़ दो लोगों को ताको abuse करिवे, right? So whether you have the balance of judgment in understanding or not. Similarly variety and depth of interest तमरो interest और केते कोन काम करूचो केते कोन जिंस विषय पढुचो जानुचो से different interest in different activities should also be varied माने बहुत सारा different areas रो थिबा दरकार and in depth also. That means in some aspects you should go into some depth. Okay, जदि खेलुचो जदि भी भलो player हेतिया दरकार or to some extent you should be enjoying it, right? And it is very important that there should be ability for social cohesion and leadership. This part I wanted to emphasize. Social cohesion मन रखियो, that means सब लोग community centric approach हमर रहया अछि, individual approach तमे न बने. Okay, because in a country like India it is the most populous country, आमे यदि western completely western derived notion ने चलीबा, suppose तुमे US रो थॉमस पेन रो philosophy पढ़ी बहुत ही inspired हे गला, liberty freedom everything you are talking about this. But point is you also have to understand that different philosophies also are developed in different contexts, different necessities, different periods of time. तो maybe तांको time रे तांको country रे individual liberty टा बहुत important, आमो पई कोन बेसी important community harmony. So whether your answer is reflecting this or not, social cohesion को reflect करूची कि नहीं, this is very important. And finally leadership, you yourself you will be a leader. If you don't have any leadership quality, how can we select you? For example तुमको यदि गोटे एमितिया केस स्टडी दिया आइची where there is a need to show the leadership quality. For example कहै छि कि किछि गोटे एमिति डेंजरस काम अछि तुमको काहा को पठेयार अछि, ओके तुमको ऑप्शन दिया आइची कि सपोज किछि गोटे डेंजरस काम माने इन द सेंस कि सपोज किछि गोटे राइट हे, ओके क्वेश्चन इटसेल्फ पचराइ छि कि राइट रे तुम काहा को पठेयो, one person तुमर जने एम्प्लॉई अछि, that employee which is who person is very strong, physically strong but mentally maybe weak. Another employee 2, that person is mentally strong but physically weak. Okay, who will you send? Tell me. Sir, mentally strong. Okay, what else? So How can we कहि send परियो? both? सो दुई जन को पठेଇ हबनी देखो एपन क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आसीनी मु बहुत सारा हिंट तुमको देई सारनी. think से out of निजे the जिबे box. सर निजे जिबे. Very good, neither of these two. देखो एमिति हम फसियो हला तुम पचाउछ एम्प्लॉय 1 को पठेबे एम्प्लॉय 2 को, भाई तुम मार्केट को तांको थोड़ी ना मिठा किनिया को पठौछ, राइट्स को पठौछ, तुम्हें निजे न जाए कि एम्प्लॉय 1 को पठे दो तो जाओ बाबू तुम्हें बुझी के आसे राइट कोन होछ. You will say कि before sending these I will go first. Okay, then एटा तो चलो एटा तो बहुत ही जो लोक मेंटली स्ट्रांग हो ताको तो एटा पठेयार ही नहीं. Okay, so the problem is many times we assume कि this is our माने एथरे लिमिटेशन हमर अछि एतिक भितर हमको चॉइस अछि, but many times actual answer is something outside the box. You have to think outside the box, right? This is the meaning of leadership. अबे देखो तुम्हें ए थ्रू हाउ यू वी आर गेटिंग हिंट फ्रॉम व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू. यूपीएससी तुमको ऑप्शन दबो और ओपीएससी तुमको ऑप्शन दबो एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2. तुम्हें कहियो कि भाई मु तो ये गेम खेलु ही नहीं. I will send neither employee 1 nor employee 2. I personally will go and maybe I will call the police or something कि backup ପାଇଁ I'll call others. But you will say कि मु एम्प्लॉय 1 को निया को खेल दे. यूपीएससी जे एग्जामिनर देखिएगा अच्छा बाबू तुम्हें हबो ताले डीएम ना, ठीक है तो तुम्हें तुमको एवरेज मार्क देके छाड़ दे. Now you tell me, now is your attitude towards this paper, has it changed maybe a little bit? Do you think is it possible कि हमें तुम्हारा ethics ना आंसर देखिए तुम्हारा moral integrity ethical ability को जज कर करिया? You tell me, what do you think? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so see this is again ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଦେଖ attitude towards some objects, ideas, everything, these are not at all inborn, these are also learned. Our attitude towards this service, many of the माने आमे बाहर भी सुन के एमितिया हेछि कि
चलो एथरे तो एग्जाम रे केमितिया स्क्रीनिंग हो जे हमको जाना नहीं, मे बी एटा एंटायरली रैंडम एथिक्स रो पेपर वैल्यू कोन किस तो वैल्यू नहीं, बट अगेन व्हेन यू गेट मोर इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन कहा करते हैं, व्हेन यू गेट मोर आइडियाज, मोर काउंटर आर्गुमेंट्स, then many times you will be also be able to change your attitude. Now your attitude, at least some people को attitude में भी टिके change हो, because earlier तुमको गोटे साइड रो आर्गुमेंट ही जଣା थिला, काउंटर आर्गुमेंट तो तुमको जଣା ही नथिला. Now I demonstrated you what can be the counter argument to this argument, कि लेखियार तो एक्चुअली काम संगे किसी भी लिंक नहीं, but I'm telling you when you read ethics properly, then your ethical ability will also develop. ଏବେ ତାପରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅନଏଥିକାଲ କାମ କରି ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, but it is likely that with the ମାନେ understanding of ethics, your behavior will also become more and more ethical. So these are also many things that you have to keep in mind when writing answers, and if you keep these things in mind, your answer अथवा ethics ର case study रे भी माने correct option कौन तुम mind टा बहुत expand करके you will be able to understand what is the correct option, right? By the way, are you enjoying the class? बोर लाଗୁଛି? Just let me know. You can immediately start case studies, no issues, but आज ମୁଁ तुमକୁ पूरा case studies ର detail ରେ ବୁଝଉଛି in depth how you are going to write the case studies. Otherwise देखो ମୁଁ starting ରୁ ଏମିତି ବି start କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ case study ଦେଖିଥାନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି कि चलो यार आंसर ये but I thought कि ଆମେ ଏତେ ସାରା theory part ପଢିଲୁ, so again I want you to exercise your critical thinking ability. Critical thinking ability ଆମର ଟିକେ develop, right? And if you are doing this kind of exercise, then in actual exam you will be able to write good answers because the mind has expand करी. तो it's not like कि this is the question and this is the answer and you तुम्हें रट्टा मार के जाओ लिख दिया 5टा पाँच. ठीक है, now come to this part कि what are the key elements of answers to ethics section 1. case study रो कौन key element अछि. first point is कि first and foremost point समस्त जोटा को टेंशन नियंती कि हमको we have to arrive at the right answer, कि हमको right जिंस कौन हमको बाहर करियार अछि. So I'll tell you कि सेमती right answer है ही पारे कि maximum case रे right answer किछि न ही थियो. So rather it is better to say कि what is the most acceptable answer or most suitable answer, right? So for example even say आमे जो गोटा cliched point नउछु कि what is the development versus ecology debate रे someone is saying कि नहीं हमको development is important, someone will say ecology is important, someone will take middle ground. Even middle ground can be criticized on different grounds. Maybe case to case रे हे पारे कि ecology को ही हमें better emphasis दवा कथा. I'm going to give you an example, now you will understand. देखो इंडियन गवर्नमेंट गोटे रिसेंटली दे हैव टेकन अ डिसीजन कि अंडमान एंड निकोबार रे एई सब केस स्टडी ही आसलो. अंडमान एंड निकोबार रे समान कोन करे पाम ऑयल लगेबे, पाम ट्री लगेबे. मेनलैंड इंडिया जे अंडमान निकोबार दे विल प्लांट पाम ट्री. तार रीजन कोन? तार रीजन होची हमर पाम ऑयल टा बहुत सारा इंग्रेडिएंट रे यूज है, वेरी वाइडली यूज थिंग, कॉस्मेटिक्स तो आरंभ करी बहुत सारा जिंस रे यूज है. बट इंडिया रे पाम ऑयल प्रोडक्शन जमा हुए नहीं. आमे मैक्सिमम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज रो आनु, स्पेसिफिकली फ्रॉम मालेशिया इंडोनेशिया. now एथि पय हमर इंपोर्ट बिल टा भी गोटे ह्यूज बिल हमर आसे. गवर्नमेंट बहुत चाला, गवर्नमेंट कहले कि अच्छा आमे कहीं के एते पैसा बाहर लोक को दबा, आमे निजे इंडिया रे लगया. तो इंडिया रे से माने बाहर कहले कि को क्लाइमेट टा रे बेटर सुटेबल अछि. देन दे से माने देखले फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे भी ही परियो और अंडमान निकोबार रे ही परियो. देन दे डिसाइड देखले कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे ऑलरेडी किछ लोक अछन से माने करया को देबे नै. अंडमान निकोबार रे केही नांती ट्राइबल अछन, अंडमान निकोबार रे चला हम करे द. The problem with this question is that जदि तुम अंडमान निकोबार करछ, अंडमान निकोबार रे बहुत सारा ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अछि, बहुत सारा ह्यूज बायोडायवर्सिटी अछि. ना हमको कोन कराबो ए सब एंटायर जंगल को काटी की, ओके, हमको पाम प्लांटेशन हमको डेवलप करियो पड़े. पाम प्लांटेशन में इटसेल्फ इज अ वेरी डेंजरस थिंग. पाम प्लांटेशन टा हमें बायोडायवर्सिटी को एलिमिनेट करके गोटे सिंपल गोटे सिंगल टाइप ऑफ स्पीसीज लगौछे तो इकोसिस्टम टा बहुत फ्राजाइल हे जिवो. ओके, प्लस एथरे केते बायोडायवर्सिटी लॉस भी हो. गोटे घंच जंगल ले जति एनिमल्स रहयो, गोटे पाम प्लांटेशन में जति एनिमल रहयो. नाउ द क्वेश्चन इज एई वाला केस रे व्हाट शुड बी द मिडिल ग्राउंड. नाउ तुमको बा लागियो कि एथरे भी हम मिडिल ग्राउंड बाहर करिया कि यार डेवलपमेंट आ इकोलॉजी मझिरे मिडिल ग्राउंड हम बाहर करिया. हमें कहया कि हां ठीक अछि एटी पाम प्लांटेशन भी हबो, बट तार अल्टरनेटिव आउ को जगह रे, और इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज आल्सो सेड दिस कि एठी जो हमें गछ गुडा काटुछु ना ता बदले हमें अंडमान आउ को जगह रे प्लांटेशन कर दू, इंडिया रो आउ को जगह रे प्लांटेशन कर दू. बट नाउ थिंक एई जगह रे जो गछ को गोटे माने मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड, यस मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड,
ओके इकोसिस्टम को आम डिस्ट्रॉय कर जोटा कि मेनलैंड इंडिया रे बहुत सेपरेट होकी थिला सेठी केते स्पेसिफिक स्पीसीज माने थिबे जो माने डिस्ट्रॉय हे जी असे तार इकोसिस्टम सर्विसेज रो वैल्यू केते भाव कैन यू रिप्लेस दैट विथ another new ecosystem which would be developed in say ओडिशा ओडिशा रे तुम सेम अमाउंट तुम केवल एरिया को केवल हम देखिए कि हम एतिकी एरिया काटी देतु सेठी एठी भी सेतिकी एरिया प्लांटेशन कर देलु you cannot replace that kind of thing. So it is my opinion that in this case you should give entire preference to ecology. You would say कि हमें एमती अच्छा यार देखिए यार सॉल्यूशन बाय द वे मो माइंड में कौन आछी हमें एथरे भाबे कि हमें पाम ऑयल के तो इंपोर्टेंस ही नहीं दवा rather we should try to find out what could be an alternative to palm oil. Maybe we should try to find out कि maybe using some our देसी माने प्रोडक्ट हमें केमती पाम ऑयल रो रिप्लेसमेंट पाई परिया फॉर एग्जांपल घी को सपोज इफ वी आर एबल टू यूज घी इन समथिंग चलो घी भी यूज हे पालानी आउरी हमर बहुत सारा प्लांट्स अछि ना जहार हमें ऑयल पार आफ्टर ऑल दिस इज एन ऑयल व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ प्लांट now this palm tree it is not native to india तो आमे किछि नेटिव प्लांट बाहर करिया जहार ऑयल को हमें रिप्लेस कर पारे now ताको हमें यूज करिया इस डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सेही प्लांट गुडा को व्हिच इज सुटेबल फॉर आवर क्लाइमेट आवर इकोलॉजी से गुडा हम डेवलप करिया अंडा निकोबार को हाथ ही मारन because this is very precious for us then even think about the local tribe ए घंच जंगल भितर से माने सर्वाइव कर पारे प्लांटेशन भितर माने कोड सर्वाइव करिवे तांको निजे चलिया को तांको मिलियो नै ओके सपोज दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट माने हंटिंग एंड गैदरिंग से माने कोड करिवे जो तुम इकोसिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देलो प्लांटेशन पाम प्लांटेशन जाई से कोन खाया मिल सो एठी भी जदी तुम ब्लाइंडली कहयो कि मु तो मिडिल ग्राउंड ही नै ना माय पॉइंट इज कि मेनी टाइम्स राइट आंसर बोली सेमती किछि न थाए एंड मिडिल ग्राउंड भी सबले राइट आंसर हो बोली किछि माने नै हे पारे कि गोटे सिंगल साइड भी राइट आंसर ही पारे राइट so here we should say it should be an most acceptable answer or most suitable answer depending on the scenario depending on case to case basis re hame dekhiya ki whether it is the right thing to do in this case or not okay so here first and foremost thing jota tum ame sobale besi worry karu rather you should not worry ki mu right answer likhi chi nahi you should worry ki whether it is the most acceptable answer or not most suitable answer or not now the second point to understand this is eta ko bar bar mu kahi chi moral reasoning okay moral reasoning माने कौन once you choose anything you have to justify it जेपन तुम justify करी ना by giving some evidence argument counter argument then your answer will not be complete okay? even if you are giving the right answer suppose एक case रे भी तुम्हें right answer दे दो तुम्हें कहला कि suppose the examiner is looking कि यहाँ को किए ecology टा को emphasize दे के answer लिखिए एंड तुम्हें लिखि देला कि नहीं ecology को ही हमें प्रायोरिटी देबा कथा हम तो डेवलपमेंट ए केस रे एमतिया करिया कथा न पर तुम्हें एक्सप्लेन करी ना काहे और बहुत बैडली एक्सप्लेन करछो देन विल नॉट गेट गुड मार्क्स करेक्ट ऑप्शन पाई कि भी तापर तुम ठीक से एक्सप्लेन न कर पाले न कर पाले नॉट गेट गुड मार्क्स ऑन द अदर हैंड जोने लेस प्रेफरेबल कोर्स ऑफ एक्शन ओके लेस प्रेफरेबल कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करी कि भी इफ दे आर एबल टू जस्टिफाई इट वेल बहुत सारा डिफरेंट वे रे जस्टिफाई कर देला फॉर एग्जांपल केस स्टडी देखी फॉर एग्जांपल लॉ कौन अच्छी रूल्स रेगुलेशंस कौन अच्छी फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कौन अच्छी इफ द पर्सन इज एबल टू जस्टिफाई then even that person will get more marks okay? So moral reasoning is also very important of course less preferable माने नुहा कि पूरा completely wrong answer है for example I am giving you another example बेले बेले कौन कि जाना पड़ियो माने right answer ही पारे बेले बेले completely right न हाले भी you will be able to understand कि what is the most suitable action or what is not suitable for example think of a case study where a case study भी हमें एमती भी आसिया गोटे next गोटे अच्छी case study suppose there is a case of sexual harassment at workplace और सेक्सुअल भी चलो सेक्सुअल तो बहुत अधिक गला नॉर्मली भी भावो कि हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस सो सपोज दिस इज बीइंग जस्टिफाइड इन सम अदर सेंस कि हमें हरासमेंट कले कोन हबो तांकर प्रोडक्टिविटी बढ़ियो ऑर्गेनाइजेशन गोल इंप्रूव हबो एंड सेथे लोकन को पीपल मान को वेलफेयर मिलियो ओके सो दिस इज आल्सो बीइंग सेड कि चलो वुमेन नेट वर्कप्लेस को हमें हरास इन द सेंस कि कोन तांको यदि बहुत अधिक काम करेया तांको कथा किछि बुझिबानी इनह्यूमनली ट्रीट करिया ता द्वारा हम कोन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाई देबा और गोल कोन हमर हबो पीपल वेलफेयर ता हमर बढ़ी जिवो लोक मान को हमें एक्स्ट्रा सर्विस दे करिया इज दिस कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट और नॉट एबे तुम कहयो कि हां हमें तो सिविल सर्विस पढछु तो फाइनल पॉइंट होची लोकन को वेलफेयर जीवा कथा तो यदि वेलफेयर जाउची ताले जे हरासले हमर कोन जाय आसे now here you will be able to understand कि some course of action it is completely apparent कि this is not correct at all बर्तमान कथा हो तुम कौन से वुमेन को हरास करी कि वेलफेयर कर परियो लोकन इज देयर नो अदर अल्टरनेटिव
ଏଇଭଳିଆ ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ କି ଆମେ କିଛି ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା କାମ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିକି ହିଁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରିବା? ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କି ଯଦି ଇଫ ୟୁ ଆର ଥିଙ୍କିଂ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କି ତମେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ କୁ ମ୍ୟାନେଜ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନ, ରାଇଟ? ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ତମର ନିଜର ହିଁ ଖରାପ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେନ୍ वी शुड बी प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पीपल। ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଯୋଉ ୱେରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା କଥା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସେଇ ୱେରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ନା। ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ କି ସପୋଜ ଏଥିରେ ଆମେ ତମେ କହିବେନି କି ଏଟା ୟାକୁ ବି ମୁଁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବି କି ହଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହବ, ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଇଜ दैट पीपल वेलफेयर। So are you able to understand कि ଟିକେ complicated ଜିନିଷଟା? In some cases you have to choose a better course of action in and again you have to justify, ଯାହା ବି କରିବ ତାକୁ justify କରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କେସ୍ ହବ କି completely wrong course of action କୁ please do not choose। completely wrong ତ କୁହାହବନି କି apparently wrong course of action କୁ choose କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବ କି whether that course of action is it justified or not, right? ତ ଆମେ ଯେତେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, you will be better able to understand। ଗୋଟେ ଗୋଟେ case ରେ intuitively you will feel ki this is the right course of action. In some other cases you will think ki you will be able to know ki this is not the right course of action. But once you decide, you have to justify, you have to show ki why it is so. So moral reasoning, this is the crux or this is the engine of the answer. This will drive your answer. So here you will give justification in the sense argument likhiyo, laws likhiyo kon achi, say related rules and regulations kon achi, philosophical perspective, this is at the last part you have to write. And justification and substantiation कौन? Evidence. For example, you can even write in some cases data figure भी लिख पारियो, although एते सारे जिनसे माइंड को से टाइम रे आसे ना, जदि जीएस टाइप रो न लिखे ठीक अछि, but you can write some case study, you can write some examples. These are better way of substantiation. Okay, कि हमें कहूँ कि एई भला जिंस एई केस रे भी हेतला, this is also an example how we can deal with the case, right? So now come to this part कि कौन हमें लिखि पारिया, how we can justify. These are all, we are all talking about justification part. So first and foremost, you should always try to write laws and rules. देखो हमें philosophical perspective को बहुत डिटेल ही पढ़िछु, but किछि भी तुमको ethical dilemma आसिला ना, the problem is कि if you are for the माने starting में तुम कहू कि एटा John Rawls has said this, Bentham has said this, therefore we should do this, right? You are saying कि Amartya Sen has said this. So examiner will think कि अरे पिलाटा बहुत एते theoretical काई भाबुछि। The first and foremost thing that will guide your action कि immediately actually government law, rules, regulations कौन अछि, so these are the most important thing. So first you have to see all of these things, later on we will go to this philosophical part. हे पारे rules गोटे कथा कहउछन, but law रे पूरा strictly लिखा अछि नै, एटा तो हबो ही नै, तो तुम कहबे नै rules तो मते कहइछन एमति हम करिया कथा, then that will not be acceptable, right? So the first and foremost thing you should write is what are the laws and rules, and even within laws if you see what is the hierarchy, by the way, what is the hierarchy? सबुठु प्रथमे आसियो constitutional article, right? Article is the most important part. Now then will come गोटे same part रे अछि, गोटे अछि parliamentary laws, and on the other part there is Supreme Court verdicts, right? जहाँ judgment रे जहाँ outcome आछि, then ता तळे कोन हबो, then government or executive laws, sorry law एथरे आसी rules रे पाओ, rules, okay, rules regulations जहाँ पे, then आसियो some type of conventions maybe, okay, finally आसियो social or cultural customs, conventions, guidelines, institutions, finally it आसियो. So this is the hierarchy. First and foremost you have to go by the constitutional articles, so the clearly article mentioned you have to go by it. Then parliamentary law जो clearly frame ହେଇଛି or related କିଛି Supreme Court verdict ଅଛି, many times because what will happen कि even Supreme Court verdict will trump the constitutional article in a way कि how they have interpreted it. ହେଇପାରେ constitutional article ଗୋଟେ way ରେ ଲେଖା ଅଛି, but Supreme Court କହିଲେ कि नहीं यार माने ଏटा नहो, यार माने ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ସେମାନେ interpret କରିଦେଇଥିବେ. In that case, in some few cases Supreme Court verdict will also trump, but in general what will happen, constitutional article will be supreme, then parliamentary law jaha achi and Supreme Court verdict jaha achi, then government रो जहाँ rules and regulations अछि से topic ऊपर, okay? Rules and regulations means suppose for example what are the civil service conduct rules, right? Conventions and guidelines for example जोटे rules और regulations भी नहीं, तो किसी convention थाई पारे, किसी guideline थाई पारे, गोटे scheme को केमते implement करा हो, तापर किसी law नहीं, but there are guidelines you should implement in this way. Finally social and cultural customs, okay, this also has some legal sanctity, don't think this is completely
doesn't have any. For example तुम कह कि तुम यदि बाहा हो हिंदू रीति रे जो भी तुम पर्सनल लॉ अंडर रे तुम बाहा हो पूरा एंटायर सेरेमनी रे तापर तुम कह कि नहीं मु तो कोर्ट मैरिज करनी ताले मु आउ जन को बाहा that cannot happen. Social and cultural custom will also have in many cases they have the force of law. Then the court will say कि no this is becoming polygamy, right? So but this is the hierarchy. Now let's say कि यार example कौन justification part कौन लिखियो constitutional provision or article. Suppose you are writing about article 21 right to life. So you will say कि under right to life and personal liberty this is justified. Okay. Suppose ଗୋଟେ case study आसी कि ଗୋଟେ ଲୋକକୁ habeas corpus writ petition जाइछि because the person is being held against his or her will. So as a DM, what will you do? So you'll say कि under Article 21, first and foremost, I'll try to ensure freedom of the person because the person has right to life. Then there are some parliamentary law किसी type पर. Parliamentary law, for example, suppose what a case study अछि जोथरे sexual harassment होछि. So that is a Post Act 2013, Prevention of Sexual Harassment Act 2013. So very clearly parliamentary law अछि. Similarly, Prevention of Corruption Act what अछि PCA. Prevention of Corruption Act रे अछि कि public servants माने bribe नहीं पारिबे नहीं. If they are taking bribe, they will be persecuted. So there is very clear law here. एठी तम कह कि नहीं बेंथम कहउचंती कि आमे यूटिलिटेरियन की मु यदि ब्राइब नेबी ता द्वारा किछि लोक कर हेल्प हिजो मैक्सिमम लोकंकर मैक्सिमम बेनिफिट हिजो सेति पई मु ब्राइब ने देन यू विल से कि तो बरडे बेंथम कोन कहउचंती 19 माने 1800 मसिया रे कोन कहितले डजंट मैटर व्हाट मैटर्स की राइट नाउ इंडियन गवर्नमेंट रो कोन रूल अछि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये हायरार्की नो माने कोन तो आमे माने एमदी arbitrary argument देखी you will not be able to justify it. Similarly, central government rules and regulations कौन अछि? For example, अब देखो law और rules and regulations with difference कौन? Law होजी something which is giving you a broad framework, right? से framework अंडर तापरे empower कराए थे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैंने फर्दर डिटेल्स को ऐड कर करी. तो ये डिटेल गुड़ा हला rules and regulations. The framework that is the law. Okay. एंड फ्रेमवर्क ऊपर भी जो प्रिंसिपल तैयारी थी यूजुअली द प्रिंसिपल गुडा होची आर्टिकल गुडा राइट सो टू जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल सपोज देयर इज एन आर्टिकल ऑन कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट आमे लोकन को दबा राइट और आमे लोकन करो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक जस्टिस एंश्योर करिया सो दिस इज मेनी आर्टिकल्स डीपीएसपी फंडामेंटल राइट इतरे अछि सो दिस इज द प्रिंसिपल based on this principle parliament has framed a law which is national food security act गोटे और चलो NREGS भी गोटे act under रही छी नरेगा act अछि already right now नरेगा act है जी this is the basic framework now under this the central and state governments are empowered to frame further rules कि এই act को हम implement केमति करिया so এই act रे लिखा है जी कि लोक मानकर right अछि कि समान को unskilled labor समान डिमांड करि परिया डिमांड कले तांको काम मिलियो ना एक्जाक्टली को कंडीशन ने केमिति काम मिलियो केते पेमेंट हबो केते पैसा ताको मिलियो पैसा न मिले ताको कंपनसेशन कोन मिलियो ए सब जो फर्दर डिटेल्स उडा अछि दीस आर बीइंग फ्रेम्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस सो गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल या अंडर रूल एनआरजीए एक्ट अंडर रूल बाहर करियो कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी रूल समथिंग 2015 17 व्हाटएवर अंडर दिस एनआरजी एक्ट राइट एंड फर्दर रूल्स अंडर ता तळे भी बाहरियो कोन कन्वेंशन और गाइडलाइन कन्वेंशन एसो जिनस बाहर ता फर्दर गाइडलाइन किछि बाहरियो व्हिच इज नॉट दैट सैक्रोसैंक्ट बट गवर्नमेंट कहे कि दिस इज प्रेफरेबल कि ऑफिसर माने एमिति इंप्लीमेंट करिया उचित तो ये हायरार्की टा बुझिसो तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कोन रूल्स एंड रेगुलेशंस बाहरियो फॉर एग्जांपल बाहरियो कि सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स राइट सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हाउ सिविल सर्वेंट शुड बी कंडक्टिंग देमसेल्व्स Some the state government भी rules and regulations vary. For example, state civil servants, civil service conduct rules. एमते किछि थाई पारे को different state रे. Then there are government guideline अछि. For example, गोटे scheme को implement करिया पे different guideline vary. NREGS guideline vary. PMAY को केमते implement करिया guideline vary. ता ऊपर guideline थिबो. Protocols किछि थिबो. Okay. Different suppose लोगों को how we should meet public servants, how they should meet different people. There is a protocol. Now apart from that there are also conventions legislative convention अछि executive convention अछि judicial convention अछि we have to respect that also for example हेई पारे कि legislative convention ओटा अछि कि ministers मानंकु truth कहया को पडियो to the house
so they cannot mislead the house. So how this will be implemented by the officers? Now to tell the truth माने किसी तांको क्वेश्चन पचराई थी, क्वेश्चन आंसर तो ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସି ନୋଟ କୁ ପଢିବେ ହାଉସ ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେ ପଢିବେ। Now to prepare that information, do you know this information ଟା ଆସେ କୋଉଠୁ? The minister will ask to the government कि you collect the information, ମତେ ଏଇ क्वेश्चन ଟା पचरा ହେଇଛି, I have to prepare a note written answer ତାକୁ ଦବାର ଅଛି, so you have to prepare। suppose question ଗୋଟେ ଆସିଛି କି ଆମ state ରେ or ଏଇ country ରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ job ମିଳିଛି last ଏତିକି suppose 2 years ରେ, so this is a question which has been asked by the opposition party। Now the minister will prepare the answer, so they will ask the concerned department, labor in bureau को suppose पचरा होला, तो labor bureau कौन करियो, suppose they will send the letter to the all district offices कि तुम compile करके दियो data दियो कि केते लोगों मिलिଛି employment। So suppose here you will say कि नहीं ମୁଁ ତ भाई information देबी, you are the collector, तुम भाई ମୁଁ information କାଇଁ देबी, ମୋର ତ हजारे काम ଅଛି। You have to give the information because convention को हमको भी respect देବାକୁ पड़ियो। If you don't do this, by the way, सेमती जो political action भी तुम ऊपर निया जी परिबा, right? Supreme Court and High Court verdicts, these are also many times these are the effect of the law itself or effect of माने parliamentary law जेमती जहाँ effect यार भी effect सेमती है। For example, suppose they बहुत किसी law को ସେମାନେ strike down भी कर दीजिए, they have entirely said कि ये law टा तो operate करियो नहीं, ये article टा तो different way रे interpret भी कर परिए। Suppose they have said कि article 21 consider कि right to life under ସେମାନେ କେତେ different जिनिसों को interpret करछन, ସେମାନେ कहजନ୍ତି कि right to life under it also includes right to die, it includes right to dignified life। ये सब जिनिस originally किसी article रे नथिला, but Supreme Court once interpreted it in such way, then it also took the effect of the law। Now the government cannot allow people to die, so sorry माने cannot prevent people from dignified life। right to die माने euthanasia case रे भी कहथिले कि in some cases you have the right to die, right? So now this is also taking the power of a law। Similarly high court or higher court, higher court माने Supreme Court and High Court, तांकर किसी norms and guidelines भी हो। for example जपन तो post act ही नथिला, ସେମାନେ ବିଶାଖା ଗାଇडलाइन को फॉलो करथिले। सुप्रीम कोर्ट हत कहला कि वुमेन मानकर सेक्सुअल हारासमेंट एट वर्क प्लेस ऊपर गवर्नमेंट रो कोनोसी लॉ नाही, तो जे पर्यंत लॉ नाही से पर्यंत विशाखा गाइडलाइन अंडर रे गवर्नमेंट काम करियो। तो सेतरे बहुत सारा जहां प्रोविजन थिला परे सेटा को गवर्नमेंट पोस्ट एक्ट अंडर रे इंप्लीमेंट कर देले समान। एंड दिस वाज आल्सो बिकॉज़ ऑफ दिस केस, विशाखा केस रे से जिनसटा आस्ते। सो तांकर नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस समान जहां इशू करियो, दैट विल आल्सो वर्क एज दैट विल आल्सो हैव इफेक्ट ऑफ लॉ। And finally there is also constitutional values also। many times constitutional value will help you decide to solve ethical dilemmas। I am giving an example। suppose what is in a constitutional value? Transformative constitutionalism। यार माने कौन के कोई परियो? Anyone? What is the meaning of transformative constitutionalism? सर मत लागुची बोधे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रो नीड आ जहा दरकार हो से अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन रो माने चेंज होबा। Close, very close, but what else? सर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रा माने तार माने होचे कि लिमिटेड गवर्नमेंट आउ ट्रांसफॉर्मेटिव रा मीनिंग होचे ओवर द टाइम से तार ना जो ना एटे लिमिट सही। हमर केते। ओके ओके हां को मे बी कहारो लिमिट चेंज द लिमिट put on the extent of authority of the government, it changes over the time maybe। ओके द फर्स्ट पार्ट जेटा कहला कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, केवल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेटा जो लिमिटेड गवर्नमेंट कहला। yes Transformative constitutionalism is something else। Here it is saying that constitution is transformative, means constitution is a living document। So it is living, it is not a fixed part of paper, it is a living document। living in the sense कौन life थिले कौन हमें grow करू, right? We are changing, so similarly constitution will also grow and change। this is the meaning। a grow and change टा towards कौन हो, towards obviously सब positive और better sense रे होगा ना। so specifically transformative constitutionalism माने growth or change towards in a positive direction, and positive direction में specifically progressive and liberal ideas। ये सेंस रे हमें ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहूचे। फॉर एग्जांपल नवतेज सिंह जौहर केस हमें डिस्कस करते कि लीगलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। so this is also an example of transformative constitutionalism। now you can use this is an example of constitutional values।
ना पॉइंट इज की कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल ले क्लियरली मेंशन ही नहीं जिंस explicitly mention ही नहीं we are deriving it from different article that is a different point. For example, we'll say कि article 21 also includes transformative constitutionalism. Okay, now the point is ଆମେ constitutional value को use कर परिया ethical dilemma को solve करिया केमिति कर परिया suppose गोटे case एमते आसी कि transgender person is being harassed by the people. Okay, you as the local officer what are you going to do? Okay, because suppose let us say कि local लोक demand करछन्ती कि आमे से लोक को सेट रहया को दबु ना because we don't accept transgenders in the society. Suppose they are demanding कि आमे आम सोसाइटी रे रहया को दबु नहीं, that person should go somewhere else. But now you will say कि here you will take a stand in a transformative constitutionalism. आम constitutional value रे अछि कि transgender person हेले तो कोन इशू वाला, person also deserves to live with dignity. So now you will take action against the person who are harassing him or her, right? So this is also in one example in which it will help you to solve many ethical dilemmas. Suppose there is a question on regarding privacy. ଏବେ privacy ଉପରେ କୁହାହବ କି some people will say कि directly तो किसी law समझे नहीं कि you have right to privacy, there is no direct law, but you will quote Puttaswamy case. Here it Supreme Court said कि people have the right to privacy under article 21 under a inherent right to privacy. You will quote that, then you will say कि article 21 is a constitutional article, so this is also constitutional value. Constitutional value out of preamble, yes, very important. Please mention a lot of preamble रो बहुत सारा provision को भी directly mention कर परियो. देखो preamble गोटे mention अछि liberty, justice, liberty, equality, fraternity सब word mention अछि. So can liberty also not be the liberty of right to privacy? Yes, this is also one constitutional value. So you will say कि we are respecting constitutional values, that is why I am taking this decision, right? Then last आड़ को ये सब जिनसे लिखियो social और cultural norms. Social और cultural norms केमती माने for example community sentiment और community benefit ପାଇଁ जो decision ଆମେ नवा. Suppose this is not entirely fitting with our social view, or this is best suited to our cultural norms, that is why we should take this kind of decision. देखियो many times actually कौन होगा social or cultural norms will actually be against some other provision, maybe legal provision or constitutional value. It usually might happen. In that case, usually social or cultural norms should not be taken into consideration, or not consideration तो नुह आमे ताको primacy दबु नहीं, आमे other part को primacy दबु. But suppose सब जिनस पर भी तुम्हारा positive part रे जाउची social or cultural norms, then you can also justify कि this is as per our social norms, right? Similarly, rights, rituals, public sentiments, you can write all of these things. Now I'm giving you one of my own example. I know one of my friends. So what the friend did was he was posted in a place, okay, and सेठी कोण हला सेठी बहुत आगरो गोटे फेयर और फेस्टिवल ता अरेंज हो, ओके, ईयर रो गोटे सीजन अराउंड से फेयर और फेस्टिवल ता यूज लोक माने आसंदे. इट्स गुड कांग्रेगेशन से माने टेंपल ले किछि राइट्स एंड रिचुअल्स वे सेथरे किछि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हुए, किछि मेला टाइप तो पड़े. So for that they need permission, right? Permission from the local authorities. Now when in this specific year when they went to the officer for permission, officer realized कि यांको एमटी लेट रे आसे परमिशन नवा. So तांको इमीडिएटली परमिशन दियो, तांको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करिया को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को चिट्ठी लेखो, से माने कनेक्शन करी कि देबे. देन यू हैव टू एंश्योर कि अन्य लोगोंकर किछि असुविधा होबनी. तो किए एते टेंशन नबो, से भाबी से कोन कला कि परमिशन देला नाही. इनिशियली the officer said कि no, we will not give you permission. These people started agitating. Even when I heard this thing, what I realized कि first of all you tell me whose fault is this? What should have been this thing? Public sentiment कथा भाबी कहो. Is there a value in public sentiment or not? Yes, sir. Okay. So whose fault is this? What do you think कि what should be done? कहार भूल थिला आणि कोण करियार अछि आको? Sir, fault तो कहीं मैंने it could have been better handled in the sense कि से जहाँ भी जे पे अपन जो ऑफिसर थिले से जहाँ भी इमेजिन करथिले कि पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स अछि से ताको एटलीस्ट थॉट माने कंसीडर करथाले ताको अलगा डिपार्टमेंट से तो कथा हेतांती कि हेई परियो कि नहीं माने फिजिबिलिटी केते बिफोर सेइंग Okay. नो टू गिविंग बिफोर सेइंग नो टू गिविंग परमिशन. Right. Anyone else? आउ कि कहय चाहू छ?
ନା ସାର୍ ପରମିଶନ ଟା ଆଉଟ୍ରାଇଟଲି ଦବା କଥା କାହିଁକି ନା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମର ପବ୍ଲିକ ୱେଲଫେୟାର ହିଁ ମୋଟୋ। Very good. But someone will say ki, is there any welfare being done to the people here? Maybe it's only a right and ritual होची तो ଆମେ ମନା କରିଦେଲେ it's not as if କି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ right କୁ block କରିଦଉଛୁ, right? It's not as if କି ତାଙ୍କର କିଛି ଏମିତି huge loss ହେଇଯିବ. So in that sense also can be argued कि ଆମେ ତମେ କାଇଁ late ରେ ଆସିବ, ତମେ ଆଗରୁ ଆସିବା କଥା, ତ ଆମେ ତୁମକୁ ଦବୁ ନାହିଁ. What can be the counter argument? ସାର୍ ପବ୍ଲିକ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିବେ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଲେଟ୍ ହେଲା କି କିଛି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ନା ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। Okay, very good. That means कि even public ର ବି ଯାହା ଭୁଲ ହେଲା ତାହାର responsibility to some amount we can say civil servant ମାନେ ବି you should take responsibility. Is it what you are saying? ନାଇଁ Suppose that civil servant will हाँ କୁହ. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଏତେ ନର୍ମାଲି ଏତେ ସତର୍କ ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି ତ ସେଟା ଏମାନେ ବେଟର ୱେରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ Very ନର୍ମାଲି। good. You actually found out a good argument. Okay. Who is this by the way? ଶୁଭଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ। Subhasri. Okay. So see, her argument is that even if public is doing something wrong, କଥା ହଉଛି fair ଟା every year annually ହଉଛି. So the public ର ସେଇ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ ଯଦି ସେ officer should also have been alerted earlier. ସେ ନିଜେ realize କରିବା କଥା କି ଏଇ year ବି ଏଇ time ରେ ହବ. So suppose ସେ time ହେଇ ଆସୁଛି and ସେମାନେ permission ନବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି. What he or she could have done ki he could have reached out to the local leaders କି ବାବୁ ମାନେ କଣ ଚାଲିଛି ଏ ବର୍ଷ କଣ ହବ ନାହିଁ କି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି permission ନେଇଯାଉ time ହେଇଗଲାଣି otherwise ଟିକେ late ହେଲେ ଆମକୁ permission ଆଣିବାରେ issue ହବ. He did not reach out. That means what? Maybe he was hoping in his mind କି ସେମାନେ ନ ଆସନ୍ତୁ ମତେ କାମ extra କିଛି କରିବାକୁ ନ ପଡୁ. But ସେମାନେ late ରେ ଆସିଲେ. Now the officer is irritated କି यार ମତେ କାମ ଧରେଇଦେଲେ extra କାମ. But କଥା ହଉଛି କି you see another like just one another person said public servant, right? Public servant ମାନେ କଣ? Our end goal always is public service. Public service କୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କର service କରିବା ମାନେ କଣ? This includes not only their welfare benefits. This also includes their sentiments also. Public sentiment କୁ ଆମେ respect ଦବା, right? And remember ସେ ଯୋଉ ମେଳା ହବ for example I had also given you a hint କି ସେଥିରେ କିଛି economic activity ବି ହବ. ତ ସେଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତ କିଛି ଲସ୍ ବି ତ ହବ ନା, ପୋଟେନସିଆଲ ଲସ୍ ବି ହବ. ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଷ୍ଟ ତାର ବି ଅଛି and ସେଟା ନ ହେଲେ ବି ପବ୍ଲିକ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଅଛି. ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ କି ଏ ଲୋକମାନେ କଣ ଏ ଆଇଏଏସ୍ ମେ ବି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହବାର ପୂର୍ବରୁ ଓଏସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମେଳା ଚାଲିଛି, ସେ ଫେୟାର ଅର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି. ଏବେ ଏମାନେ ପୋଷ୍ଟେଡ ହେଇକି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ କରିବାକୁ ଦବୁ. ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଟୁ ଗିଭ୍ ଟେକ୍ ସଚ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସିସନ? Ultimate decision should be in the benefit of the people, right? So for that, if we are facing any inconvenience, if the officers are facing any inconvenience, that is fine. People should not face any inconvenience. This is the crux. So their end goal, our end goal should be met. Now ଏବେ ଏଟା means and end analysis ବି ନୁହଁ. ଆମେ ଦେଖ ଆମେ means ତ କିଛି wrong means ବି ନଉନା ନା, ତ ଏଥିରେ ଏଇ debate ବି ଆସିବନି. It is not as if the person will take bribe someone and then the person will do some unethical ମାନେ officer କୁ କିଛି unethical କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡୁନି. Just that it is an inconvenience. ତାଙ୍କୁ extra effort କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ last minute ରେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ. Now all of that could have been avoided if the officer had taken this early decision and early judgment ନେଇକି ସେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, right? So my point is public sentimentary value ଅଛି and we have to give proper importance to that. Now I want you to link this point with something else again. Notice this thing. Now you tell me कि एथिरे को value टाକୁ should be reflected in ये जो yellow रे highlight ହେଇଛି. Social cohesion. Very good, excellent answer. Social cohesion. Now whether you have social cohesion as well as leadership. Social cohesion ମାନେ କଣ? Decision making ରେ ତମ social cohesion ଟା reflect ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ତମେ କହିବ କି ନାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଫେୟାର ଟା କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ because we want କି social community ଆମର strong ରହୁ, social fabric ଟା strong ରହୁ. Then you will come the part of leadership. Then you will say now what I am going to do is ki I am going to take the lead, I am going to help them in any way. ତାପରେ ତମେ ତାର solution ବାହାର କରିବ କି what I will do କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ letter ଲେଖିବି, phone କରିବି, personally ୟାକୁ depute କରିବି, ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, କଣ issue ଅଛି, whatever. Now you are showing your leadership ability, but before that social cohesion will provide you the objective. Okay. Are you able to see what UPSC or OPSC is looking for, whether that is being reflected in your answer or not?
that will also to a great extent determine your marks. Now I'm not saying कि ଯେତେବେଳେ ତୁମେ आंसर लिखुथो entirely 100% of the time तो माइंड 24/7 ए जिंस चालुथो कि सिलेबस रे जहा लिखा अछि अकॉर्डिंगली आंसर लिखिए, but use these as a sort of mental framework, right? mental framework, overall framework जहा थ्रू रे हम आंसर को पूरा पॉजिटिव वे रे आंसर लिख पारी. Okay, any doubt so far how we are giving justification? Moral reasoning and justification. ठीक अछि. Now come to this part, philosophical perspective. I think we have gone through this in very depth, तो किछि एतरे असुविधा नहीं. हमें just briefly ताको summarize करदवा. Philosophical perspective रू भी how you can justify or write कि यार कौन reason ही पारे. Aristotle point of view रू तुम कहते virtue ethics कि ए course of action through रे कौन virtue सामना को आसी, so accordingly we will take a decision. For example, prudence, right? For example, the virtue of temperance, virtue of justice, right? All of these are examples. तो आमे कहे कि या द्वारा कौन justice ensure होची, that is why that is also one type of Aristotelian value or virtue, so that is why we are taking decision. Bentham and Mills for utilitarianism कौन कहूची, maximum benefit for maximum people. Okay, so a way रे भी you can argue you will take this decision because it is going to benefit the maximum number of people. In some cases माने pros and cons जेतले लिखियो पड़ियो ना, किसी जिनसर pros and cons रे you can write कि एटा utilitarian point of view रो this is excellent. Okay. For example, suppose तुमको say same development versus ecology or displacement debate अछि, right? So development will suppose यार तुम्हें pros and cons लिखছো, तुम कहछो कि development को हमें यदि primacy दबो ताले तार pros and cons कौन रहे, इकोलॉजी को प्राइमेसी दबो और ट्राइबल लोकल लोक को प्राइमेसी दबो तार प्रोज एंड कॉन्स रे. तो डेवलपमेंट को मतलब प्राइमेसी दबो तार प्रोज रे गोटे पॉइंट हे परियो ना यूटिलिटेरियन अप्रोच, बिकॉज़ मैक्सिमम लोक माने या द्वारा बेनिफिटेड हेबे. सो यू कैन गिव दिस एज वन काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन अंडर वन पॉइंट. बट देखियो मेनी टाइम्स कोन हो यूटिलिटेरियनिज्म टा यूजुअली यूटिलिटेरियन टा मे नॉट बी द मोस्ट सुटेबल अप्रोच. सेमती कांत और डिओंटोलॉजी एटा हम कोन डिस्कस करथिल. So this is something where means is more important than an end, right? So some actions are categorically wrong. This is what Immanuel Kant said. So you will say ki okay, this kind of action cannot be justified under any circumstances. For example, in a case of, let us say we were talking about harassment of women or even sexual harassment of women, you will say ki in no case can we justify this, right? And who said this? Na, for example, Kantian approach. So this is a Kantian approach or a deontological approach. हम कहेंगे इतना है ही परिवार, right? जॉन रॉल्स थ्योरी टा कोथरे काम आसो जस्टिस. देखो एथे जोठी भी इक्वालिटी और इक्विटी एज वेल एज वेलफेयर रो क्वेश्चन आसो, देयर यू कैन राइट अबाउट जॉन रॉल्स. फॉर एग्जांपल सपोज गोटे एथिकल डिलेमा आसी इनइक्वालिटी विषय, राइट? क्वेश्चन आसी कि हमरो सपोज यू आर केमितिया क्वेश्चन एथिकल डिलेमा आसी. देखो सपोज द एथिकल डिलेमा इज कि you are DM of a district, right? So as DM you are in control of district mineral foundation. So district mineral foundation में कौन अच्छी DMF रे बहुत पैसा जमा था तुम जानती हो, माइनिंग पैसा उड़ा सी डिपॉजिट पे. एंड देयर इज आल्सो गाइडलाइन, बाय द वे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अच्छी कि 40% और 60% यार फॉर एग्जांपल 60% सोशल वेलफेयर रे यूज होई परियो, 40% लोकल लोकंकर जॉब दबारे इंफ्रास्ट्रक्चर एथरे सब यूज हो, राइट? बट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट सोशल वेलफेयर रे जो 60% फंड अछि, सपोज यू हैव दिस ability or you have this power to use it as you please. Now there is a question, now there is a dilemma. Suppose duita group ro loko achanti, if you want you can spend on either of them or both of them. Now it is up to you ki this is the ethical dilemma ki kaha par ame spend kare. Suppose one part is ki jo mane किछि local UPSC aspirants अछंती, ओके, तो सेमाने चाहउछंती माने बहुत पोर अछंती, सेमाने चाहउछंती कि सेमानको ऊपर पैसा खर्च हो सो दैट सेमाने एग्जाम क्लियर करके दे विल बी एबल टू डेवलप देमसेल्व्स, राइट? एंड सोसाइटी को भी सेमाने कंट्रीब्यूट करिवे. आउ किछि अछंती जो माने कि लोकल लोक जो माने कि वाटर पाउना, सपोज दे आर डिमांडिंग कि हेटी किछि बोरवेल हो. नाउ यू टेल मी कि whether we are going to give money to any of them either completely or both को दबा. जदि both को दबा को परसेंटेज रे दबा, व्हाट डू यू थिंक? यू टेल.
सर हमें जब देखिए नेसेसिटी अप्रोच रे then water is more important than UPSC aspirants. So should we give entire money to the water for water? UPSC aspirant को କିଛି ଦବାନି, କଣ କରିବା ଏବେ सर କୁହ? আর अरे 40 60% ରୁ ସାର୍ 60% ରୁ ସାର୍ 60% ବୋରୱେଲ ଗୁଡା କରିଦେବା 40% ୟୁପିଏସସି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ ଫର୍ଦର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ କେତେ ୱାଟର କହିଲେ ବୋରିଂ 40%? ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋଜ ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟ 60% ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ x ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଓକେ 60% ଟା ଭୁଲିଯାଅ, ଆମେ x ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦବା ସେଇଟା ଆମେ କଥା ହଉଛୁ। ଓକେ ଏବେ x ଟା ବି ଗୋଟେ 100% ହିସାବରେ ନେଲେ ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାହାକୁ ଦବା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଥା ହଉଛୁ। ସେଇଟା କହୁଛି x କୁ 100% ନେଇକି ଆମେ ହଁ 40% ୟୁପିଏସସି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ କରିଦେବା ୱାଟର ବୋରୱେଲ କୁ 60%। 60%। ତାଙ୍କର ଓକେ ନେସେସିଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେଡି କରାଇବା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଦେଖ, I think Himanshu had asked you what is the point of veil of ignorance, right? Now you will be able to understand what is the meaning of veil of ignorance. Think and tell me again. Someone else tell me. ଆମେ ଦବା 40% ଆଉ ୟୁପିଏସସି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ କୁ 60%। UPSC ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ 60% ଦେଇଦବ, ହଉ। सर ମୁଁ UPSC କହୁଛି ଆମେ ଯେ କହିବା ଆମେ ତ ସବୁ ନେଇଯିବା, ଆମେ ଆମେ सर ଆମେ ହିଁ ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ IAS କ୍ଲିୟର କରିବା, ତାପରେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ପାଣି ପାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା। सर ଗୋଟେ ଓକେ ସର୍ଭେ କରିବା ଯେ କେମିତି ଅପ୍ଟିମାଇଜ କରିକି ଆମେ ବୋରୱେଲ କୁ କେତେରେ କରିପାରିବା, ତ ସେଟାକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦବା। ତାପରେ गर्ल्स प्लीज पार्टिसिपेट। देखो ହେଇପାରେ, ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ କି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକମାନେ କଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ ତମ ଭିତରୁ କଣ କି you will have this sort of mental struggle, then you will be able to understand. Some people will give good argument, some people will not give that good argument, but ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଭଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ ବି ଦେବେ ତାହାର କାଉଣ୍ଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ସେ that will clarify your thinking. You tell me, ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ କେତେବେଳେ ହସି ଦେଲେ କିଛି ମଜାକ ଉଡଉଛି ସେଟା ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ inherently ମତେ ଫନି ଲାଗେ ଜିନିଷ, ତ it is okay, but we will understand କି ସେଇ ଜିନିଷର ପଏଣ୍ଟ କଣ। yes yes you are saying something, please continue. सर सर आगे देखिबा कि बोरवेल आ एस्पिरेंट सेमते नै जे खाली यूपीएससी एस्पिरेंट अछंती बहुत सेक्शन भी थिबे जो माने पढ़ा पढ़ी पई दरकार करथबे फंड्स, तो हमें गोटे सर्वे करबा जे एक्चुअली केते रे कहा को नेसेसिटी अछि आ कोडा सस्टेनेबल हेई परिबो फ्यूचर पई भी, तो हमें बोरवेल को भी आ यूपीएससी एस्पिरेंट बोथ को गोटे बैलेंस्ड अप्रोच नै कि ए करया कहा Okay को चलो इग्नोर let, कर। let us make your task even more difficult. Suppose UPSC aspirant एठी 100 जन aspirant अछन, वाटर इशू टा केवल गोटे ही विलेज रो गोटे सेक्शन रो लोक मानु फेस करछन, which are let's say 50. Now utilitarianism भी एथरे आसबो, देखो केते डिफिकल्ट No, sir, टास्क को केते डिफिकल्ट। ସେଥିରୁ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଯେ in terms of numbers ରେ କହିନି, ମାନେ ମୁଁ ओके ବୋରୱେଲ ପାଣିଟା ସବୁ ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ। 50 ଆଜି राइट ଅଛନ୍ତି ତ राइट କାଲି ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ କୁ ବି କାମରେ ଆସିବ। ସୋ ବୋରୱେଲ ବି वेरी ହବା गुड। ଦରକାର, ଆଉ ତା ସହିତ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ ୟା ଫିର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଏଇ ସବୁ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ବି ବନାଯିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ମୁଁ କହିତେ ओके ଚାହୁଁଥିଲି। वेरी गुड। देखो जेते हम टास्क माने एथिकल डिलेमा टा जेते कॉम्प्लिकेटेड हे होची, you are also able to make further changes or adjustment to your answer, and then you are able to say कि ना solution टा आउट के एमितिया चेंज हो, right? Very good. Now I am trying to explain to you another concept. Okay, now focus on this part. Concept कौन देखो, roles गोटे कौन कहिथिले स्टार्टिंग रे हम डिस्कस करथिले कि roles रो एंटायर थ्योरी होची बेस्ड ऑन जस्टिस। से कहथिले जस्टिस, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज नथिंग बट एंश्योरिंग जस्टिस फॉर द पीपल। ना जस्टिस रो माने कौन? जस्टिस रो माने केवल सेमनेस नो। ओके ना एटा भी समझते, आई थिंक हिमांशु हैड आस्क्ड कि हमें द वेल ऑफ इग्नोरेंस विषय पढुथुलु, यार माने कौन थिला ना रोल्स कहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एंश्योर कि समस्त को इक्वल रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी मिल, राइट? देन अगेन ही सेड कि इक्वल रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी को हम केमिति एंश्योर करिवु ना द पर्सन हु इज मेकिंग द डिसीजन मेकर जी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल ऑफिसर्स, ओके they should be operating from behind the veil of ignorance. Means suppose तो आमे गोटे केक को काटुचे, आमे निजे जानिया, आमे निजे जदि न जानिबी कि आम पाखु को पीस टा आसीबो, ताले आमे यदि गोटे वेल ऑफ इग्नोरेंस पछरो ए जिंसटा केक को काटुचे, ताले आमे कोन करू इक्वली केक टा काटिबो। But again he changed his theory a bit also, like you are changing your answers. He said कि जदि समस्त को एबे इक्वल पीस दबार माने कोन? सपोज गोटे गोटे बहुत ही धनी लोक अछि, मुकेश अंबानी अछि, ताको आमे सेम साइज रो केक दबा, people like you and me आम पाखरे किछ पैसा नै, तांको भी सेम दबा अमाउंट ऑफ केक। ओके
how pura completely how BPL people तांको भी same size रो cake दवा. Now is this justice? You tell me. This is someone can argue कि this is equality, but this is not justice. There is a Yes, further sir. term की equity. Now Mukesh Ambani doesn't need this cake at all. तार पार्ट को हमें टिकट ट्रांसफर कर दे याकू यार पार्ट टिकट ट्रांसफर कर दे याकू veil of ignorance is to find you a baseline from which we can understand कि average एतिकी जाऊची but एथरे पे हमें further changes करिया right and the person who are the most oppressed we have to give them more amount veil of ignorance माने नो कि exactly same amount समस्त को मिल जाओ rather if you see Rawls had said another thing Rawls had said कि inequality is only preferable in a society in which the inequality favors the poor and the oppressed. Okay, this is also something he had said. Why? Because in this case, inequality is towards justice. Okay, so when inequality is doing injustice, then that kind of inequality we don't want. So in general, we should try for equality. But if there is any inequality, then it should favor the oppressed. And in fact, if you see, is this not the entire case for the reservation itself? Now we'll say why 60% of our jobs should go to certain section of the people. हमें यदि if you are talking about equality ताले तो समस्त equal platform हमें दवा कथा equal chance दवा कथा I will say कि some amount of inequality you are providing because it is favoring the poor. Okay, the poor may be ST, SC, OBC, economically weaker sections, but we are providing them more benefit. Right? Now the same question देखो same केमती हमें से theory को implement करिया. एबे 100% आम पाखरे जो अच्छी जो amount X amount अच्छी. The point is यूटिलिटारियन अप्रोच रे गले तो पर्सन विल से कि ना यूपीएससी एस्पिरेंट अधिक अछंती सर्वे रे भी समान जीति जे सर्वे रे समान लिटरेट पर्सन समान कहे कि 100% इमीडिएटली कि वोट दे देबे यूपीएससी एस्पिरेंट दे आर पुअर बट दे आर लिटरेट दे विल वोट कि नहीं हमको दरकार पानी सॉरी हमको दरकार फंडिंग हमरो कोचिंग पे वाटर जो मन कर दरकार पुअर लोक समान इलिटरेट भी समान जाई कि इवन सर्वे रे भी पार्टिसिपेट कर परियनी और पार्टिसिपेट कले बिकॉज़ ऑफ लेस नंबर्स दे विल बी डिफीटेड सो दिस पर्सपेक्टिव इज आल्सो नॉट वर्किंग here you have to understand कि now we have to ensure equality in the sense कि we have to give a little bit more to the this people than these people because the UPSC aspirant they can maybe even survive for one more year गोटे वर्ष क्लियर न होला नेक्स्ट वर्ष क्लियर कर तांको किछ फंडिंग कर दा बट इमीडिएटली दे नीड वाटर आमे इवन 60 40 भी जीवानी आमे कहया कि इमीडिएट सर्वाइवल पे जेते अमाउंट दरकार वी हैव टू प्रोवाइड दैट मच अमाउंट यदि 100% भी हेगला ठीक अछि दे दो बट लॉन्ग टर्म में आमे कोन कहया जेंति जण कहले कि फंड गोटे तयारी करता इट्स अ वेरी गुड आइडिया आमे लॉन्ग टर्म में गोटे फंड तयारी करिया व्हिच विल आल्सो डिवाइड मनी इन दिस पर्सपेक्टिव नाउ दिस पार्ट दिस आई कैन एग्री 40% यूपीएससी एस्पिरेंट ପାଇଁ ଦବା 60% वाटर ପାଇଁ दवा बिकॉज़ वाटर लेस लोक हेले भी वाटर इट इज नेसेसिटी फॉर लिविंग सो लॉन्ग टर्म में आमे कहया कि 60% चलो वाटर पीपल को दे दो वाटर ପାଇଁ दे दो 40% टा हमर एजुकेशन ପାଇଁ दवा but immediately for example if right now they don't have water so even 100% should be given to them so they should survive right because if we see again you see एथरे भी आमे कोन आमे गोटे वर्च्यू और वैल्यू रो हायरार्की भी तयारी करछ ना एथरे तुम यदि इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द टॉप इज लाइफ इटसेल्फ देन देयर इज एजुकेशन वे किछि लोक यदि बंचिबे ही नाही ताको एजुकेशन ना ताकर कोन बेनिफिट वेलफेयर हो so किछि लोकंकर लाइफ यू हैव टू एंश्योर दैट then other things will come right so is this not also not a value or virtue hierarchy that you are creating here yes we are also creating this okay any doubts in this how we are approaching this part okay then come to this part तो इंडियन नॉन मोरल फिलोसफीज रे कोन अछि हिंदुइज्म नु तुम कहयो कि निष्काम कर्म करे एटा को जगह यूज कर परियो सपोज आसीच के तुम बहुत वर्ष धरी काम करछो गोटे कंपनी रे और इवन गवर्नमेंट सर्विस रे अछो तो तुमको बहुत दिन धरी सैलरी सपोज मिले नहीं हला नो सैलरी but you are in a public service kind of duty so then you decided that कि तुम डिमांड को माने एंड तुम जहा ऑफिशियली सपोज तुम बहुत प्ली पिटिशन लिखलो कि तुमरो सुनले नहीं आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल ओके दिस कैन बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेज बट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल वेयर यू कैन राइट सो तुमको सैलरी मिल नहीं देन फाइनली तुम कोन कला एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट यू डिसाइडेड नॉट टू प्रोवाइड सर्विस एबे देखो ए जिंस को हम केमती जस्टिफाई करछ सपोज 10 इयर्स हलानी गोटे लोक इट इज बीइंग सेड कि 10 इयर धरि तुमको सैलरी मिलनी ओके तुमर किछ भूल नहीं ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट डिस्प्लेसमेंट हे छी मे बी समान ही भूल करछन इशू हे छी तो तुम प्रथम एप्लीकेशन लिखले जा जा करेगा तुम यू हैव डन ऑल ऑफ दिस सब जाई ग्रीवेंस रिड्रेसल कलो सब कलो फिर भी तुमको मिलला आ तुम कंटीन्यूअसली 10 इयर्स धरि बहुत कष्ट रे चलुचो इन द होप कि केबे गोटे रेगुलराइज हे जिवो सर्विस यू विल गेट योर मनी इट इज नॉट बीइंग डन फाइनली कोन हला यू डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट नॉट टू प्रोवाइड सर्विस
And when you decided not to provide public service, then what happened was ki, then your boss suddenly said ki ଗୋଟେ issue ହେଇଛି, public ମାନେ demand କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ particular service ପାଇଁ. Okay, so public demand ଅଛି କି immediately ଆମକୁ ଏଇ କାମଟା ଗୋଟେ କରିକି ଦେ. Okay, suppose ଆମର କିଛି ଗୋଟେ chit fund scam ହେଇଛି, ତାର ପଇସା ଆସିଛି, ତାକୁ immediately deposit କର ଆମ account. So public huge demand ଅଛି, and you are that person who is supposed to provide ଯେ account ରେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପକେଇବା. But ତମର ବି issue ଅଛି, ତମେ decide କଲ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ protest କରୁଛି. What can be the outcome of this? How can this dilemma be solved? କାହାର ଭୁଲ ଏଥିରେ, you first tell me କାହାର ଭୁଲ ଏଥିରେ ଅଛି and କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? Anyone? सर प्रोटेस्ट କରି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ ଗୁଡା ଦବ। Okay, very good. So you are trying to find out a middle ground, sort of a middle ground, right? केवल आम इमरजेंसी सर्विस करा, ओके इमरजेंसी सर्विस ताको इटा को ही आम डिफाइन कर देबे कि लोक मान को दबाटा ही इमरजेंसी सर्विस। तो कौन करे, चलो मु तो माने डिफिकल्टी लेवल आउट के बढ़े थी, बॉस तुमको कहले दिस इज द इमरजेंसी सर्विस, सर ता तो सहित कौन करे? बॉस डिस्कशन करके ताकि किसी एमती एश्योरेंस दब कि किसी गोटे कंक्रीट स्टेप नहीं कि ताको एश्योरेंस दब कि मु तोर माने सेटलमेंट करई देबी इन कमिंग पीरियड, लेट्स से ए वीक ए मंथ और 2, बट तो तमर जो ड्यूटी अछि सेटा करो। Okay, so you are then the person will say कि मु तो 10 years कर कि मते एश्योरेंस दिया हो, बट मते किछ मिलु नहीं, तो why should I believe you? सर से कि छोटे एमती स्टेप नहीं का लेटर वेटर लेके कि का कुछ एमती कि छोटे कंक्रीट स्टेप नहीं कि तापर तको देखिबे जे वी आर टेकिंग स्टेप्स आ माने कि छोटे Okay, प्रोग्रेस देखिबे जे तांको माने सेटा सेटलमेंट हेइ जबो आफ्टर okay, दैट। ठीक अछि। आउ कहार किछ काउंटर व्यू कहार किछ अछि कि व्हाट एल्स कैन वी डू? सर एनी जेहेतु काउंटर व्यूज? इमरजेंसी सर्विस से करबा कथा काने सर से 10 वर्ष हेलानी सैलरी पाउनी काम करची तो इमरजेंसी रे करबा कथा 10 मु वर्ष भाबु। ହେଲା सैलरी पाउनाहांती तो से इमरजेंसी करिवेन ना, से कहउचंती तो माने ओके यू आर सेइंग कि इमरजेंसी सर्विस करि दियंतु आज्ञा तापरे से प्रोटेस्ट करिवे ना कोन? नहीं मु व्हाट कहूची डू यू सर वांट टू से से? 10 वर्ष हेलानी जेहेतु करूचंती तांको सैलरी मिलुनी और एटा इमरजेंसी तो से करि दबा कथा ए कामटा। ओके, तो से ऑन द अदर हैंड इट कैन आल्सो बी आर्ग्यूड ना कि 10 वर्ष हेलानी नॉर्मल कंडीशन में तांको कथा सुना होनतला, तो मे बी इमरजेंसी सर्विस टाइप से बंद कर देले एबे नाउ गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू लिसन टू दिस पर्सन। एबे इमरजेंसी सर्विस जदी से करि देबे पुनी नेक्स्ट पुनी से सेम पीरियड चलियो, तापर गवर्नमेंट तांको कथा सुनबे कि हमको तो दरकार ही नहीं, से लोक जहा करछु कर एमती हेइछि भी एक्चुअली, यू मस्ट हैव नोन देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स। ओके, एनी अदर आइडियाज कोन करियो सॉल्यूशन? सर एटा एमती जना पड़ुछि जे 10 वर्ष काम करला पर भी तांको ग्रेवियंस रिड्रेसल होउनी, माने जना पड़ुछि गवर्नेंस रे बहुत ही फल्टी सिस्टम रहउछि। तो राइट, वर्तमान जदि जेतर बॉस आसी के तांको कहउचंती जे नहीं पब्लिक इमरजेंसी काम करो, तो जदि से तांको एठी टिके बोल्डली तांको कहया पे जदि से चेष्टा करले बॉस निजे संगे संग तांको प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हेइ पारिबो। आ जदि गवर्नमेंट तरफ प्रॉब्लम रिजॉल्व हे कि संगे संग तांको सैलरी भी आसीला, काई सैलरी तांको राइट, एटा हमें डिनाई तो करि परिबोनी। 10 वर्ष इज ए ह्यूज यस, टाइम, तो इमिडिएटली राइट, तांको सैलरी भी एटलीस्ट कागज पत्र काम भी कर दिया जाई परिबो, जे ऑनलाइन जुग हेलानी। नेक्स्ट तापर से संगे संग इमरजेंसी काम फील्ड को भी ताको पठे दिया जाई परिबो, तुम फील्ड को जाओ मुझे काम सार दोछि, तो एपटे भी गोटे वेरी अप्रोच। गुड, excellent, excellent answer. This is very close to the माने एटा भी this can be one of the answer. Okay, so our point is कि जदि 10 years धरि तमे तांकर प्रॉब्लम सॉल्व करि ना हो, then whose fault is this? See, the boss is coming and saying कि it is an emergency service. Now we will also say कि भाई हमरो 10 वर्ष धरि हम सैलरी न मिलियाटा हमो पई भी इमरजेंसी थिला. Why did you not see this? Did you not envision a future in which I will be essential to this organization? तुमको लागिला कि तुम एमिति ही मते पकै दो 10 वर्ष कोन पूरा लाइफ टाइम मते सैलरी न दे काम करे दो. So this was actually the huge fault of the boss himself, and government री fault अछि, governance most of the fault is with the governance itself, right? Responsible governance no. Now the point is कि as this person से person दा कोन action नवा कथा. So the person will say कि देखो 10 वर्ष धरि मु कंटीन्यूअस करूची, so I will what I will do कि emergency services ठीक अछि मु कर देबी, but after this emergency service if I am not, and
the person will put pressure on the boss. Here ame boss upre pressure भी पकई परिया, ame boss upre pressure पकई परिया because we have the moral authority now, because 10 years धरी हमको salary मिलनी, हम family केमते चलिबा, that is also a concern. बॉस की गवर्नमेंट के आम कथा शुणुचंती कि फैमिली केमती चलिबा, आर दे गिविंग यू एनी मनी, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଆଦାୟ କରିନେଉଛନ୍ତି, but you are the one who is suffering. So we will what we will say कि चलो emergency service हमें कर दवा, but you have to also show me कि yes some action जने एमती कहले कि concrete step, very good. तो एथिरे concrete step कौन हो? Concrete step, for example, you show me कि you have taken some step to address my issue. For example, you have maybe you provide me some emergency basis रे, एबे कहब कि जदि emergency service दिया होची ताले emergency basis रे emergency payment भी करा, right? एबे यदि गवर्नेंस और बॉस कहे नहीं emergency payment हम करियो, then entire fault is with you. You are demanding emergency service but you are not providing emergency payment. ता माने कोन जानि जानि करूना, एमितिया कोन तमर कोनोसी फंड नै जो तुम पैसा दे परियो ना, बट तुम काम करे नउछ सब जहा दरकार. So now and this point होची कि ए opportunity छाड़ देले पारे मे भी से लोक को ता कथा पुनी सुनिबे. So he will say कि you first provide me emergency payment as well because this is my necessity, and later on jaha payment हिची that should be deducted from my salary, right? मोर salary रू पारे सेटा deduct कर दियो, no issue, but right now provide me some payment, and along with this you should also show कि paper work किछि होची कि नै, कि एटा permanent मोर हे जो हमें paper work मो show कर. So you do this on your end, so the boss should be doing this, and my end रे मु कोन करबी, individual will provide the emergency service whatever is demanded, I will keep doing this. This can be one argument, and the counter argument to this is something which is known as निष्काम कर्म. जो लोक माने एबे कहबे कि नहीं निष्काम कर्म करया कथा, से माने कहबे कि हमें इवन बॉस को भी डिमांड करिया, we will keep on doing our work. So this is one counter argument that you can make, but point कथा होची कि सब point गुडा equally justified हबो नाही सब सब टाइम, right? For example, in this case I don't feel कि एथिरे हम निष्काम कर्म करया कथा, right? Because specifically you will see this is also from a philosophical point of view, but practical point of view बेले बेले कोन निष्काम कर्म में कर चलियो पुनी again people will not listen to you, right? So we'll say one aspect of तुम देखियो कि one argument is that निष्काम कर्म हमें करया कथा, but on the other hand the person should do this and that. This is what I was trying to say. बुद्धिज्म माध्यम मार्ग चला में बहुत डिस्कस कर देछि, सब बेले मिडिल पाथ बहुत सारा जगह रे मिडिल पाथ बाहर कर दो, एंड इन एनी केस एथे भी हमें गोटे सॉर्ट ऑफ मिडिल वर्क ही बाहर करू ना. मिडिल पाथ का यूजुअली 70 to 80% केस रे देखियो मिडिल पाथ किछ ना किछ गोटे बाहरी, ओके, जहां भी एथिकल डिलेमा थी. इन सम 20 to 30% केसेस चलो गोटे सर्टेन एंड को तुम करेक्ट बोली नहीं कि यू कैन जस्टिफाई. हमें एमती कथा जो अंडमान एंड निकोबार रे जो गच्छ लगाया प्लांटेशन लगाया कथा, सेथरे किछि माध्यमक मार्ग सेथरे न थाई कि यू कैन टेक वन साइड एंड यू कैन डिफेंड दैट साइड. जैनिज्म रे अनेकांतवाद एंड स्यादवाद विषय में कथा हेतु. अनेकांतवाद माने मेनी साइडेडनेस, ओके, एंड स्यादवाद माने अनसर्टेनिटी, वी डोंट नो फॉर श्योर. So here also you can write a few points. For example, किछ केस स्टडी रे तुमको यदि दिया हियो कि गोटे मोरल एब्सोल्यूटिस्ट टाइप रो अप्रोच नहीं आइयो, then you will say कि नहीं मोरल एब्सोल्यूटिस्ट हमारा पॉइंट किछ नहीं, you should also be relativist भी हमरो हबार अछि. And here under this relativism you can write about अनेकांतवाद and स्यादवाद. You don't, because we don't know for sure कि in this case, okay, in some cases it will, you will not be sure कि को माने course of action टा completely correct. And this part, this is also one of my favorite part. If you can write this नीति versus न्याय, देखियो बहुत जगह नीति versus न्याय काम करियो डायमेंशन टा, बट तो माइंड को इमीडिएटली आसी न पारे, बट नीति versus न्याय बहुत जगह काम करियो. इनफैक्ट हमें फर्स्ट केस स्टडी रे हमें देखिया, फर्स्ट केस स्टडी इज आल्सो अबाउट नीति versus न्याय. नीति versus न्याय माने कोन या तळे हमें देखिया फर्स्ट केस स्टडी रे. नीति माने होचे रूल्स लॉज ए सब जिंस, राइट, रेगुलेशंस. न्याय माने होचे अल्टीमेट जस्टिस. So usually rules, laws, these are all means. Justice is the end. So we are following rules and laws. Why? To ensure justice. This is the final goal. Ethical dilemma केतेबेले हबो, because बेले बेले कोन जो means उडा सेट कराइ जिवो, that is actually not being translated into the end. माने rules and laws जो थई फ्रेम कराइ छि, that is not being translated into justice. That is why there will be dilemma. Now you will be asked कि हमें एथरे कोन एक्शन दमा कथा. The point is कि rules and laws किछि गोटे कथा कहूची, justice आ गोटे कथा कहूची. We had discussed about this also. For example, let us say कि गोटे बुढ़ी लोकटे तुम पाखको आसी, okay, what has happened कि she is not getting her pension. Why she is not getting pension? Maybe under some IGNO apps or some other such pension social security benefit scheme,
पेंशन कहीं पाऊना बिकॉज तांकर डॉक्यूमेंटेशन किछि नाही, डॉक्यूमेंट किछि नाही. Now you see कि this person is deserving. Okay, she is deserving, you can see that. But तांकर किछि डॉक्यूमेंट नाही. ना द नीति कोन कहूछि, नीति कहूछि सेते बेले ही पेंशन आमे दबा गोटे लोक जेते बेले से सब क्राइटेरिया फुलफिल करूछंती, एंड दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड. डॉक्यूमेंट समस्त आगो दियन. फॉर एग्जांपल तांकर एज केते अछि जानिया पई, मे बी यू आर यूजिंग आधार कार्ड रे डेट ईयर ऑफ बर्थ अछि, और सपोज यू आर बर्थ सर्टिफिकेट रे अछि, सो यू आर आस्किंग कि हमको एटा देखाओ. तांका पाखरे किछि नाही, because maybe the person is illiterate or something. But what is the ultimate, एबे कथा होछि कि रूल्स एंड लॉ काहे फ्रेम हिच, बिकॉज सो दैट किछि जो खराब लोक माने अछि मिसयूज न करन दे प्रोविजन. जदि हमें आखि बुझी कि सब बुढ़ा लोक पेंशन दबाको डिसाइड करिया, किछि लोक कोन अछि एंती 55 एज रे भी आसी डिमांड करिया को लागि. आई एम टेलिंग यू वेरी funny incident from my own life. One person actually came to my office and said कि sir मते मिलु नाही पेंशन मिलु. So I said okay, we'll do this. He was looking a bit old. I said कि show me your any certificate, you show me the Aadhaar card mu तांकर मागे. Although later on I realized कि Aadhaar card रे बहुत birth year of birth defect था. But when I checked the year कि केते तांकर एज हेलानी, it turned out to 56 years. So I said कि 56 years रे आपन को तो मिलियो नाही, आपन को 4 वर्ष आ वेट करिया पड़े. So he got really angry and he said कि तुम कौन 4 वर्ष पर बंचित ही मरती मोर कौन ठीक अछि, तो आपण इमीडिएटली एबे ही कर दियो. So there are people like that also, they will demand this kind of thing. So what are you going to do in this case? If suppose see this person is not at all deserving 56 years le, we consider why person is not deserving. Even I, when I saw the person, I realized the person is physically healthy also. If you consider working age population, amaro working age population group ro definition hochi I think 15 or something ro start hike 59 re end hoy, right? 59, yes, this is the age. 60 and onwards we consider it a retirement age. So 56, that means we are considering you to be part of working age, and the person also was not physically handicapped. Physical handicap bhi kichhi nahi. So you are healthy but you don't want to work, that is why you are demanding pension. So in this case it is very clear. So even I did not provide anything. I said, do whatever you want, I'm not going to provide you anything. You will only get the benefit after 4 years, right? But suppose in this case, what is the issue? The rules and laws which are framed for the end, that is justice, that is not actually getting translated into justice. In this case, what should you do? The solution here is that you have to understand ki what is the means is towards a ultimate end. And if the mean is not, sometimes we will say ki sometimes mean is more important, okay, correct? But when the mean is not getting translated into the end, that means ki we have to change the mean rather than trying to change the end. End change kale ame kon habo, loko ko justice ta injustice he jibo. So it is rather better you change the rules than to change the end goal, right? So here you will again find out a maybe third option or middle path. तुम गोटे find out कौन करियो, तुम कहियो कि चलो we will first of all we will immediately apply for her Aadhaar card and birth certificate, ताको हम help करिया apply करिया रे. Meanwhile what we will do कि other social benefit scheme under किसी देही होबो कि, for example Red Cross, तुम जानते हो Red Cross fund सब district रे थाए. आमे कह के Red Cross fund रू immediately हम किसी पैसा दे दिया, suppose 10,000 rupees immediately दे दिया जो, and in the meanwhile ताको documentation पे application दे दिया जो. जेताले एप्लीकेशन के सर्टिफिकेट गोटा आसी जो हमें ताको एनरोल कर दवा इग्नो एप स्टैंडर्ड. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन. ना तो पॉइंट इज जण कहयो कि नहीं रूल एंड लॉ तो पूरा क्लियर अछि कि हमें ताको डॉक्यूमेंट न हले दे परियन, ताको फेरे द, ताको फेरेवार नहीं, बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड कि मोर देन नीति व्हाट मैटर्स इज न्याय. तो समटाइम्स वी आल्सो हैव टू चेंज आवर नीति टू एंश्योर न्याय. ना तो पॉइंट इज कि नीति ताको जदी हमें दुर्नीति कर दवा ताहले हमें न्याय को हमें कहे कि न्याय पे हमें दुर्नीति कर दोचे. ता माने कोन, ता माने तुम कहयो कि ओके व्हाट वी विल डू कि चलो आमे आउ काठू ब्राइब आनी कि बुढ़ी लोक को दे दो. प्रथम कथा होची जहां तुम ब्राइब आनिबो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइबिंग इटसेल्फ इज अनएथिकल. सेकंड पॉइंट कि जो लोक तुम ब्राइब कलेक्शन करियो डिमांड करियो, मे बी दैट पर्सन आल्सो इज अ नीडी पर्सन, तुमे ताठरू आनिवार जस्टिफिकेशन किछ नै, राइट? सो नीतिटा दुर्नीति होबनी. हियर मीन्स इज मोर इंपोर्टेंट देन एंड आल्सो. हियर जब तुम दुर्नीति करियो चाहो ताले कहब कि मीन्स इटसेल्फ शुड नॉट बी रॉन्ग. बट एठी देखो, एठी हम जहां एक्शन नउचे एथरे सब हम एक्शन और मीन्स भी करेक्ट अछि. किछि हमें रॉन्ग एक्शन नो ना, अनएथिकल एक्शन नो ना. Okay, are you able to understand how we are going to approach such kind of complicated ethical dilemma and how we are going to find a good solution to this kind of issues? Okay. Any doubts in this, please ask.
Now then let us come to this part. Balance sheet approach रे ताले हमें कौन करिया? You should use this for evaluating different options or courses of action. The balance sheet approach usually अब एटा भी one of the most used in case studies. बहुत पिला माने ए वे रे भी तो केस स्टडी को अप्रोच करନ୍ତି. तो ठीक है, you can do this also. Specifically बेले बेले कौन हबो? In the question itself it will be given some action course of action कहि दिया you evaluate this course of action. देखो यूपीएससी और ओपीएससी कौन करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखाई थी कि एटा एटा एथिकल डिलेमा अछि. सो यू हैव दीस टू ऑप्शंस. ऑप्शन 1 होची कि तुम से बड़ी लोगों को मना कर दो, ताको कहे कि फर्स्ट यू जनरेट द डॉक्यूमेंट देन वी विल प्रोवाइड यू द सर्विस. सेकंड होची कि यू विल ब्रेक द लॉ एंड तुम्हें बिना डॉक्यूमेंटेशन ने ताको अन्य कौन फंड रो डायरेक्ट नहीं पैसा दे दो. सपोज यू आर डाइवर्टिंग पीएमएवाई मनी टू दिस ओल्ड पर्सन्स अकाउंट. सो एक्शन 1 इज की डिनाइंग द ओल्ड वुमन. ओके, हमें गोटे एग्जांपल नउचे से सेम एग्जांपल. एथरे प्रोस कोन हबो तुम कहि कि एथरे होची नीति को हमें प्रायोरिटी देलु. ओके, सेकंड होची कि एथरे हमें नीति माने दैट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रायोरिटी देलु. सेकंड हला कि हमें समस्त पई यू विल से कि हमें होचु इंपार्शियल, हमको किसी फर्क पड़ेनी बूढ़ी लोगों की यंग लोगों की, है ना. बट कॉन्स कौन हला कि न्याय एंश्योर ही परला नहीं, देयर इज नो जस्टिस, राइट, इनजस्टिस हे. सेकंड इशू हला कि वेलफेयर हला नहीं, वेलफेयर जो पर्सपेक्टिव और फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्विस हमर हला नहीं, राइट, पब्लिक सर्विस एंश्योर हला नहीं. सो दिस इज द एक्चुअल एग्जांपल एंड राइट रॉन्ग माने टिक मार्क रॉन्ग मार्क लिखियो राइट इन फ्रेजेस कि न्याय वाज नॉट एंश्योर्ड, न्याय और जस्टिस वाज नॉट एंश्योर्ड. एमते लिखियो कि वेलफेयर और पब्लिक सर्विस वाज नॉट एंश्योर्ड. ओके, ए बडा लिखियो मु एटा शॉर्ट रे एमते लिखु. नाउ व्हाट इज द अदर एक्शन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड? क्वेश्चन नहीं लिखाई थियो कि यू डाइवर्ट द फंड फ्रॉम another scheme to pay the lady. Okay, तो यार प्रोज एंड कॉन्स तुम कौन लिखियो? प्रोज है कि वी एंश्योर्ड, न्याय इज एंश्योर्ड, जस्टिस इज एंश्योर्ड, राइट. सेमती वेलफेयर देखो से सेम जिंसटा एटा क्रिस क्रॉस ही जो एटा से सेम पार्ट आसो. सो वेलफेयर और पब्लिक सर्विस हे गला. ओके, कॉन्स रे कौन हला कि यू आर ब्रेकिंग द लॉ. ब्रेकिंग लॉ मींस नीति को हमें एंश्योर कलु ना, राइट. सेकंड पार्ट हला कि some people may be some other people. see एटा पांडोरास बॉक्स भी गोटे ओपन कर दो. एबे किछि लोक कोन हेबे से माने आगुरु जो माने डॉक्यूमेंट करी के ऑफिस आस्तले से माने कहि कि आमे बिना डॉक्यूमेंटेशन ने भी आपण हमकु दियंतु बिकॉज़ ताको जदि देले हमकु काहे न देबे. तो दिस विल आल्सो क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर दैट. तो दीस टू एक्शन तुमको जो दिया हितो ताको तुम इवैल्यूएट करियो. देन फाइनली लिखियो कि माय कोर्स ऑफ एक्शन, दिस इज योर कोर्स ऑफ एक्शन. एंड एठी यूजुअली तुम गोटे मिडिल पाथ गोटे बाहर करियो. ओके, or any other path that you want to take, and you will justify ki these are the pros and cons, this is what I'm going to do. Okay, this is the solution. Are you able to understand ki the balance sheet approach hame kimti kariya? Pros and cons so different option na hame evaluate kariya. Okay, we'll do take this final part, then we'll take a break. So just see this last part of this section ki finally गोटा होची stakeholder approach अछि. स्टेकहोल्डर अप्रोच तमे देखि दियो सब पिला माने आखि बुझी कि को भी एथिकल केस स्टडी स्टार्ट हबो से माने स्टेकहोल्डर अप्रोच रु शुरू होई जाय. हु आर द स्टेकहोल्डर्स इन दिस डिलेमा? एथरे होची यू आर द इंडिविजुअल और डिसीजन मेकर, ही और शी इज द वन ऑफ द स्टेकहोल्डर्स. देन देयर इज द अदर पार्टी, यूजुअली मे बी गोटा कंपनी हितै पारे, किछि अदर पीपल हितै पारन, कि भी आ गोटा अदर पार्टी जो माने थिबे से डिलेमा. यूजुअली वन एटा गोटा जेनेरिक गोटा एग्जांपल देई छी. इट विल डिफर फ्रॉम केस टू केस ऑफ कोर्स. Another stakeholder would be the government, police, administration, right? And final one would be society or people in general. Okay, देखो different case रे different stakeholder है. I'm just giving you one example. So here what is the perspective here? Here is कि then you take individual stakeholders and you analyze the ethical choices present before them. For example, individual or you. Okay, तुम पाखरे कौन choice अछि, what you are going to do. Then you will write ki government पाखरे कौन choice अछि, what they are going to do, right? Similarly the other party, for example जो company अछि से company रो कौन 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 choices अछि, right? Finally society ऊपर कौन कौन impact पड़ियो, society ऊपर कौन option अछि, right? In this way you can structure your answer also. But now the question comes ki is it always necessary to write stakeholders? मु किछि देखि छी it is as if किछि पिला माने याको गोटे पूरा format बनै दै छथि कि
ethics case study माने हमें first will start from stakeholder. It is not at all necessary. Okay. ତା ମାନେ କଣ, ବିକଜ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଫ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ କି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ସେଇ ୱେରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିହବ, ଦେନ୍ ୟୁ ରାଇଟ୍। ଅଦରୱାଇଜ ଜବରଦସ୍ତି ଲେଖିବାର ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବହୁତ ବେଳେ ମୁଁ କଣ ଦେଖେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେଖେ କି ସେମାନେ ଇନିସିଆଲି ଏମିତି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ସପୋଜ ଇନିସିଆଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ପରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡିରେ ଏ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର କୌଣସି ରେଲେଭାନ୍ସି ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡିରେ ଅନ୍ୟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇଛି। ସପୋଜ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡିରେ ଲଜ, ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ସବୁ ଡିସ୍କସ କରାଯାଇଛି, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏନି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର। he or she has not even differentiated between different stakeholders. The point is, was it asked in the question? If it was not asked, why have you written this? There is no point. Blindly लोक माने कौन लिखन पिला ने blindly ता follow करो ना. Just try to understand, because stakeholder रे लिखिया रे किसी time तुम्हारे जो, and in general case study रे बहुत time जो, right? So if you are wasting unnecessarily, if you are wasting it, there is no point. And other part हो कि initially कौन novelty थिला जिनसा, माने किसी लोग पिला ता लिखिया start करे, so it was new for the examiner. So maybe due to that novelty, some would have gotten good impression basis रे किसी maybe ଭଲ mark ଆସିଥାଏ, but ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, there is no novelty now. Why should you write it? If it is required, ଯଦି ତୁମର answer structuring ହିଁ stakeholder through ରେ କରିଛ, then you provide it the stakeholders. ଏମିତିଆ କରିକା, ଏମିତି କରି show କରିପାରିବ diagram through। ଯଦି ପଚରା ହିଁ ହେଇନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି କର ନାହିଁ। କୋଉ ବି ପାର୍ଟ ରେ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଆମେ stakeholder through ରେ ହିଁ start କରିବ। ठीक है, take 5 minutes break, we'll meet again at 8 o'clock. Okay, take a break.
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me share the screen. Screen share is. Yes, sir. Okay. So now come to this part, generic versus specific content. now देखो ଯେତେବେଳେ भी आंसर लिखियो मैक्सिमम आंसर देखियो कि बहुत ही जेनेरिक पॉइंट्स लिखा है जेनेरिक पॉइंट माने कौन तो जेनेरिक पॉइंट माने होचे स्पेसिफिकली तुम एमती लिखियो कि कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करछो यू आर राइटिंग कि no this course of action is not good because this will hamper administration of justice. Okay, so you are just using some keywords. Okay, which is माने keyword भी ना बहुत cliched words you खाली use करछो these are generic points. specific content कौन कि specific माने किसी fact किसी specific concept data किसी examples किसी case studies. Okay, these will enrich your answer. So write something specific. For example, suppose you are writing ଆମେ ଏମିତି sexual harassment ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ तो तार कौन कि तार डिफरेंट डायमेंशन तुम्हें लिखिल तो बहुत सारा जगह तुम्हें लिखिज कि दिस इज अगेंस्ट द लॉ व्हिच लॉ राइट तो द लॉ इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट राइट सिमिलरली इन केस ऑफ करप्शन केस बहुत जगह तुम्हें लिखिज कि करप्शन होची दिस इज इलीगल बट व्हाई इज इट इलीगल because there is something which is known as prevention of corruption act so these are specific things okay so you have to write specific things similarly suppose you are writing an administration ऊपर किसी गोटे जिंस लिखिछ कि एटा होचे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को हैम्पर करियो now instead of this even write citizens charter कि citizens charter रे suppose एटा लिखा अछि सेवोत्तम मॉडल ले एटा लिखा अछि so now this is a specific content right you are writing कि these are the different values that civil servants have instead of just writing these values mention कि second ARC has said this second administrative reforms commission has said this Nolan committee has said this right so these are specific content give specific examples for example euthanasia case ଗୋଟେ ethical study ଅଛି you write कि अरुणा सोनबाग केस रे एटा ହେଇଥିଲା right so when you are giving specific examples then your answer will be specific content will always be appreciated rather than generic केवल लिखि लिखि चलछो कि this is not good this course of action will prevent justice providing justice to the people this will hamper administrative efficiency ता अपेक्षा better कि provide some specific content okay similarly try to include many of the administrative or legal perspective scheme provisions ये सब point गुड़ा बेसी लिखियो okay let me give you an example यार माने कौन suppose as an administrator तुम्हारा किसी solution मगाई suppose riots है okay so you are writing कि riots हम कौन करवी ना I will request the police to come to the place I will go there then police will do this and that no write some more specific content for example riot रे you will write कि rapid action force को डकेई okay କିଛି ବି ସ୍ପେସିଫିକ ଜିନିଷ ଲେଖିବନି ତାକୁ अंडरलाइन କରିଦବ ଯଦି then they will know कि okay ପିଲାଟାର administrative acumen ଅଛି person is able to understand कि ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ rapid action force ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି or you can even write कि this also comes under CRPF is a huge ମାନେ force right will say कि CRPF ର ଗୋଟେ battalion ମୁଁ demand କରି government कि मते दिया support करें okay so you are writing some other administrative perspective ଆଉ କେମିତି ଲେଖୁଛ ଦେଖ ସମସ୍ତେ normally ଏମିତି ଲେଖିବେ कि suppose land acquisition ଉପରେ ଗୋଟେ issue ଆସିଲା legal land ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା encroachment suppose ହେଇଛି so people will write कि encroachment ମୁଁ हटाई देबी because ये होची illegal is but you write a specific thing Odisha prevention of land encroachment act okay so you'll say कि I will try to implement Odisha encroachment of land encroachment OPLE टा कुआ जाय OPLE act स्पेसिफिक जिनस किछि किछि आंसर रे ऐड करियो ट्राई करो कथा होची कि ये जो नॉर्मली जने एनक्रोचमेंट हटाया कथा कहि आ जने लिखि ओपीएलए एक्ट को मेंशन करछि यार इंपैक्ट बेसी अछि राइट सपोज वन पर्सन हैज सेड कि हमें यू आर सपोज तुम को आज जगन्नाथ मंदिर रे तुम एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी रे यू आर ए मेंबर एंड किछि ओडे इशू हिची व्हाट आर यू गोइंग टू डू जने लिखुछि जेनेरिक पॉइंट जने लिखुछि आ जने इफ यू आर राइटिंग कि हमें एंडाउमेंट एक्ट अंडर रे कोन कोन काम करि परिया now it is a more specific thing similarly suppose there is a question on हमें देखो अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर गोटे किसी एथिकल डिलेमा आसे तुम कहे कि मु एम्प्लॉयमेंट जनरेट करबी गवर्नमेंट को कहबी जहाँ स्कीम अच्छी से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हो अरे बाबू तुम निजे स्कीम लिखुन कौन स्कीम अच्छी तुम स्पेसिफिकली मेंशन करो एनआरजीएस रे आई विल ट्राई टू गेट देम एम्प्लॉयड यू विल से कि
दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर रे और सेमते गोटे एनयूएलएम भी अछि या अंडर आई विल ट्राई टू गिव देम प्रोवाइड देम लाइवलीहुड। यू विल से कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी अछि ता अंडर आई विल ट्राई टू डेवलप स्किल डेवलपमेंट विल ट्राई टू डू अंडर पीएम कौशल विकास योजना केवीवाई ए मिशन अंडर to write some specific things एमती otherwise कौन लगे कि एमती हवारे कथा चलछि। This is the final perspective. So now let us come to this part which is the main part कि या पर उठो हमें specific case study को solve करिया। So I will show you a few case studies को हम detail solve करी गले you will be able to understand कि how to approach the case studies. Okay. So initially कौन ही दिला ना या पर page टारे मु include करथि गोटे बहुत ही famous coaching institute रो गोटे model answer right. Here also I had written this model answer. Then I realized कि नहीं एमतिया करी show कले maybe copyright issue होइजो so I had to delete it. But I encourage you कि after this class what you should do कि please go through some of the so called model answers. Okay. किसी model answer जाइए देखो तार perspective होची कि देखो usually बहुत institutes अछंती किसी coaching center अछंती कि माने अन्य coaching center रो material रो direct पढ़े देउछन। What I feel कि rather you should try to understand कि what is the quality of those material also because many times market रे किसी blindly चली जाई सब जिंस go through any of the such so called model answers and you see what is the content there. कंटेंट रे बहुत ही जेनेरिक क्वालिटी अछि बहुत ही जेनेरिक कंटेंट किछि भी स्पेसिफिक नै तुम गारंटी देई को तुम क्लास पर जाई के चेक करो हला एथिक्स रो सॉल्व पेपर्स कहि दु तीनटा फर्स्ट जोटा आसी जीवो कोचिंग सेंटर तुम देखियो तार आंसर देखियो से सपोज एई केस स्टडी रे से माने बस पैराग्राफ पर पैराग्राफ लिखि लिखि चल चंदी कि पूरा एमती लिखा है कि हाँ मैं एटा करू सेटा करू एटा एटा कले ए प्रॉब्लम है जो से प्रॉब्लम है किछि भी स्पेसिफिक लॉ किछि स्पेसिफिक एक्शन okay किछि स्पेसिफिक स्कीम nothing is mentioned okay any even philosopher's name is also not mentioned any philosophical perspective is not mentioned any article is not mentioned any constitutional value is not mentioned nothing खाली generic point पर point अछि and ताको हमें मॉडल आंसर नहीं कि किछि पिला ने पागल होचंदी कि हमें एई भळा ही आंसर लिखे याठू बेटर मु कहबी कि तुमे तुमरो इंडिविजुअल आंसर ओटे लेखो which will show your individuality okay and the actually the examiner को जहा जोटा पढिया रे इजी हो सेते किछि डायग्राम भी थाई पर किछि फ्लो चार्ट थाई पर and you should also box some parts important in highlight हिथियो headline थिवो pros and cons लिखा हिथियो now this answer would be better to read and it is also showing your individuality and generic no it is very specific content specific जिनसे पकेले बेसी मार्क पाई after this I think explanation you would be able to understand कि हाँ then तुम कौन कि blindly से सब जिनसे गूगल करके सेटा को बिलीव करियोनी कि एटा ही जहाँ आसी से सेमिति ही मु लिखी तो प्रैक्टिकली कौन वे ए सब जिनसे को कंपाइल करे को किछि अनफॉर्चूनेट प्लान को दायित्व दिया जाए तो दे आल्सो डोंट नो कि व्हाट शुड बी अ गुड आंसर राइट good remember good faculties are not working as content development प्रथम पिला माने फर्स्ट कंटेंट डेवलपमेंट रो काम करि करि धीरे धीरे डेवलप कि जो मानकर भला एबिलिटी थाए से माने टीचर ही जानते फैकल्टी ही जानते सो कंटेंट को दैट मींस कि ऑनलाइन जहां भी कंटेंट मिलुची आखि बुझी के सेतरे विश्वास करो नै इट इज देयर फॉर सेट टाइम आमे मॉडल आंसर यूजुअली दो ना बिकॉज़ believe me model answer कहि कि जहां दिया होची ताटो बेटर आंसर राइट नाउ many of you most of you are writing better answer than these so called model answers. These model answers are not only generic, they are so very bland and they are also very impractical. Okay. What you are writing, many of you at least are writing, are very practical answers and good answers also. Okay. So see, these are factually correct. Factually correct or mane no hai good answer. Okay. And even maybe in your practical answer, some parts may be factually incorrect, but still I will call this a good answer because you are using your brain, you are writing some specific things. Okay. And you are writing practical things जोटा कि 7-8 मिनट भीतर लिखियो anyway let's not delve too much into it let's come to this case study so एटा last year रो हमें obviously सब last year रो previous year question गुडा ही सब देखुछु UPSC रो so this was the first question एथरे issue कोन हेची से कहउछन कि you are working as an executive in a nationalized bank for several years दिने कोन हला कि तुमन कलीग आसले से कहले कि तुम तांको बापांकर हार्ट डिजीज अछि he or she he needs surgery immediately तो तांको पाखरे किछि इंश्योरेंस नाही आ ऑपरेशन रो कॉस्ट केते हो 10 लाख टका ओके तांकर हस्बैंड भी नांती and she is a lower middle class family that means कि तांको पाखरे किछि आ अलगा मींस नाही so you are empathetic about her situation but तुम पाखरे किछि सेमती रिसोर्सेस नाही you cannot give her any loan yourself
लेटर ऑन तुम जान कि फादर वेल बीइंग ठीक हो गले से कहले कि सर्जरी ही तुम पचार कि सर्जरी केमती है से कहले कि बैंक मैनेजर मते हेल्प कले तो सी कौन कले 10 लाख टंका गोटे डॉर्मेंट अकाउंट रू एसमेंट ही अकाउंट रू of someone to pay for the operation with the promise that it should be confidential and be repaid at the earliest. Okay. And she has also started paying it back and will continue to do until it is all returned. ताने बैंक मैनेजर कौन कले गोटे जो अकाउंट चालू नथिला यूज हो नथिला बेसी से अकाउंट रो पैसा डाइवर्ट कर देकी तांको यांको पे कर दैछन तांको कहछन तुम धीरे धीरे पैसा सुझे दो एंड शी इज आल्सो पेइंग इट बैक. नाउ यू टेल मी कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व and evaluate the behavior issues in some discuss करें. First you tell me कि ethical issues एथे कौन अछि? How should we begin with this? Now tell me देखो तुम यदि blindly सब माने हर्ड को फॉलो करियो स्टार्टिंग रे किछि न बुझी आगे लिखि दो स्टेक होल्डर. आई नो तुम सब किछि पिला एमते लिखतो जने लिखियो कि मी देन इज दैट अदर पर्सन की ता ना कोन ए फ्रेंड रो किछि नाम नहीं क्लोज कलीग्स. Okay, let us say कि your colleague रो ना किछि नहीं, so it is colleague. Then who is the other stakeholder? Other stakeholder is the bank manager. Okay. How के stakeholder रहते हैं? In general, bank itself. Okay. Bank is an organization. Manager individually and bank is an organization. बता कथा होची एभले यदि आखि बुझी लिखियो was it asked in the question? डोरमेंट अकाउंट जैसा भी नहीं पड़ेगा ना? हाँ sorry yes, this should be another key account holder. Okay, right, correct. बता कथा होची एटा तो तुम पचरा ही नहीं किछि पचरा जाय नहीं तुम काहे के एटा करियो. Please don't do such kind of blindly करो नहीं. is it do you think कि तुम्हें ये stakeholder approach through the entire जिंसो को explain करियो जदी करियो ताले करो. Otherwise initially आखि बुझी के एमते करो नहीं because यार point किछि नहीं. Okay. Rather how you can start की you can start with a very simple thing. The above case study shows an ethical dilemma faced in professional setting where competing ethical choices are present or something. गोटे किछि भी गोटे generic आमे गोटे just because of introduction को abruptly start हवा कथा ना गोटे simple introduction आमे लिखी. Okay. Don't need to write this also. And also think कि गोटे answer को usually गोटे figure रो start करिया कथा हम जाले भी गोटे diagram type का तो answer किछि गोटे sentence लिखी then you should maybe draw a diagram. So okay, we did not draw this diagram आमे एमतिया लिखी. Now you tell me कि एथरे ethical issues involved कौन कौन अछि. And before this you first tell me कि do you think कि जो बैंक मैनेजर जो काम कले is it justified? What do you think? से आउ कार अकाउंट रानी ताऊ पैसा पेमेंट कर दे was this justified? सर एंड टा जस्टिफाइड किंतु मीन्स टा जस्टिफाइड नो. Very good. एटा बॉडी पार्ट रे हमें लिखिया means versus end debate. तो means the finally justified कि न तुम कोन कोच कामडा से जा कले तो एंड भी हमें कहल ठीक है एंड तो justified से सेति पई से कामडा कले. तो what do you think? Should he have done that or not? सर तो जस्टिफाइड नुहे बोधे से फाइनेंशियल चाहथिले जस्टिफाइड तो किछि लाइफ सेवर. Yes, let her speak first. Yes, ma'am, please continue. सर मते लाଗୁଛି जस्टिफाइड नुहे कहना बैंक मैनेजर चाहथिले किछि लोन की आउ किछि उपाय रे तांको दे परथांदे किंतु अकाउंट होल्डर को ट्रस्ट इश्यू रे एटा माने आसी जाउछि तांको अकाउंट Very डोरमेंट good, ही बोधे excellent. से You raised an excellent point. से चाहथिले लोन भी दे परथांदे अन्य बारे because he was the manager. डॉर्मेंट अकाउंट रो जों देले सेटा से लोक को पचारी के दिया जाय नहीं. Okay, this is a good valid argument. Yes, someone else was saying. How jone के कहउतलो another point you were saying. No, सर मोर भी सिमिलर पॉइंट था कि जो बैंक मैनेजर जो हेल्प करे ही कुड हैव हेल्प फ्रॉम हिज ओन पॉकेट बट से निज पॉकेट रू हेल्प न करिकी गोटे डॉर्मेंट अकाउंट रू देले इवन तो सेटा मोर पॉइंट था माने फ्रॉम बैंक right, मैनेजर्स पर्सपेक्टिव and right, from looking at her perspective she could have asked for help from multiple sources जदि जणे के हेल्प करि परनाते किछि एथिकल मीन्स रु भी कि फेयर मीन्स रु भी से अरेंज कर परता फंडिंग इवन डोनेशन माइक परता माने बहुत सारे एमती संस्था अछि जेमती देई परिबे तो right.
चलो आमे सेटा पर सेटा को डिटेल जे तो पॉइंट है कि सेटा से दबा कथा नथिला राइट दिस वाज एन अनएथिकल थिंग टू डू कि डॉर्मेंट अकाउंट कहार जाके तुम मनी डाइवर्ट करो तो जेतबे भी मनी डाइवर्जन वाला ऑप्शन आसी ना को केस रे भी डाइवर्जन टा यूजुअली जस्टिफाइड न थाए आमे डाइवर्ट किछ करबानी फॉर एग्जांपल सपोज को आबो कि को केस रे भी के भी जने डिजर्विंग लोक अछि सपोज दिस इज अ डिजर्विंग पर्सन हमको सही अकाउंट ताको पैसा देई होनी तो आउ जने कहे कि अन्य को अकाउंट दे दियो फॉर एग्जांपल पीएमवाई मनी रो तुम आमे ताको देतवा एनआरजीएस रो देतवा कथा होची कि एगुडा स्पेसिफिक अकाउंट अछि स्पेसिफिक एक्टिविटी में इफ यू आर प्रोवाइडिंग डाइवर्ट जतबे करा जाय ना यार बहुत लीगल इंप्लिकेशन बहुत अछि डाइवर्जन इटसेल्फ इज अ वेरी लीगली डेंजरस थिंग तुम यदि तुमरा जस्टिफाइड माने एंड भी थियो ना तुम कर दैछो ताले तुमको बहुत माने एथिकल सॉरी लीगल ट्रबल ले पड़े पड़े बिकॉज़ अकाउंटिंग हुए ऑडिट सॉरी ऑडिटिंग हुए ऑडिट एंड अकाउंट हो सेथरे तुम पचरा तुम ए लोकर को काई पैसा दिया गला बहुत जस्टिफिकेशन हो बहुत इशू हो देन सेकंड कथा होची सेटा गोटे पैंडोरस बॉक्स भी ओपन कर दो ना आमे एटा कथा हिल पैंडोरस बॉक्स माने जोटा गोटे डोमिनो इफेक्ट वाला गोटे जिंस कि वंस तुम ए भले काम कल माने देन फर्दर ऑन अन्य लोक माने डिमांड करे एबे आउ किछ लोक माने आसी कहे कि आगे ताकू तो डाइवर्ट कर दिया हला मते भी डाइवर्ट कर दियो एई केस रे भाबो एई केस रे तले सपोज ए कथाला धीरे धीरे जना पड़ी देन तापर किछि लोक आसी से माने नॉर्मली भी बैंक रे लोन अप्लाई कर परतंदे बट से माने आसी कि बैंक मैनेजर को कहे आगे हमको भी हेल्प करंतु तांको तो हेल्प करतले हमको भी आउरी अन्य बहुत डॉर्मेंट अकाउंट हो ना डॉर्मेंट अकाउंट कोन गोटे अछि तो से माने कहे आपण अन्य डॉर्मेंट अकाउंट रो हमको दियंतु पैसा ओके इवन दे विल से कि एथरा आपण किछि इंटरेस्ट भी चार्ज करन तो इवन वी आर रेडी टू डू दैट तो एटा नॉर्मल हमर ऑफिशियल इंटरेस्ट टू टिके लोअर रेट हम चार्ज करन से तो पूरा बिजनेस मन so this cannot be justified in any case okay so this thing in some cases हम कहले किछि किछि एक्शन को तो माइंड रे पूरा क्लियर आसी जावर अछि कि एटा को तो हम जस्टिफाई करबी ही नहीं बट पॉइंट होछि कि हमें प्रोस एंड कॉन्स वे रे ताको देखि परिया हमें डिफरेंट ऑप्शन को नहीं की ताको ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 रो प्रोस एंड कॉन्स रे देखि परिया हम कहि परिया कि एटा फॉर एग्जांपल एटा होछि एंड को जस्टिफाई करूछि इन द सेंस कि हमरो यूटिलिटेरियन अप्रोच राइट सो यूटिलिटेरियन अप्रोच रे कोन मैक्सिमम लोकंकर बेनिफिट हिजबार अछि तो एथरे कार तो बेनिफिट तो माने कार लॉस भी हो जो लोकर डॉर्मेंट अकाउंट अछि से लोकर तो लॉस भी किछि हो नै से तो जानि ही पार नै तार पर पुनी पैसा आसी डिपॉजिट हे गेला तक कोन जना पड़ बट ऑन द अदर हैंड कोन हमें कोन कहया कांत रो जो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स द डिओंटोलॉजिकल एथिक्स हिसाब रे सो करया कथा नथला मींस इज आल्सो एज इंपोर्टेंट और इवन मोर इंपोर्टेंट देन दैट सो आमे एमदे करया नथला सेमदी आमे कहया कि नीति वर्सेस न्याय देखो एथिरे कोन हला कि आमे न्याय और जस्टिस को आमे इंपोर्टेंस देलु बट कोन कोन हला कि नीति को आमे इग्नोर कर देलु तो बेले बेले नीतिटा एठी देखो एठी नीतिटा दुर्नीति हे गला यू कैन राइट दिस आल्सो कोटेशन भितरे एठी नीतिटा दुर्नीति हे गला देखो से एथिकल वे रे भी से मनी अरेंज कर परथाने से आमे एमदी कथा से लोन वे रे भी अरेंज कर परथाने इफ यू आर द बैंक मैनेजर देन वी एक्सपेक्ट कि यू कैन प्रोवाइड अ लोन इन चीप रेट को भी प्रोविजन अंडर फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंडर रे भी गोटे लोन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया हुए तो सेतरे भी तांको दिया जाई परथांदा व्हाई यू टेक सच काइंड ऑफ अनएथिकल एक्शन व्हिच विल क्रिएट दिस मोर इशू फॉर यू इन द फ्यूचर मोर ट्रबल फॉर यू सो तुम माइंड रे क्लियर हे जावा कथा कि एट द एंड ऑफ माय आंसर आई शुड नॉट जस्टिफाई दिस थिंग आई शुड से कि नहीं यू शुड हैव डन समथिंग एल्स सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू आंसर हमें केमती आंसर करिया हमरो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट तापर बिट टाइम होची व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व सो फर्स्ट यू हियर यू राइट एमते हेडिंग दबो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व एबे सही पॉइंट उडा को लिखि दियो फर्स्ट पॉइंट कोन हला कि फर्स्ट पॉइंट सपोज यू आर राइटिंग नीति वर्सेस न्याय right and you are here you are writing अमर्त्य सेन then you explain it in short गोटे गोटे दुई लाइन में एक्सप्लेन करो कि नीति होची दिस इज द रूल बट न्याय होची जस्टिस सो हियर कोन जस्टिस एंश्योर हला बट रूल एंश्योर हला नहीं सेकंड होची कि so this is also similar to means versus end debate third point you write ki violation of law law रो भी violation एटा ना law रो कोन की तुमे एटा गोटे टाइप रो फ्रॉड हे गला so account money diversion is not allowed this is a banking offense right law as well as banking rules right सर तारा एटा में फास्ट violation पॉइंट हम लिख परथांते कि नाउ हाँ लिख हाँ लो ये certain you should write this in the first place first rate लिखो because this is the most important part right then you गोटे दुटा लाइन में ताको एक्सप्लेन करो कि why this is सर इठी मेंशन कर परिबो इटा वायलेट कला हमर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट very को good you can मेंशन write कर certainly
BRA 1949 ରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଏମିତିଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ. Okay, Yes, sir. you can write this. What else are ethical issues involved? Diversion of the case, diversion of money ହେଲା, then ହେଲା କି confidential. Sir, ଆଉ trust କଣ? of the Sir, ଆଉ account ଗୋଟେ holder point is breached. Trust, yes, very good. Trust ହେଲା, breaking the trust of the, yes, it is, remember कि depositors interest protection. Okay, this is the number one priority of the any bank. ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର number one priority ହେଉଛି depositors interest protection. ତା under ରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କି complete disclosure. ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ, you should have complete disclosure. So complete disclosure norms କୁ ବି violate କଲା, disclosure norms କୁ violate କଲା, ତାଙ୍କର trust କୁ ବି violate କଲା. Okay, जो लोग डिपोजिट करथिले से केबे परमिशन ଦେଇଥିବେ କି? ହଁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲିଖି ପାରିବ କି ୱିदाउଟ୍ परमिशन, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ परमिशन ଅଫ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଏଇ ଆକ୍ସନ ଟା ନିଆଗଲା. Right? Yes, someone else was saying something. Divanshu, I think. Yes, no. Yes, Devchandra. सर कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट जो एतिकी इजीली हेई पारथांता हो असुविधा ही न थांता. Very good, but सेटा हमें एथिकल डिलेमा रे एथिकल इश्यूज सेटा टिके डिफरेंट ही होछ. सेटा मेडिकल सेपटे आडू पळेयो कि एते बेसी कॉस्ट काहे कि ना. द प्रॉब्लम इज कि तार भी बहुत सारा आर्गुमेंट अछि. हेई पारे कि से सर्जरी इटसेल्फ वाज तार कॉस्ट ही सेति कि बहुत सेथरे एक्सपर्टीज लागियो, बहुत सेथरे मेडिसिन्स लागियो. ओके, बहुत स्किल्ड डॉक्टर दरकार. एबे डिमांड एंड सप्लाई मार्केट हिसाब रे आसीयो. एबे तुम कहे कि हमर कंट्री ही एते डेवलपमेंट काहे कि हेई नाही. then you can also blame the person कि तार काहे कि मेडिकल इंश्योरेंस नथला. से स्टार्टिंग रे वाला ना देयर वाज नो इंश्योरेंस. एबे हम ताको भी ब्लेम कर परिया कि तुम कोन जाना नथला कि फ्यूचर किछि इशू हो, तुम काहे कि इंश्योरेंस कर नथला. बट आमे से आडू जीवानी पर्टिकुलर इन दिस केस व्हाट आर द इश्यूज. सर ଆଉ ଗୋଟେ Sir, ଏମିତି too much. ଡିଲେମା ହେଇପାରିବ କି ସେ ଯେହେତୁ ମାନେ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ତାକୁ କନଫାଇଡ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ନା. ତ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ର ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି କି ମାନେ ସେ ତମକୁ କହିଲା କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟଲି କହିଲା ବଟ୍ ୟୁ ଏକ୍ସପୋଜର. Okay, confidentiality among friends, ethical यस issues, मतलब फ्रेंडशिप ट्रस्ट. friendship and trust, ethical issues एथरे कौन हबो? सर ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ I ଇସ୍ୟୁ don't ହେଲା know, ନା, maybe. ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କୁ ରିଲିଜ କରିଦେଲା. Yes, confidence को breach कर देला. किए breach कला? ना फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई टेल यू समथिंग इन सीक्रेट, जो हम्म माने with a trust that you won't tell anybody else but you break that हम्म. trust. Right. So अच्छा, से बैंक मैनेजर को कहले कि confidential रखियो. और no सॉरी, even दिस पर्सन तार फ्रेंड को yes कहले. ओके, दीटा yes yes जिंस ही पर देखो. एथरे yes yes देखो, इट शुड बी data instance. confidential here also. है ना? से बैंक मैनेजर ताको कहले कि तुम एटा confidential रखो, repeated the earliest. तो ये बाबू आसी ना फ्रेंड को कहले. सो फ्रेंड फ्रेंड अभी जाई चारिटा प्रचार करिए कि ये इमोरल काम करछंती बे. बट यार काउंटर आर्गुमेंट इट हबो. ओके, यू कैन राइट इट कि माने कोन ट्रस्ट अगेन ट्रस्ट वायलेशन ऑफ. तो एटी दुईटा केस रे ट्रस्ट वायलेशन हला. गोटा हला कि violation of trust by the colleague, से कौन कहले ऑफ मैनेजर्स एडवाइस. राइट, मैनेजर्स ट्रस्ट. से कहले कि जिंस रो कॉन्फिडेंशियल रखियो, तो से कॉन्फिडेंशियल न रखी आकसी कहले. सेकंड वायलेशन ऑफ ट्रस्ट कौन कि यू, राइट, ट्रस्ट बाय यू ऑफ योर कलीग्स ट्रस्ट. राइट, ठीक अछि. बट एथरे इशू कौन कि देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी हमें केतेबेले रेस्पेक्ट करिया जेतेबेले जो जिंसटा कॉन्फिडेंशियल रखा होची सेटा किछि अनएथिकल न होइथाउ. एबे सपोज तुम कौन करियो, तुम गोटे लोक मर्डर कर दो, तापर तुम सांग कहयो भाई गोटे कथा का कहबे, गोटे लोक मार देछि, ताको डेड बॉडी को कोठी दफन कर देछि. नाउ इज इट नॉट द मोरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर फ्रेंड टू इन्फॉर्म द पुलिस? पुलिस को इन्फॉर्म yes करले sir तुम ମାନେ कहयो ଏଇଟା ଗୋଟେ हार्ट ब्रेक कर मतलब ମାଇଲ୍ଡ दे. ଫର୍ମ ରେ ଗୋଟେ ଆମର ଡିଲେମା ବି राइट, राइट. ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ମାନେ यस, यस. ସାଙ୍ଗଟା ମାନେ କଣ କହିବ. Certainly, this will also create a dilemma. Okay, I'm not denying that. तो ठीक है, एटा को हमें गोटे ethical case रे पकई दे. बट मो कहया था यार काउंटर आर्गुमेंट ही परियो कि ए केस रे सर कॉन्फिडेंशियलिटी को हमें. हां,
सर एटा प्रोफेशनलिज्म वर्सेस फेवरेटिज्म हबो कि? वेरी गुड एक्सलेंट हाँ मुझे गोटे पॉइंट मुझे आई वाज ट्राइंग टू रिमेंबर कि आउ कौन पॉइंट ही पारे प्रोफेशनलिज्म वर्सेस फेवरेटिज्म वेरी गुड एक्सलेंट so professionalism was not considered favoritism was considered right so this was the issue favoritism we had discussed ki jo undue favor specifically undue favor to someone even if they are deserving କଥା ହଉଛି କି why provide ଏବେ କଥା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି society ରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ medical treatment ଦରକାର maybe because you know the person then you are trying to help it so that then it becomes favoritism ନା ତୁମେ ଯଦି ସବୁ dormant account ରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି help କରିଥାନ୍ତ then it would be impartiality favoritism is a sort of partiality right so bank manager did what bank manager only helped the person that he knew and professionalism କଣ କି ଆମେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କର ପିଟିସନ କୁ entertain usually କରୁନା तो चलो 6टा पॉइंट भी ହେଇଗଲା ଏଟାକୁ explain କରିଦो it is enough ଗୋଟେ bit ପାଇଁ this is more than enough एते पॉइंट एग्जाम रे मने पड़िबो तो ठीक अछि नेक्स्ट लेट अस कम टू दिस पार्ट evaluate the behavior of the bank manager from सर जस्ट an जस्ट ethical खाली point गोटे of view पचार हेलो let us discuss the सर हाँ हाँ सर जस्ट खाली गोटे चलो क्वेश्चन पचारला कि माने जो 20 हाँ हाँ मार्क रे जो क्वेश्चन पछ 250 वर्ड्स रे पचारो पचारो तो से जो गोटे बिट मानकर तीनटा बिट अछि तो गोटे बिट को हमें केते स्पेस एलोकेट करियो सेमती स्पेस हिसाब रे जाओनी 20 मार्क माने भाबो रफली भाबो कि चारिटा साइड रे तुमको लिखियार चारि साइड माने दुई पेजेस राइट so that means accordingly now you divide जेतेटा बिट अछि सेति बिट रे डिवाइड करो तीनटा बिट अछि माने केते चारि साइड माने गोटे साइड रू टिके अधिका लिखियो तो सपोज गोटे बिट को लिखियो 1 पेज एंड 1.33 1.25 और 1.3 yes 1.3 अराउंड लिखियो वन थर्ड वन पेज फुल लिखियो आ गोटे पेज रो हाफ लिखियो बट मो कहया कथा ना यूजुअली रूल ऑफ थंब होची गोटे बिट माने गोटे साइड साइड ऑफ पेज गोटे लिखियो आ जदी बहुत बेसी सेतरे बल्क अछि ताले अति बेसी रे 1.5 पेज की अति बेसी रे अगेन पेज कोची 1.5 रा साइड तो राइट वन पेज मिनिमम गोटे बिट पे ना yes one page minimum yes usually because चारिटा बिट रू अधिका देई नथि 5-6 बिट यूजुअली देई नथि ठीक अछि तो यूजुअली तीनटा बिट की चारिटा बिट देथियो तीनटा बिट देथियो ताले वन वन पेज एंड सॉरी वन साइड एंड वन थर्ड ऑफ अनदर साइड जदी चारिटा देइथिला त माने तो वन साइड ऑफ वन पेज हेला पूरा आंसर इजी हेला राइट so एई सर केस रे भी दुईटा सेमती देथिले केते 1.5 पेज लिखियो ना दुई साइड ऑफ वन पेज माने गोटे पेज कंप्लीट माने गोटे पेज एपट सेपट दुई साइड याको लिखियो राइट दुईटा अदे बिट देथियो तो टिके एक्सपैंड करी लिखियो बट यूजुअली दुई बिट वाला बेसी न थाए तीन बिट की चार बिट थाए ओके सेतपई कहूँ कि गोटे बिट माने गोटे पेज रो गोटे साइड पूरा कंप्लीट कर दी आ गोटे पेज रे पिछे लिखियो सेतिकी लिखिया एटा को भी देखो एटा हमर गोटे पेज रे एतिकी लिखा हला तुम मतलब एक्सपैंड करियो एटा हे जो एटा तो आराम से 1.5 पेज इवन दुई पेज भी हे सॉरी दुई साइड हे जो एटा आराम से सेतपई हम कहूँ कि एटा एनफ पॉइंट हे गला बिकॉज़ याको भी टिके एक्सप्लेन करियो ना टिके एक्सप्लेन एक्सपैंड करियो एमते नै कि खाली हेडिंग में कि छाडी दो राइट सो नाउ कम टू दिस पार्ट इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर एई वाला केस रे कोन होगो जो इवैल्यूएशन होगो सेथिरे there maybe you can write pros and cons and there you can write some more ethical issues involved you can write first part रे भी किछि अछि expand कर परियो now एटा को suppose हमें एमितिया डिवाइड करे कि pros and cons कोन थिला ताको behavior right हमें एमिति लिखिया pros and cons of the behavior so we'll say कि pros कोन थिला for example we'll say कि से न्याय को ensure कले justice को ensure कले cons हला कि प्योर नीतिटा इंटेंशन yes नीतिटा दुर्नीति ही गला right एटा को expand करे ई भला एमितिया सिंबल ले लिखिबेनी मु एठी शॉर्ट फॉर्म में लिखुची then pros कोन हला कि so this means कि justice ensure हला then pros कोन हला कि welfare हला से person रो and yes सर से अल्ट्रुइज्म सबरो most परिवार में important part हला कि sanctity of life very good excellent point who is saying this I had सर forgotten अलीशा this so this who is this very good सर selfless अलीशा help right compassion plus selflessness so altruism excellent altruism is his ultimate goal sanctity of life यार एटा मेन पॉइंट एटा आंसर करिया कथा लिखिया कथा ए पॉइंट हम भूली गेल sanctity of life हला से लोकर बापा तो पहुंचले ना that is the first माने one of the major points so saving of life itself that is a huge deal saving of life चलो खराब वे रे भी दुर्नीति कले भी बट कार लाइफ तो बंची होला ना देन अल्ट्रुइज्म देखो एटा दिस वुड बी एन एक्सीलेंट पॉइंट इन द सेंस कि एई एक्शन करिया द्वारा मैनेजर हिमसेल्फ वाज टेकिंग रिस्क ओके तांकर किछि बेनिफिट हला से जो अकाउंट रो डाइवर्ट कले तांको किछि हेतु इंटरेस्ट मनी मिलतला किछि मिलला बट से रिस्क नेले कहा पे अल्ट्रुइज्म पे अल्टीमेटली सेल्फलेस हेल्प है ना
So these are also many pros are also there. Welfare है कि कार किसी तो benefit है right? हमें एटा भी कही पारे कि responsive leadership. He was the manager. तो सी तांकर एम्प्लॉय को हेल्प कले किए भी एम्प्लॉय जाई कि तांको यदि रिक्वेस्टिंग if the manager is not responding then it is not a good kind of leadership, but it is a responsible leadership. He is responding immediately, he took an action, right? The personal satisfaction. Very good. You can also write personal satisfaction. ताको एक भलो वर्ड कौन लिखिए ठीक है चल लिख दिया पर्सनल satisfaction कौन अच्छी पर्सनल satisfaction वर्ड बेटर वर्ड मने पड़ने पर्सनल satisfaction कौन लिखिए कोई नहीं purposeful और meaningful life हमें इटा लिखिए कि purpose of the action purposeful action गोटे नहीं है चलो एटा एनफ हो गला या टू टिके एक्सपेंड गोटे पॉइंट एक्सपेंड कर दो ना गोटे लाइन एटलीस्ट लिखि दो तो व्हाट आर द कॉन्स एबे बाबू नीतिटा दुर्नीति हो गला राइट ब्रेकिंग ऑफ लॉ फर्स्ट पॉइंट एटा हम सब भूली छी फर्स्ट यू राइट की ब्रेकिंग ऑफ लॉ एते तुम स्पेसिफिक पॉइंट लिख परियो कि हमर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जेमति आला बैंकिंग नॉर्म्स जोडा आला तो सेटा को ब्रेक करा गला दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ फ्रॉड इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ फ्रॉड राइट हाउ कौन हला कि So breaking of trust of the account holder, then yes profession. ब्रेकिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रेक अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक तो एटा परे आसो ब्रेकिंग ट्रस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर राइट Sir, then it will lead issue to bigger embezzlement because if the account is not repaired, then he will do herapery on a bigger account. Unethical कौन कहला accounting. तेरे को वेरी Sir, ମୁଁ गुड କହୁଥିଲି କି अनएथिकल ଯଦି account ଟା repayment ନ ହେଲା then ସେ ଆଉ କୋଉ dormant account ରୁ ଏଇଥିରେ ଆଣିବେ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଥିରୁ ହେରାଫେରି କରିବେ ତ embezzlement ବହୁତ ହବ। हाँ सेटा एई पॉइंट लिख परियो फ्रॉड लिख परियो एबे एथुर मते भलो टर्म माने पड़ले ए टर्म टा लिख मोरल हैजार्ड हमें जो पांडोरास बॉक्स होतले ना रादर राइट मोरल हैजार्ड माने एमितिया गोटे जिंस हम करिया जोटा कि फ्यूचर रे सही टाइप रो इमोरल एक्टिविटी को प्रमोट करियो राइट दैट इज नोन एज मोरल हैजार्ड फॉर एग्जांपल सपोज यू आर सेइंग कि हमें समस्त को लोन वेवर दे दवा माने जे लोन नै चंती ताकू हमें कोन करिया कहया कि आ तुम फेरिया दरकार नै तो यार इशू कोन हमें कहू कि एटा मोरल हैजार्ड क्रिएट करियो माने अन्य लोक माने भी एबे लोन बेसिस न कला कि आ लोन पेमेंट करियानी बिकॉज़ से कहि कि गवर्नमेंट तो लोन वेवर दोची हमको भी लोन वेवर दो तो फाइनली कोन हो इकोनॉमिक सिस्टम टा economic problem barrier, right? Banking issues barrier. So now the bank will not be able to give money to other people, needy people. So use this term moral hazard of unethical accounting. So from this you can write another point ki issues in future auditing. देखो auditing हला मन तो जाले भी problem टा बाहरी हो तो परे तांकर career progression में भी issue हो right? And yes another point कि तुम्हें लिखियो कि organizational reputation भी damage हो right? कि यही बैंक रो मैनेजर माने यही काम करथिले तो ये बैंक टा ट्रस्टवर्दी नो ना एटा जतले इशू हो ना देयर विल बी फर्दर इशू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ फॉर एग्जांपल बैंक रन काइंड ऑफ इशू हो लोकने कहे कि यार चलो बैंक रन तो बहुत बड़ जिंस हो गला कथा होची बैंक रो प्रोडक्टिविटी और बैंक रो प्रॉफिटेबिलिटी भी डैमेज हो राइट बिकॉज़ लोकने कहे कि यार हमें ए बैंक रे कहीं पैसा रखू ये तो हम पैसा अन्य को दे दोछन राइट these are n number of So issues that you can get risking public money. For example, से ताको trust रे देई चंती तो लोकटा से दिन ऑफरेला जदि लोन देई तांते लोन ने किछ इंश्योरेंस था हां एटा हम कहे कि रिस्क ऑफ नॉन रिपेमेंट राइट से ट्रस्ट जो देई चंती again you can write this as ki this is unsecured loan na this is sort of unsecured and informal loan हमें कौन यूजुअली लोन को सिक्योर्ड लोन दो माने कोलैटरल रखी कि तुम काहा को पैसा दोछ तुम कहूछ कि तुम बाबू बंधा किछ रखी कि हमको दियो तो एठी किछ बंधा रखा नहीं से लोक ट्रस्ट दे दो से लोक यदि फेरेबनी ताले तुम कहला ना अकाउंट बुडला पूरा राइट सो दिस इज द इशू देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट आउ बोथ पॉइंट भी एथे बाहरी जते भाबियो बहुत सारा पॉइंट्स बाहरी बट पॉइंट इज की write the most important points breaking of law was the most important part breaking trust of account holder moral hazard okay auditing रे जो इशू होबा एटा को मर्ज करके गोटे सिंगल पॉइंट भी कर परियो organizational reputation risk of non repayments these are the important points that you can write initially then other point non लिखले भी चलियो okay नीति और Sir, दुर्नीति पॉइंट भी लिख परियो sir, ଏଠି ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଯୋଉ କୁହା ହଉଛି justice ସେଟା actually କଣ ବୁଝଉଛି ସେଟା sanctity of life ନା ଆଉ କଣ कोडा कहलो ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ versus ନୀତି
तो नीति तो बुझेला रूल्स बट न्याय जो हाँ जो न्याय जस्टिस न्याय ए ये केस रे जस्टिस कोन यस यस सेविंग ऑफ लाइफ यस सेविंग ऑफ लाइफ ओके justice एथिरे गोटे narrow sense रे यूज हेनी political justice sense रे यूज हेनी से used in a very broad sense Amartya Sen if you read Amartya Sen's theory and I actually recommend you people to read some of his books especially argumentative Indian तो पढ़ियो argumentative Indian by the way न्याय versus नीति नहीं कुछ ହେଲା because that is more an exposition on India's culture and tradition and କିଛି बहुत सारा philosophical debates भी ଅଛି but in general if you read go through Amartya Sen's theories you'll see कि heady even niti is not just specific type of rules and laws niti in fact even social customs cultural laws cultural norms भी okay so a very broad sense रे दुईटा को term use करा है एथरे issue होची main जिनस होची कि न्याय कौन एथे हबो न्याय काहा को हमें कुछ न्याय is to the person concerned which is not even the bank manager it is the person that colleague ताकू न्याय मिलियार अछि माने सिए जहा चाहूची डिजर्विंग दैट इज ता बापांकर लाइफ बंची जो in this case it is justice okay ठीक है तो एटा एक्सपाउंड करले now you get the answer of B now point C is how you would react to the situation now comes the main part C रे एमते लिखियो my course of action right एमते हेडिंग गुडा जस्ट नोटिस करो केमते हेडिंग दिया होछ so my course of action how you should react now here we will provide remember we will always provide more specific points किछि generic point लेखा ना specific point हमको जते पारी हम लिखे so first हमें कहया कि first and foremost हमें कहया कि what has been done by the bank manager okay this is unethical even though it is for a better good okay larger perspective ପାଇଁ ହେଲେ ବି unethical ହେଲେ so one thing what we should do is कि first हमें bank manager को कौन कहया तां कहया कि please disclose this thing disclose करो to the higher authority and to the bank itself so bank को कहले कौन से customers को भी that is up to them if they inform to the customer usually they will not but you have to disclose because once if you have done any wrong thing you should disclose this second point होची कि suppose now you can divide this into a stakeholder approach also in this sense कि हमें different stakeholder towards कौन हमारा approach रहे so bank manager को हमें कौन कहबो second अच्छा चलो bank manager को आउ गोटे कथा भी कहि परिबो bank manager को हमें कौन कहबो कि now suppose disclosure हेले suppose तार पैसा को block कर दिया now what you should do then you suggest to the bank manager that you provide alternative funds for example cheap loans cheap interest rate रे loan but it should be a loan in an official capacity or a loan दिया जाए okay here you can write for example priority sector lending under दिया जाए right priority sector lending under रे lending to economically weaker section गोटे अछि ता under ताको दिया जाए right so you are providing one suggestion now what is the suggestion you are what should be your action towards your colleague towards the colleague तुम्हें कौन करियो now first you will say कि okay we'll try to ensure the life सर एठी of the जो सर एठी जो बैंक मैनेजर को हम जो कहबा डिस्क्लोज करिया से जदि न कले तो ताले हमें तो केमती कहि परिया कि इफ ना ना माने थ्रेट डिस्क्लोज आउ न जीवन ओके ना एते बेसी आउ हमें ताको काई परस्यू करे देखो आम पर्सपेक्टिव रे जति हम करिया कथा करे नाउ इज इट आर यू डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन दिस कथा होची कि if you had been directly involved then it is your moral obligation also okay then you should be the person who are disclosing but now bank manager he himself is in an official position na he should disclose it वर्तमान कथा हो जदी सी डिस्क्लोज न कले व्हाट शुड वी डू आमे एटा को एते फर्दर परस्यू करके मो हिसाब रे एडी बहुत अधिका है जो कि आमे कहया कि मु निजे एक पुलिस रे एफआईआर दे दी हु आर यू टू गो देयर एंड व्हाट इज योर लोकस स्टैंड तुमरो माने स्टैंड पॉइंट कोन तुमरो एथिकल माने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू रे किछ नै तो व्हाट शुड व्हाई शुड यू बदर सो मच सो आमे एटा एथिकल पर्सपेक्टिव रु देखु जे कोन कोन करियो सो फर्स्ट की कलीग को हम कहया टू एंश्योर द वेलबीइंग ऑफ हिज फादर ओके फादर कर जहा जहा वेलबीइंग अछि सेटा करे सेकंड कथा हला अगेन यू सजेस्ट की ताकू हमें सजेस्ट करिया कि डिस्क्लोज करियो का को डिस्क्लोज करियो स्पेसिफिकली टू द बैंक अदर बैंक मैनेजमेंट बोर्ड ओके बैंक मैनेजमेंट बोर्ड को से डिस्क्लोज करू बोल कि एमितिया गोटे इशू हिची राइट you are only going to suggest you cannot order anyone anything because tomorrow say capability रे तुम ना so you are going to suggest this what else should be there then सर तांको कहबा जे इंश्योरेंस नवा पे सर इंश्योरेंस जेते नहीं जल्दी yes very हबो good पैसा रिटर्न करियो
हाँ हाँ वेरी गुड यस मेन अरे मेन कथा से और ठीक सर कथा मन फर्दर पकेल भी एक्शन नबन हु इज दिस बाय द वे अलिशा और समवन एलिस राइट राइट अरे मेन कथा हम जो बोलिए अरे पैसा रिटर्न करिया ना रिटर्न द मनी सेटा फर्स्ट एंश्योर ओके so return the money pay at the earliest okay जहाँ भी दिया है pay at the earliest right yes insurance ताको medical insurance आपको will provide here you can write some specific examples also you can write okay suppose प्रधानमंत्रीଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି specific insurance scheme କଣ ଅଛି medical insurance ଆମ ପୁରା जनधन आरोग्य योजना ଅଛି PMJY ଆମେ କହିବା କି ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇକି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରେ ବି अंडरलाइन कले इट्स लाइक ओके यू आर राइटिंग समथिंग स्पेसिफिक एमती हवारे कथा चालू राइट यू राइट समथिंग देखो बैंक मैनेजमेंट बोर्ड अंडरलाइन कर दो एग्जैक्टली से बोर्ड रो ना कोन अछि टर्म कोन अछि तुमको जाना नथले भी जस्ट राइट व्हाट यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट कि दे विल अंडरस्टैंड ओके राइट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स ओके व्हाट एल्स अच्छा अदर एक्शन तापरे व्हाट शुड माय एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन आउ कोन ही परियो अदर कोर्स ऑफ एक्शन ओके सर किंतु आमे जति एक्शन ले सेगुडा इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करनी तो आमे सजेस्ट करिबा कि गोटे लोन सैंक्शन करी से डॉर्मेंट अकाउंट रे पैसा जमा करी तापर से लोन ता से लेडी ऊपर दो कोन कहले लोन लोन को गोटे लोन बैंक तर मैनेजर इश्यू करी कि से लेडी को नारे से लोन पैसा ता डॉर्मेंट हाँ सेटा अकाउंट हमें रे लिखिलु डिपॉजिट पा कर ईडब्ल्यूएस अंडर गले अच्छा तुम कहले से डॉर्मेंट अकाउंट ना ना मो कहे कथा एबे हम तो डॉर्मेंट अकाउंट राव फर्दर हाथ लगेबू ही नहीं ओके जहां एक्चुअली इशू हिची वी हैव टू फर्स्ट रिपोर्ट इट एंड सेटा को मे बी फ्रीज कर दिया होता पर इमीडिएटली ऑलरेडी बिकॉज़ डॉर्मेंट अकाउंट तो पैसाटा बाहर कराइछि आ गोटे लीगल इशू एतला हे गला यूजुअली कोन हो फॉर टेम्पररीली भी से अकाउंट को फ्रीज कर दिया हो सो दैट फर्दर पैसा हेडरे किछि ना डिपॉजिट हे परियो ना विथड्रॉ हे परियो तापर एसବୁ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଟିକେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବ ଲିଗାଲ ଜିନିଷ ଯାହା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବ ଦେନ୍ ସେଥିରେ ପଇସା କିଛି ପଡିପାରିବ ରାଇଟ୍ ସେଟା ହବ ବି ତାକୁ କମ୍ପନସେସନ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ହବ ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି अबाउट दैट एस्पेक्ट ଏବେ ଆମେ ଫର୍ଦର ସେଥିରେ ଛେଡଖାନି କରିବା ଆମେ କହିବା କି अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग जो डाइवर्जन भलिया कथा तमे कहउछ डाइवर्जन भलिया कथा आसला एटा एटा कंप्लीटली रॉन्ग ଏବେ ଗୋଟେ ଥରେ ଗୋଟେ मिस्टेक को करेक्ट କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ मिस्टेक ଯଦି କରୁଛ ना दैट विल बी आल्सो ए रॉन्ग ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ତମେ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଏବେ ଆଣିକି ସେ ଡର୍ମାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ପଇସା डिपॉजिट କରିବ ତମ पर्सनल नहीं ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ सर थोड़ी ना मु ଆଣିକି କରିବ नहीं सर मु कहतील जे से लेडी जे नै चंते ताको नारे लोन इश्यू करिके ताको कहबे जे ହୁଁ से लोन पैसा रा डॉर्मेंट अकाउंट रे डिपॉजिट कर दो तेणु से माने से ନା आगु ସେ लोन दे डोरमेंट अकाउंट ଆଉ ସେଟା ଫ୍ରିଜ ହେଇଯିବ ନା କିଛି ଟାଇମ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ସେଠି ଯାଇକି डिपॉजिट ସେ डिपॉजिट କରି ହିଁ ପାରିବେନି फॉर सम टाइम शी विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट व्हाट वी कैन डू इज कि आमे इन्फॉर्म कर दवा से जो अकाउंट होल्डर तांको इन्फॉर्म करे कि एवला इशू होई देन वी विल एश्योर हर और हिम जहार भी डोरमेंट अकाउंट कि फुल पेमेंट तुमको पर ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ लीगल इशूटा बाहर बिकॉज एटा अच्छा ये सब जिनस हला कोन लीगल इशू हला से केस वेस फाइल हबो और एटलीस्ट इंटरनली बैंक रो इंटरनली गोटे इन्वेस्टिगेशन हबो से सब एथरे फॉलो करिवो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एथरे फॉलो करिवो ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର को କହିବା कि यू फर्दर डू दिस कि तांको व्हाट वी कैन से कि तुमे गोटे नॉर्मल लोन गोटे सैंक्शन करो बिकॉज दिस इज अंडर हिज कैपेबिलिटी तो यू कैन इशू एई केस रे यू कैन इशू पर्सनल लोन एटा भी पर्सनल लोन हिसाब रे यू कैन प्रोवाइड इट को को रीजन पे दिया होची सेमति बेसी किसी शो करिया दरकार नहीं ओके सो वी कैन सजेस्ट दैट बट को गोटे पुनी अकाउंट रे आनिके और तांको कहया कि तुमे सेथरा आउथरे डिपॉजिट करो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक ଏବେ କୋଉ पर्पस ପାଇଁ ତମେ डिपॉजिट करछो नाउ दे विल आल्सो हैव टू लेटर ऑन जस्टिफाई कि आमे एथरो पैसा नेइथिलु बोली सो सो से सब जिनस आमे करियानी प्रोफेशनलिज्म अच्छा अदर एक्शन एटा देखो एटा इंपोर्टेंट पार्ट प्रोफेशनलिज्म आमे मेंटेन करिया पई आमे कहया कि आमे सजेशन एगुडा सब सजेशन होची यू विल प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट देखो एटा गोटे वायलेट हेची कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बैंक वायलेट हेची तो हियर यू विल राइट कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बैंक को केमिति आमे इंस्टीट्यूशनलाइज करिया ता ऊपर डिस्कशन करिया नाउ आमे अवेयरनेस हबो और सैनिटेशन सॉरी सैनिटेशन को सेंसिटाइजेशन हबो ऑफ द एम्प्लॉइज कि ए भलिया काम करो नाही ओके मैनेजर काम करछि एम्प्लॉय मान को भी कहा हबो कि ए भलिया डाइवर्जन करा हबो नाही राइट अदरवाइज यू विल बी ए लीगल ट्रबल व्हाट एल्स कुड बी देयर देखो आमे एबे लॉन्ग टर्म कथा कहू लॉन्ग टर्म में इशू जेमतिया न हो आउ कोन करा दी परियो आमे कहया कि हम एम्प्लॉय मानकर अच्छा इन जनरल एम्प्लॉय मानकर सब इंश्योरेंस करिया को समस्त को पाइबा ग्रुप इंश्योरेंस भी हमें नहीं परिया सो दैट फ्यूचर ए बड़ा सिमिलर इशू कार न हो राइट दीज आर ऑल रिलेटेड टू ensuring professionalism of the bank then finally my point is सर our yes yes सर ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଟା yes ବି yes ଆଡ୍ କରିହବ
Yes, yes, you can certainly write फर्दर ଆଉ ଏମିତି account. ଯେମିତି ଇନସିଡେंଟ ନ ହବ। Very good. Audit and accounts को आमे कहया हम गोटे सेक्शन थाए ना बैंक रे कि audit and account गोटे एडवाइजरी जारी करियो कि ए भलिया काम तुमे न करो बोली। Similarly ए जो केस आइछि itself would be reported to the audit, for example local fund auditor को भी इन्फॉर्म कराबो, मे बी समाने गोटे ऑडिट करिया आमे ताको कथा होछि देखो ऑडिट रे इशू कोन होय तुम यदि निजे धरि परछ किछ गोटे प्रॉब्लम होछि, if you are flagging it and you are saying कि आमर एंट्री इशू होछि we will solve it, then एते एस्केलेट होइनी। ऑडिट रे एक्चुअली एक्शन सेतले निया होय जेतले कि इशू होछि एंड सेटा को धरा देई नाही एंड you have not माने you have not been able to find it, then that means कि सेति मे बी किछ गोटे मालिफाइड इंटेंट अछि, तुम ताको लुचाइबो ट्राई करछ। तो आमे स्टार्टिंग रो कंप्लीटली ऑनेस्ट कहि दो कि हमर ए इशू हेतला, सो यू we have taken, and yes we have taken action against the bank manager, maybe for some time he might also get suspended, but again that is the outcome of his actions, but after that we have taken this decision कि ऑडिट इन अकाउंट रे एमते एडवाइजरी जारी कराई छी हमरो पूरा एंटायर गोटे पूरा एंटायर चेकअप भी थोड़ा करे दियो कि ए वाला इशू आउ किछि हेछि कि ए वाला सिमिलर लोन अन्य का को दिया हेछि कि डाइवर्जन आउ किछि हेछि। So accountability and transparency certainly very good point, you can write this also, accountability and transparency of the organization is also maintained, right, eta को have to ensure। any other point आउ किछि मनोबा सर एटा ही परबो कि एबे जेमती किछि कंपनी तार स्टाफ मानकु आ तार स्टाफ माने तार एम्प्लॉय आ तार फैमिली को किछि इंश्योरेंस माने तांकर मेडिकल लो किछि एक्सपेंसिव हाँ हाँ टेस्ट से तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप को कॉल इंश्योरेंस, कर। यस 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 यू कैन राइट ग्रुप इंश्योरेंस नहीं जाओ सेटा हम सजेस्ट करियो, ग्रुप इंश्योरेंस नहीं जाओ सजेस्ट करियो सेटा तो हम लिखी। सर आउ गोटे कथा हे परिबे कि प्रोएक्टिव स्टेप, कारण जेतेबेले ए लोकटा को फास्ट से लेडी कहथिले ये किछि स्टेप नै नथिले सेटा लिखा हेतला, तनु से सेतेबेले एते सब किछि तो सजेस्ट करथांते कोन बैंक मैनेजर केते सब कथा ही नथांता। हाँ सेटा आमे निजो को रिफॉर्म करिया, तो आमे कहया कि आमे कोन करि परिया, आमे कहया कि हमर मे बी एम्पैथी बिल्डिंग संगे कंपैशन भी शो करिया कथा, व्हाट कुड वी हैव डन कि आमे टिके बाहर करथांती कि को प्रोविजन अंडर तांको हेल्प करा जाय परियो, राइट। इनिशियली कोन हला आमे हमर हाथ साफ कर देला, आमे कहला आमे तो किछ करि परिया, आमे वी आर ओनली शोइंग एम्पैथी बट नॉट कंपैशन, दिस इज द डिफरेंस, यू अंडरस्टैंड, इथे भी लेखा भी अछि देखो से लोकोडर एम्पैथी अछि, you have empathy but apart from showing empathy you are unable to solve her problem, okay, apart from expressing your sympathy you do not have the resources to find her, माने here empathy is not translating into compassion because सेटा action किछ नै। now आमे action कोन नै परिया, even in fact you can end this माने ए वे रे तुमे कंक्लूजन भी कर परियो कि देखो बॉडी पार्ट रे सब टेक्निकल कथा चलची, इनत्या करिया सेमत्या करिया ऑडिटिंग करिया आमे या को रिपोर्ट करिया ताको रिपोर्ट करिया, एंड रे मे बी किछि पॉजिटिव एंड ह्यूमैनिटेरियन वे रे यू कैन एंड दिस कंक्लूजन में एटा लिख करिया, ऑल्दो एग्जाम में कंक्लूजन बोल लिखियानी मु तुमको खाली ब्रैकेट भीतर हेते पय लिखुची कि आमे कोन हम पर्सनल एम्पैथी टा हमर कंपैशन ने कहीं कन्वर्ट हलान, इट शुड हैव कन्वर्टेड इनटू कंपैशन, ताको केमते एंश्योर करिया, we will try to understand कि हमें कौन action नेले it should have turned into compassion, for example we could have helped the person, same person by maybe see this thing crowd funding वे रे भी हमें हेल्प कर परथान, सपोज हम पाखरे पैसा नहीं हमें क्राउड फंडिंग वे रे भी हेल्प कर परथान, we could have helped her appeal to district red cross, ए वाला किसी स्पेसिफिक पॉइंट बॉडी पार्ट रे भी लिख परियो, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड रे किछि थाए सेथे किछि पैसा दे सेथे हम सेथरो हम तंग पैसा देले परथान, सेटा भी हम कलु आमे कहे कि हमर रेस्पोंसिबिलिटी एबे कि आमे हमर एंड कोन कर परथन ए सब जिंस कर परथन एंड वी विल एंश्योर कि ऑल ऑफ दीस थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर आमे ए सेम जिंस करी बोले आमे हमर लर्निंग राइट, यू कैन एंड इन दिस वे आल्सो, ओके, एंड आई एम श्योर कि आउरी 3-4 पॉइंट आउरी भलो भलो पॉइंट बाहरियो जते भाबिबो माय कोर्स ऑफ एक्शन बहुत बाहरियो, ऑल्दो लेट मी टेल यू इन एक्चुअल एग्जाम यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट सो मेनी पॉइंट्स, आज हम पाखरे टाइम अछि हम आराम से डिस्कस करू छै बट एग्जाम रे एते सारा पॉइंट बाहरियो, सो व्हिच इज आल्सो फाइन, जेतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट माइंड को आसियो यू राइट इट। तो हमें देखिए ओवरऑल आर यू एबल टू अंडरस्टैंड को जिंस का हम एम्फसाइज करछे, इनिशियली हमें लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट, देन हमें एथिकल पर्सपेक्टिव रो जतल देखुछे स्पेसिफिकली जेमति मीन्स वर्सेस एंड्स को गोटे देखुछे, मीन्स वर्सेस एंड को वी आर सेइंग अच्छा एथरे भी या अंडरनीथ एथरे भी आसियो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, इसो किछि वैल्यूज गुडा भी इंपोर्टेंट राइट, ऑनेस्टी इसो वैल्यूज गुडा इंपोर्टेंट, देन आसी मीन्स वर्सेस एंड एनालिसिस, तो यार डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अछि, तापर पूरा लास्ट वर्ड को आसियो जो यूटिलिटेरियन कांसेप्ट गुडा आसियो, ओके, ताठो लास्ट जो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स इसो जिंस आसियो,
यूटिलिटारिanism ये सब जिनस परे आसो मजा मजी अराउंड आसो खांत आसो सो यूजुअली देखो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज रे ये सब पॉइंट गोटे जेनेरिक पॉइंट किसी आसो बट यू हैव टू राइट सम स्पेसिफिक कंटेंट ऑन दैट आल्सो ठीक है तो दैट इज द हमें गोटे केस स्टडी को बहुत डेप्थ रे जाई कि बुझिलु कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस आंसर ब्लाइंडली को भी मॉडल सो कॉल्ड मॉडल आंसर को देखी कि माने कॉपी पेस्ट करियो ट्राई करियो नाही try to understand what is the demand of the question accordingly you try to write a good answer and specific content लिखी अंडरलाइन करके लिखियो फालतू रे अଯଥା जो पार्ट किछि पचरा जाय नहीं से सब जिंस लिखा किछि दरकार नहीं एतरे किछि डाउट अछि जदि पचरा प्लीज आस्क ओवरऑल पूरा एंटायर क्लास रे आज किछि डाउट अछि सर खाली कंक्लूजन रे आउटर रिपीट कर दियंतु कंक्लूजन किछि गोटे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच गोटे दबो कंक्लूजन किछि गोटे फील गुड काइंड ऑफ जिंस दबो जोटा कि माने टेक्निकल जिंस बेसी हवा दरकार नहीं गोटे नॉर्मल अप्रोच जति कि तुम कहयो कि आमे कोन आमे एम्पैथी संगे कंपैशन डेवलप कर पाछन ए जिंस ओके सेमिति सपोज सिमिलर पॉइंट यू सी जेमति सपोज आसे डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी और डिस्प्लेसमेंट डिबेट रे ओके तुमे एंटायर पार्ट रे कोन बॉडी पार्ट रे तुमे लिखितो बहुत सारा टेक्निकल पॉइंट्स सब लिखितो स्पेसिफिक पॉइंट्स कंक्लूजन किछि वे फॉरवर्ड भलिया किछि गोटे माने पॉजिटिव वे रे किछि गोटे जिंस लिखियो फॉर एग्जांपल ये लिखियो कि देखो इवन जीएस रु भी किछि पॉइंट भी बाहर करके लिख परियो फॉर एग्जांपल तुम लिखियो कि आमे कोन करिया एमितिया गोटे मिडिल ग्राउंड अप्रोच नेले कोन हबो समस्त भला हबो सो इट इज लाइक सबका साथ सबका विकास so that means and in bracket you can also write inclusive growth right এটা তো inclusive growth ର ମାନେ ନା कि ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି welfare हो तो ଏଇ ଭଳିଆ ମାନେ इट्स नॉट कंक्लूजन କିଛି ଧରାବନ୍ଧା कंक्लूजन କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି जीएस ରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଯେମିତି एसडीजी गुड़ा लिखि दउलु सेମିତି एथिक्स रे एମିତି ଧରାବନ୍ଧା कंक्लूजन କିଛି ନାହିଁ but you can write a way forward sort of thing जोटा ଗୋଟେ positive looking थियो positively worded थियो right futuristic looking positively worded थियो so এটা ଗୋଟେ ମାନେ end रे it will provide a good impression right any other doubts सर सर हमें जो से लोअर मिडिल क्लास रो बिलोंग करचंती तो तांको पाखर जो सर बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना अंडर रे सर सरकार दोची yes yes वुमेन very तो good सेटा you गुटे can write yes next one who is this by the way सर अलीशा okay. I don't know why I'm unable to recognize your tone ठीक है I am BSK वाली yes you can write certainly हमें specific point लिखिया बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना okay you can write हम एमती गोटा लिखना PMJY पमजे और आयुष्मान सेटा भारत सर इंश्योरेंस दबो हां हाँ हां आयुष्मान भारत लिख दे सेटा सेम थिंग यार गोटा पार्ट से तो एटा BSKY भी हम लिख परिया एटा स्टेट गवर्नमेंट अंडर yes you can definitely write ठीक है तो देन आई थिंक यस समवन एल्स वाज आस्किंग आई थिंक आपके पचार थे देवचंदन और समवन सर जो स्टेक होल्डर अप्रोच कहले सर सेटा कोठी लिखिबा सेटा जानिबा केमती क्वेश्चन पढ़िकी क्वेश्चन जदि तुम ओवरऑल देखि जानि परलो कि सपोज क्वेश्चन ने कहै छी कि राइट कि व्हाट शुड द डिफरेंट पीपल इन दिस डिलेमा शुड डू ताल तो क्लियरली से कहि दै छी कि स्टेक होल्डर अप्रोच अछि अदरवाइज आल्सो सपोज कि तुम जानि परलो कि क्लियरली ए भलिया किछि स्टेक होल्डर अछंती जा थ्रू रे यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर योर आंसर सपोज तुम आंसर को देखो आमे एथरे आंसर को को वे रे स्ट्रक्चर कले एथरे आमे आंसर को स्ट्रक्चर कले एथरे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड रे नीति वर्सेस न्याय मीन्स वर्सेस एंड वायलेशन ऑफ लॉ ए सब पॉइंट देखि गले एथरे आमे प्रोज एंड कॉन्स अप्रोच नेले माने एटा होची जो बैलेंस शीट अप्रोच रे आमे कले तो सेमितिया तुम यदि भाबो तुम आंसर को स्ट्रक्चरिंग ही सेमितिया करियो कि जण जण को पार्ट को नहीं देखो एई सेम आंसर को एई वे रे भी कराई पाथना तुम फर्स्ट लिखतांत कि बैंक मैनेजर कोन 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 काम कले कोन ताकर भूल रहला देन तुम कहयो कि से जो लोक तुमर कलीग से कोन भूल कला फॉर एग्जांपल कलीग रो भूल हला कि से फर्स्ट दला मेडिकल इंश्योरेंस नहीं नतला हला इंश्योरेंस किछि कर नतला सेकंड हला से एमितिया अनड्यू रिक्वेस्ट गोटा कला व्हिच इज आल्सो अनएथिकल थर्ड पॉइंट हला कि से नॉर्मल लोन गोटे पई अप्लाई कलानी पर्सनल लोन पई काई के अप्लाई कलानी सेटा फर्स्ट करियर थिला तो तार भी ए सब जिंस भूल हला ना बैंक मैनेजर भी किछि भूल हला देन योर मे बी मिस्टेक न कहले भी तुमे कोन कोन करि परथांदा मे बी तुमे प्रोएक्टिवली जिंसटा को कंसीडर कलोनी इनिशियली ताको हेल्प कलोनी दैट वाज योर मिस्टेक इन दिस वे यू आर इफ यू आर स्ट्रक्चरिंग योर आंसर ताले स्टार्टिंग रे स्टेक होल्डर लिखि दियो बिकॉज तुम आगु डिसाइड कर देले कि मु एई वे रे स्ट्रक्चर करबी आंसर राइट बट जदि तुम जानो कि मु एई वे रे करबिनी आमे जो वे रे लिखिलु सेई वे रे कलु एंड
मैक्सिमम पार्ट रे कोन ई भले वेटा बेटर बिकॉज तुम एथरे बेसी पॉइंट जनरेट कर परिबो एथिकल प्रिंसिपल लिख परिबो philosophical perspective लिख परिबो सो ई वेटा मैक्सिमम पार्ट रे बेटर बट इन सम केसेस सम केस स्टडी रे तुम यदि चाहछो ई भला स्टेक होल्डर थ्रू रे कर परिबो ताले स्टार्टिंग रे लिखि दो दीज आर द स्टेक होल्डर्स कथा होची इफ यू आर राइटिंग इट देन यू हैव टू यार किसी रेलेवेंस पर रहया दरकार अदरवाइज स्टार्टिंग रे स्टेक होल्डर लिखि देकी जदी आमे ई भला आंसर टक लिखिलु ताले से एग्जामिनर पुणी भाबियो कि अच्छे स्टार्टिंग रे ताले स्टेक होल्डर लिखिला काहे यार पॉइंट कोन था एग्जामिनर को कौन जाना नथले कि स्टेक होल्डर किए बोली ओके सो दिस इज द डिफरेंस ओके सब जगह स्टेक होल्डर लिखिया दरकार ना हाउ बेले बेले कोन यस हाउ बेले बेले क्वेश्चन इटसेल्फ लिखि दिया हियो कि आइडेंटिफाई हु आर द स्टेक होल्डर्स और आइडेंटिफाई हु आर द पार्टीज टू दिस एथिकल डिलेमा तो सेथिरे स्टार्टिंग में तुम स्टेक होल्डर लिख परियो अथवा स्टेक होल्डर लिखिया गोटे सिंगल लाइन इंट्रोडक्शन फर्स्ट लिखियो ओके किछि भी गोटे जेनेरिक बहुत जेनेरिक भी ही पारे नो इश्यूज बट तापर स्टेक होल्डर इबळे लिखियो देन यू राइट द so from this it is your body part टा start होची stakeholder रू right abruptly start करिवेनी stakeholder मु देखछि बहुत प्लान ना abruptly start करन so don't do this okay? Any other doubts did you enjoy today's class ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି Yes, sir. I think आज Yes, sir. आज बहुत दिन पर आज के इंटरेक्टिव थिला बेसी because I wanted to brainstorm and wanted you to answer ethical dilemma तो पूरा इंटर से जिंस किसी जिंस तुम आइडियाज किसी चेंज हला योर थिंकिंग स्टाइल किसी चेंज हला डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक 3 घंटा बहुत शॉर्ट टाइम फॉर दैट आल्सो Sir, capability अनुसार capability टा develop हो गला. वेरी गुड थिंकिंग देखो एक्चुअली भलो वेरी जिंसटा पढिले कोन हो इट इज नॉट अबाउट जस्ट डंपिंग इंफॉर्मेशन ऑन कंटेंट खाली डंपिंग होबन thinking way of thinking or your जो style of thinking will also change your attitude will also change if that is happening na that is in fact the best kind of learning because तारा outcome बहुत ही long term outcome रही तो एटा भी से कैपेबिलिटी अप्रोच कि आमे काहा को माछ दे दो फिश दे दो बट आउ जन को फिशिंग सिखेउ तो जा को फिशिंग सिखेउ that person will be able to take care of himself or herself I also enjoyed very much today after many classes I was enjoying other classes also but aji kon hala because more kamo tike halka hai gala because you are contributing all of you are contributing otherwise section A re kon teacher ro kamo tike adhika because you have to also I'm also providing a lot of content also but anyway I enjoyed today's class so we'll continue next tomorrow we have another class of case studies okay and today I will give you only one case study for you to write and tomorrow after that I'll keep on giving you assignments in between okay and tomorrow will be the last case study class जो कि हम डिटेल में case study नीचे solve करेगी and देखिए okay? After that you are supposed to take it up so we are going towards the end of our course ethics course ठीक है and if any further doubt we have your support till the exam okay सर सर से ठीक है जो so थिंकर एंड yes yes फिलोसोफर सब्जेक्ट जो चैप्टर टा अछि सर सेइथरो क्वेश्चन सर केमती अटेंड करियो thinkers and philosophers तो हम बहुत डिटेल में पढ़ी छे एतरे असुविधा कोन हला सर attempt गोटे केमते करबन हेते क्वेश्चन क्वेश्चन थिला सर किछरा जिंस अटेंड करी होउची जेमती बुद्धंकर पढले गांधींकर पढले पर सर गोटे दलाई लामांकर थिला जे जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट तो सर सर सेतरे आंसर राइटिंग रो अप्रोच टिके कहि दियो अरे तार किसी स्पेसिफिक सेमती अप्रोच नाही ना सेते भी माने नॉर्मल तुमरो सब एथिक्स रो ओवरऑल जहा पढछु से सब जिंस लिखिया से सब जिंस जेमनी ही सर कोटेस सर में एग्जांपल हाँ देके लिखि पारे हाँ एग्जांपल दे कि डायग्राम फ्लो चार्ट सब भर दियो किसी असुविधा नहीं सेक्शन ए रो जेनेरिक आंसर हम जेमती लिखुले इन जनरल सेमती यार भी आंसर लिखा जदि स्पेसिफिकली फिलोसॉफिकल फाउंडेशन हमरो किछि हुआ ही नहीं तो एटा भी एक्चुअली देखियो गले एटा फिलोसोफर पार्ट भी नुआ जस्ट बिकॉज़ ए फिलोसोफर सेड इट डजंट मीन कि ए चैप्टर रू आसीसी द प्रॉब्लम इज कि एटा गोटे जनरल कोटेशन होटे तो एसे रे भी हमें जेमती लिखछे से भले भी तुम लिख परियो ऑल द प्रॉब्लम है कि एसे टारे हमें किसी डायग्राम तो किछि करूना but data because GS4 paper so here you can also do diagram flowchart value addition सब कर पारे examples case study सब पकई पारे no issues तो नॉर्मल एमती कोटेशन को हम डील करू से बेले डील नो इश्यूज ओके सर yes anyone else सर जो आंसर राइटिंग रे एथिक्स रे आंसर राइटिंग रे तो मन कर किछि एमती क्वेश्चन पड़ছে कि कंपैरिजन करियार अछि आउ हम्म
ଆମର comparison ର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଥାଏ ନା ମାନେ ଡେଫିନେସନ ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଣ ରହିବ ଯେମିତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଉ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଭିତରେ ଏମିତି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଥିଲା ତ ତାର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ହିଁ ମାନେ କମ୍ପାରିଜନ ରେ ନା ଆମେ you can ତାର write ଡିଫାଇନ କରୁ हाँ डिफाइन करो तो इंट्रोडक्शन में गोटे जेनेरिक लाइन बस लिख परियो कि बोथ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी और बिहेवियर कुछ भी लिखि दियो जेनेरिक गोटे सिंगल लाइन लिखि ओके दियो डजंट मैटर तो सेथरे एई भलिया क्वेश्चन ने कोन हो स्पेसिफिकली जो डिफरेंस पचाथिबे सेथरे से मोस्टली दे आर फोकसिंग ऑन द बॉडी सेथरे यदि बॉक्स करके एमते दुईटा कॉलम रे तुम लिखि परछो एंड ईच पॉइंट अंडर किछि एग्जांपल लिखि परछो ताले बहुत बढ़िया आ बेसी किछि दरकार नहीं ତ यूजुअली 10 ସେଠି मार्क ଯଦି रे भलिया ଟାଇମ ର क्वेश्चन କ୍ରଞ୍ଚ ଅଛି ଡିରେକ୍ଟଲି ଆମେ ସେ ବକ୍ସ କରି କରିପାରିବୁ ନା ୱିଦାଉଟ୍ ମେନସନିଂ हाँ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ टाइम क्रंच हेले तो तुमको करिया ही पड़ियो सेते तो तुम मो एडवाइस आउ नबो भी नहीं सपोज लास्ट आउ 3 मिनिट रे तुम गोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करियार अछि सेते आउ कोन इंट्रोडक्शन लिखि मैं नॉर्मल कंडीशन में कहूँ कि यू ट्राई टू मैनेज योर टाइम इन सच ए वे कि सब क्वेश्चन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एटलीस्ट गोटे सिंगल लाइन रही जदि टाइम क्रंच हला किछि 2-3 मिनिट रे गोटे आंसर लिखियार अछि सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो ताले obviously you will not be able to write introduction conclusion एते भलो वे लिखे but write the body part because our essence होची body part रे content अछि ठीक अछि content first and foremost still will be the king okay? then presentation and everything that will be the queen okay content is still माने content नाही यदि ताले आंसर तो किछि नाही right body part टा तो तुम्हारा मेन कंटेंट तो लिखो और किछि उपाय एतर नाही तो लिखियो राइट ठीक अछि then we'll meet again tomorrow good night to you okay take care